पंजाब की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। तो यहाँ पे अब तक सदरन पंजाब और सेंट्रल पंजाब की टीमों के दरमियान अब से थोड़ी देर के बाद मैच खेला जाएगा। और जो अब तक की जो सूरत हाल कि दोनों ही टीमें जो है वो पूरी तरह से वार्म अप होती है, हमें थोड़ी देर पहले ग्राउंड में नजर आई। ये रिवायती क्लॉक जो इस बात का तयन करेगी कि कब इस मैच का आगाज होगा। खूबसूरत पवेलियन, मेन पवेलियन बिल्डिंग का मंजर, एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है ये, कि जहाँ पे 2016 को जो है वो इस ग्राउंड का आगाज़ हुआ। और जब इस ग्राउंड का आगाज़ हुआ तो उस वक्त इंजमाम उल हक और उस वक्त वसीम हैदर और पूरी यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी थी उस वक्त की, वो सब यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद थी। खूबसूरत मंजर अकब में आप देख सकते हैं कराची का वसी और ईज़ पहाड़ियों का सिलसिला, कि जहाँ पर अब मकानात की तामीर हो चुकी है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है ये स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन हैं, अगर उनका हम तस्करा करें तो यकीनी तौर पे इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी रन्स बने हैं, काफ़ी यहाँ पे जो है वो सेंचुरी। पिच रिपोर्ट होगी और पिच रिपोर्ट के लिए मौजूद हैं शाह फैसल। तो ओवर टू शाह फैसल। Round 6 of Quaid Azam Trophy Championship, a change of venue. We're here at the State Bank Cricket Complex in Karachi. The weather is just about perfect for a game of cricket. First stat for this venue for the last 5 games, they've all yielded results. And the average first inning score has been 327 runs. But if you look at this pitch, a team that gets to 327 today would have done a very good job, because it has an even covering of grass. There's a little bit of moisture as well, and it would not be a surprise if the away team, which is Central Punjab in this case, opt to bowl first and do not contest the toss. तो आपने पिच रिपोर्ट देखी कि जहाँ पे शाह फैसल आपको बता रहे थे इस पिच के हवाले से कि एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो 227 रन्स है। अब देखना ये है कि बड़ी सपोर्टिंग विकेट रही है माजी में हमेशा से इस स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, और जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे सदरन पंजाब अब तक की वो वाहिद टीम है कि जिसने एक मैच में कामयाबी हासिल की है। इस वक्त यहाँ पर टॉस के लिए इस वक्त दोनों टीमों के कप्तान तैयार हैं, तो चलते हैं टॉस की जानिब। It's all Punjab affairs for the 6th round here at State Bank ground in Karachi. I've got the two very young captains alongside me, Umar Siddiq for Central Punjab, for Southern Punjab, and Ali Zaryab for Central Punjab. And the news is that the toss was not contested and the visiting team Central Punjab have decided to ball first. I'll invite the captains first. Ali Zaryab, पहले अगर आपसे बात करना है। अली, ज़्यादा मुश्किल डिसीजन नहीं था पिच को देखते हुए? जी बिल्कुल मुश्किल डिसीजन नहीं था, टॉस अनकंटेस्टेड करवाया हमने, और पिच टॉप ग्रीन है, थोड़ा मॉइस्चर भी होगा जो कि पहले 4 डे में होता ही है, तो उसका पूरा यूज़ करने की कोशिश करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि पहली इनिंग में उनको रिस्ट्रिक्ट करें और अपर हैंड रखें गेम में। राइट, पंजाब से अब शिफ्ट हो गया कराची की तरफ क्रिम, तो क्या डिफरेंस होगा, क्या सिचुएशन में और कंडीशंस में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? कंडीशंस तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ी सी गर्मी यहाँ पे है, और लेकिन पिच में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा टॉप ग्रीन पिच बनाया हुआ उन्होंने, तो उम्मीद है अच्छा होगा। तो कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है वहाँ से लेके यहाँ तक टीम का?
नहीं, ऐसा सच कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ, उसी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, उसी स्ट्रेंथ को बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या टीम न्यूज़ है, क्या चेंजेस हैं आखिरी मैच से आपके लिए? आखिरी मैच में 3 फास्ट बॉलर्स थे, आज 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं पिच को देख के, और बैटिंग में एक आधी चेंज है बस। राइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। उमर सिद्दीक, कैसी पिच लग रही है? पिच तो ग्रास है, देखते हैं लेकिन क्या होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं जैसे होता हूँ हमेशा बैटिंग को पहले प्रेफर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा बॉल स्लो आता है, तो सेकंड में ये होता है कि खुशक हो जाता है, थोड़ा बॉल जाता है। लास्ट मैच आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, आखिरी दिन स्पेशली, तो मोमेंटम टीम के साथ है, तो काफ़ी मोटिवेटेड होगी टीम। जी बिल्कुल, बहुत मोटिवेटेड है, क्योंकि हम वैसे भी ऑलमोस्ट टॉप पे हैं, तो लड़कों को यही कहा गया रिलैक्स नहीं होना, अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो क्या टीम कॉम्बिनेशन खेलेंगे इस पिच को देखते हुए? एक चेंज है बस, हमारे आगा सुलमान आए हैं जैन अब्बास की जगह। राइट, ऑल द बेस्ट उमर। थैंक यू। Right, the news from the center is that the toss was not contested. Central Punjab, the away team, has decided to bowl first. जी, आपने टॉस देखा और यहाँ पे सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। इस पिच के जूस को इस्तेमाल करते हुए, इस पिच की फ्रेशनेस को देखते हुए ये फैसला पे किस हद तक कारगर साबित होगा, यकीनन आने वाला वक्त इस बात का फैसला कर देगा। क्योंकि 4 फास्ट बॉलर के साथ, जिस तरह आपने सुना उमर सिद्दीक को जो कप्तान हैं, उनका ये कहना था कि 4 फास्ट बॉलर के साथ वो इस मैच में जा रहे हैं, और जो अमूमन जो रिवायती अंदाज रहा है इस पिच का, वो इब्तिदा में पेसर को मदद देती है। उमर सिद्दीक यहाँ पे जो सदरन पंजाब के कप्तान आज इस टॉस को नहीं जीत सके, लेकिन बहरहाल अब इस मैच में डेफिनेटली जो है वो इस टॉस को तो जीत नहीं सके, लेकिन किस तरह से सिचुएशन को, कंडीशन को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, यकीनन इस बात का फैसला आने वाला वक्त करेगा। इस वक्त मौजूद हैं एजाज चीमा, जिनका बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, और मेरे उनके साथ मौजूद हैं शाह फैसल। टू शाह फैसल की टीम वाहिद टीम है सीज़न के पहले 5 राउंड्स में जो पूरा मैच जीती हुई है, तो आप अपनी टीम की जो ज़ाहिर आप बॉलिंग कोच हैं, कुछ अपनी टीम के बारे में बताइए कि इनके साथ काम करके कैसा लग रहा है आपको? ज़बरदस्त है। मैं लास्ट ईयर भी सदरन पंजाब के साथ ही था, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा लास्ट ईयर भी। अभी इसमें से तकरीबन वही फास्ट बॉलिंग यूनिट है हमारे पास, एक नसीम शाह का एडिशन हुआ है। बड़ा मज़ा आ रहा है, और माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं, और सारे जिस तरह हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, होपफुली आगे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले राउंड में ज़्यादातर पिचेस जो हैं वो बैटिंग के लिए साजगार थी। ऐसी जब पिचेस हों, उस पर आपकी ख़ास इंस्ट्रक्शन बॉलर्स के लिए क्या होती हैं? बस पेशेंस इज़ द की। उसमें यही है, पेशेंटली, जैसा आपको पता है फर्स्ट क्लास में बॉलिंग जो है वो पेशेंस के साथ ही होती है। आप अच्छी लाइन लेंथ पे मुसलसल बॉलिंग करते हैं तो आपको विकेट्स मिलते हैं। तो कोशिश यही है कि जहाँ भी खेलें, जिस तरह की भी कंडीशंस हो, पेशेंस के साथ एक अच्छे एरिया में बॉल करते रहें। आप खुद भी एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर रहे हैं अपने ज़माने में, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में तो आपके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो करंट क्रॉप है उसको आप अगर अपने टाइम से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस नज़र आता है? मेरा ख्याल है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज़ मच बेटर, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स एंड द फिटनेस स्टैंडर्ड्स आर मच बेटर, और अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट है। आप किसी भी टीम को यहाँ पे इन 6 टीम्स में देख लें, हर टीम में करंट पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी इस तरह बिल्कुल इक्वली जो हैं टीम्स में शामिल हैं। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है। और कराची में जब यहाँ एक्सपेक्टेड है कि पिचेस की जो तब्दीली होगी नेचर में, उस एडजस्टमेंट के लिए आप अपने बॉलर्स को कैसे, उनके साथ कैसे काम करेंगे? बिल्कुल, मैंने कल यही बात की है कि पेशेंस से पहले भी बॉलिंग करते रहे हैं, और अब इट्स द टाइम टू कैश इन, और इन कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपनी पेशेंस के साथ एक अच्छे एरिया में फॉरवर्ड डिफेंस पे बॉलिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली जो बॉलिंग ट्रैक्स हैं उनके ऊपर, तो होपफुली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच एजाज, एंड ऑल द बेस्ट। माय प्लेयर। जी, आपने सुना एजाज सीमा को, बड़े पुरुमीद हैं अपनी टीम की इस कारकर्दगी के हवाले से, और अब देखना ये कि किस तरह से आज इनकी टीम इस मैच में परफॉर्मेंस करने में कामयाब होती है। टॉस जीता यहाँ पे सेंट्रल पंजाब के कप्तान अली ने, और उसके बाद बैटिंग का मौका दिया यहाँ पे सदरन पंजाब की टीम को, और अब सदरन पंजाब के दोनों ओपनर्स जो है वो ग्राउंड में दाखिल होते हुए, जबकि दूसरी जानिब अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल पंजाब की टीम है वो भी अब ग्राउंड में दाखिल होते हुए इस मैच को
जीतना जो है वो बड़ा ज़रूरी है दोनों टीमों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब तक इस क़ायद आज़म ट्रॉफी में कि जहां पर अब तक 5 राउंड्स के मैचेस मुकम्मल हुए हैं और यहाँ पे ना सिर्फ स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में मैच खेला जा रहा है, बल्कि साथ साथ नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की टीमें आपस में नबर आजमाएं, जबकि दूसरी जानिब यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो मैच खेला जा रहा है उसमें सिंध की टीम जो है वो खेलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट कराची में खेली जाएगी अब इस क़ायद आज़म ट्रॉफी के अगले मरहले में। और मुझे ज्वाइन किया इसी असना में मेरे फेलो कमेंटेटर अकील समन ने। वेलकम अकील। बहुत शुक्रिया अली, और उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले जहां भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पाकिस्तान भर में या दुनिया में कहीं भी, वो इस सेटिंग से बिल्कुल लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बहार वापस आई है कराची में और 3 मैचेस एक साथ शुरू होंगे। ये राउंड नंबर 6 है, जो कि इससे पहले फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर के सब्ज़ारों में जारी था, लेकिन अब इन खिलाड़ियों की आमद यहाँ पे हुई है। और जो पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे लिटरली भी, यानी कि पॉइंट्स टेबल पर अभी हम कुछ देर में देखेंगे क्या होता है। तैयब ताहिर जो कि अब तक एक अच्छे अंदाज से इस कोशिश को जारी रख रहे हैं, जहाँ तक इनकी टीम का सवाल है, इन्होंने एक डिसेंट अंदाज से रन स्कोरिंग की है इस टूर्नामेंट में। अब तक 8 इनिंग्स में वो 500 से ज़ायद रन्स बनाने में कामयाब हो चुके हैं और हाईएस्ट उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। 76 का उनका शानदार एवरेज है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन है, जिस तरह से उमर सदीक ने इब्तिदा में बताया। उमर सदीक का भी जो कि लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, 29 साल खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के दौरान वो 20 कम 300 रन बना चुके हैं, लेकिन अब तक पहली सेंचुरी का मुंतज़िर हैं। तो एक अच्छा स्टार्ट इनको जो चैलेंज दरपेश है ये पहले बैटिंग करने का, इसके लिए हासिल करना होगा आज। पहली गेंद दिफाई अंदाज से खेलने में कामयाब हुए तैयब और उमर सिद्दीक इनिंग का आगाज करते हुए सदरन पंजाब के लिए वकास है यहाँ पर। सेंट्रल पंजाब की जानिब से बॉलिंग के निशान पे तैयार। टॉस जीतने के बाद पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। वकास मकसूद हैं और इसी ग्राउंड पे 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं वापडा की नुमाइंदगी करते हुए। इस मरतबा ड्राइव करने में कामयाब हुए, पहला रन स्कोर का आगाज किया यहाँ पे तैयब ने फील्डर गेंद के पीछे गेंद के साथ रेस लगाते हुए। कप्तान अली जरियाब, लेकिन इससे पहले कि गेंद तक पहुंचते आसानी के साथ 2 रन का इजाफा। तो बड़ी अच्छी यादें हैं यहाँ पे वकास मकसूद की इस ग्राउंड के साथ, कि जहाँ पर उन्होंने एक इनिंग में 9 विकेटों का शिकार किया और फिर 1 विकेट मोहम्मद आसिफ ने हासिल की थी और इससे उसके बाद फिर इन्होंने जो है पाकिस्तान की टीम में अभी तक रसाई हासिल की। एक बड़ा अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वकास। जो T10 लीग है उसमें भी इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त से इन्होंने स्पेल किया था। तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा इन फॉर्म बैट्समैन तैयब, उमर सिद्दीक और वकास मकसूद के दरमियान। एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बहुत ही ज़्यादा बाहर गेंद कर दी पहली वाइड वकास की। इस पूरे क़ायद आज़म ट्रॉफी के दौरान बहुत ज़्यादा वो एक्शन में नज़र आए नहीं। 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लास्ट सीज़न इनका बड़ा अच्छा गुजरा था। सेंट्रल पंजाब का हमें याद है जो नेशनल स्टेडियम में इन्होंने फ़ाइनल खेला, ना सिर्फ एज अ बॉलर बल्कि उन्होंने अपने कप्तान हसन अली का साथ दिया था और अचानक से आकर वो हलचल मचा दी थी। स्कोर्स लेवल हुए थे, पहली मरतबा हुआ कि ट्रॉफी शेयर हुई। गेंद को इब्तिदा में स्विंग करने की कोशिश करेंगे इन कंडीशंस में। अच्छी गेंद थी इस मरतबा, डिसीव हुए बैट्समैन अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बुरेकार लाते हुए। तैयब इन फॉर्म बैट्समैन इसी क़ायद आज़म ट्रॉफी में डबल सेंचुरी इनके नाम के आगे दर्ज, पहली सेंचुरी जिनके कैरियर की डबल सेंचुरी। और ये वो गेंद कि जहां कहीं बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की, जबकि 3 स्लिप और एक गली बशमुल विकेट कीपर तो इस तरह 5 फील्डर विकेटों के पीछे किसी किस्म की गलती को दबोचने के लिए तैयार। अली, हमारे देखने वालों को याद होगा इसी ग्राउंड पे लास्ट सीज़न पाकिस्तान कप के वो मैचेस खेले गए जो कि ब्रॉडकास्ट भी हुए थे, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने सर्दियों के आखिर में फरवरी के महीने के शुरू में जाकर वो कामयाबी हासिल की, जो कि एक शानदार सीज़न था और अच्छे रन्स हमने बनते हुए देखे हैं। आज गो के एक मुख्तलिफ तरह की पिच तैयार की गई है, जो कि उस वक्त जो कि ये आधा सीज़न खेल के पहुँचे हैं पंजाब से यहाँ पर एक और तरह का चैलेंज देगी।
इन 3 खिलाड़ियों को जो कि कैच के मुंतज़र हैं। तैयार रहना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि अपने पंजों के बल किसी भी कैच के लिए। अच्छा ड्राइव किया इस मौके पे, अगले कदमों पे खेला गया स्ट्रोक, 2 फील्डर के दरमियान से गेंद को निकाला और गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन की जानिब, लेकिन इससे पहले कि गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करती गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए अली जरियाब। फ्रंट फुट पे खेला गया अच्छा दिलकश दीदा जेब स्ट्रोक, इन फॉर्म बैट्समैन और फॉर्म की निशानदेही करता हुआ, और तैयब ने बड़े कम अरसे में जो है वो अपनी शोहरत को मजीद बढ़ाया और अपनी अहलियत को मनवाया। ना सिर्फ उम्दा बैट्समैन है बल्कि साथ साथ फील्डर भी बड़े गजब के हैं। पहले ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। बड़े डिफरेंट एंगल्स हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ग्राउंड के, जो कि खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स में माने रखते हैं सेटल होने के लिए। पहला ओवर कराची का मुकम्मल, सदर पंजाब 5 बिना किसी नुकसान। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों टीमों की लाइनअप के, जहां पे सेंट्रल पंजाब अली जरियाब, इमरान डोगर, मोहम्मद सादर, रिजवान हुसैन, सैफ बदर, जुनेद अली, बिलावल इकबाल, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, निसार अहमद और वकास मकसूद पर मुश्तमिल है। जी हाँ, सलमान अली आगा आ गए हैं जो कि पाकिस्तान की शाहीन से और ए टीम के साथ दौरे पे थे श्रीलंका के, और उनके आने से यकीनी तौर पर सदर पंजाब की टीम मजीद मजबूत होगी। इन फॉर्म बैट्समैन तैयब ताहिर इनके पास हैं, उमर सद्दीक इनको लीड कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, और साथ साथ एक मजबूत फास्ट बॉलिंग का शोबा ज़ियाउल हक और आमिर यामीन की सूरत में। निसार अहमद हैं नए ओवर के आगाज के लिए तैयार। 5वां मैच खेल रहे हैं। अब तक गुज़िश्ता 4 मैचेस में 19 विकेटें हासिल की, 19.94 की औसत के साथ। अच्छी गेंद निसार की जाने से, दरासत के हामिल बैट्समैन, लंबे कद और मजबूत जिसामत के हामिल, अच्छा इस्तेमाल किया इस पिच का। ज़बरदस्त एक मुख्तसर रनअप के साथ आए हैं, और फ्रंट ऑन इनका एक्शन ज़्यादा आपने इनको नहीं देखा होगा अब तक शायद एक्शन में, लेकिन एक बड़ा मौका है इनके लिए, उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के बांग्लादेश में होने के बायस इन मौक़ों को हासिल कर रहे हैं। अब तक इन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान भी कामयाबी हासिल की, 2 विकेट्स हासिल कर पाए। एक और अच्छी गेंद निसार की जाने से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब तक इन्होंने इब्तिदाई 2 गेंदों में से पिच का इस्तेमाल किया और जीते गए टॉस को सही साबित करने की कोशिश में अच्छा पेस, अच्छा उछाल यहाँ पे हासिल किया। बिल्कुल अपने चेहरे के सामने विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट किया। स्लिप्स अभी भी बरकरार रखी हुई हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है क्योंकि अब तक बाउंस से वो कम अज़ कम अपनी बॉलिंग के दौरान कद का और कैरी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बैट्समैन को मुतासिर कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद और उतने उम्दा कलेक्शन विकेट कीपर जुनेद अली की जानिब से। जुनेद अली भी बड़ा अच्छा अकील फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग में इन्होंने महज 1 मैच खेला, उसी में इन्होंने 19 सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा मैंने इनको देखा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते हुए, KRL के लिए खेले। ये बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है जुनेद अली, और ना सिर्फ विकेट कीपर बहुत ज़बरदस्त हैं बल्कि बैट्समैन भी टॉप ऑर्डर के बड़े ज़बरदस्त हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जुनेद को। डाउट क्रिएट करेंगे इस अंदाज की बॉलिंग से वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के जहन में, जो कि अब तक वॉचफुल इस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा उन्होंने लेफ्ट भी किया, लेकिन गेंद को अगर स्टम्प्स की लाइन में रखा तो फिर वो मुश्किल यहाँ पर पैदा कर सकते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग अब तक, शानदार बाउंस जो कि ऑफ द विकेट वो हासिल करते आ रहे हैं, और अपने कद का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। और देखिए पिच का बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो जूस है पिच में, जो ग्रास नज़र आ रही है, उसको बड़ा अच्छा यूज़ करते अब तक नज़र आए इब्तिदाई गेंदों में। एक और अच्छी गेंद, बैट्समैन उमर सिद्दीक को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि इस ओवर में इनको एतमाद से खेलते हैं। बड़ा अच्छा ओवर है ये निसार की जानिब से, बड़ा अब तक इन्होंने अपनी इब्तिदाई 5 गेंदों में मुतासिर किया है। Yes, once again right on money,
इस मैच की इब्तिदा से पहले शाह फैसल बात कर रहे थे इनके बॉलिंग कोच से, जो कि सदर्न पंजाब की टीम के साथ वाबस्ता है, और वो अप्रिशिएट कर रहे थे उस टैलेंट को जो कि अभी भी आ रहा है और अपने आप को निखारने की सलाहियत रखता है। ये एक डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, लेकिन दोनों टीम्स के लिए लगता है ये है कि बराबरी की सूरत हाल रहेगी इन पूरे मैचेस के दौरान। और इस मरतबा फिर कनेक्ट नहीं किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर मुकम्मल हुआ 5 बगैर किसी नुकसान के। ये अब तक के खेले गए मैचेस के बाद का पॉइंट टेबल, जहां पे सदर्न पंजाब इस मरतबा कैच ड्रॉप हुआ, सीधा कैच था और शायद गेंद चेहरे पे लगी है, सही गेंद को देख नहीं सके। रिजवान हुसैन थे जो कि इस गेंद को कैच करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलमोस्ट इनके गले की हाइट पे ये गेंद तेज़ी के साथ बाउंस हासिल करते हुए पहुंची है और बड़े उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन के साथ उसको कैच करने की कोशिश की। वी होप के जो गेंद हाथों पे लगने के बाद उनके ये गर्दन पे जाके हिट किए वो ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस ना बने और किसी हद तक तकलीफ का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जबड़े के नीचे जाके हिट किया अलीज। जी हाँ, गेंद को कैच करने की कोशिश में गेंद दोनों उनके पाम्स के बीच में से गुजर के क्रॉस करके चेहरे पे लगी है और काफी तकलीफ का शिकार नजर आ रहे हैं रिजवान हुसैन। डॉक्टर उनसे कंसल्ट करते हुए कैच भी ड्रॉप हुआ और इंजरी भी हुई। एक ऐसा कैच था जो यकीनन इस फॉर्मेट की क्रिकेट में और इस लेवल की क्रिकेट में होना चाहिए था, लेकिन रिजवान इसको शायद सही तरीके से देख नहीं सके और यही वजह है कि गेंद उनके हाथों के दरमियान से होती हुई जाके उनके चेहरे पे लगी। जी हाँ, बड़ी तेज़ी के साथ गेंद ट्रैवल कर रही थी। बैट्समैन के शॉट के बाद वकास भी फ्रेश लेग्स के साथ उतरे हैं पेस को जनरेट करते हुए। इट शुड बी समथिंग अराउंड 130 जो कि ऑफ द बैट तेज़ी के साथ सफ़र करते हुए पहुंचे इन तक और हाथों में लगने के बाद इनके इस जगह पे हिट किया है। तो आई एम श्योर कि इनको अब कुछ देर के लिए ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा एंड फॉर द सेक ऑफ द प्लेयर हिमसेल्फ उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होंगे। ओवर द विकेट ये गेंद करने के लिए आए थे, गेंद को आगे रखा है और तेज़ी के साथ इसने सफ़र किया है बैट से लगने के बाद। बहुत जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए गए थे और हाथ में लगने के बाद ज़्यादा तेज़ी के साथ हिट किया है। घुटने पे बल पे जाकर उन्होंने कैच करने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद यही लग रही है कि वो ठीक ठाक होंगे। और गेंद जब सुबह सुबह के वक्त आप जानते हैं कि इस अंदाज का हल्का खुनकी वाला मौसम हो तो वो मुश्किल ज़रूर क्रिएट करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लग रहा है कि ना सिर्फ ये कि खड़े हो चुके हैं बल्कि अपनी फील्डिंग पोजीशन पे भी वो आ सकते हैं। नहीं, वो वापस जाएंगे कुछ देर के लिए। जी हाँ, काफ़ी लकीर है कि कोई सीरियस इंजरी नज़र नहीं आई अब तक और गो कि चोट ज़रूर उनको लगी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिहैब होकर वापस आएंगे थोड़े से रेस्ट के बाद। और ये अच्छा साइन है कि अगर उनके इस तरह से गेंद लगी है तो थोड़ी देर के लिए वो ऑफ द फील्ड जा रहे हैं। रिजवान हुसैन से कैच भी ड्रॉप हुआ और उनको इंजरी भी हुई, तो यहाँ पे चांस मिला है इस मौके पर तैयब को। और जिस तरह से इनफॉर्म है और जिस अंदाज से बैटिंग करते हुए नजर आए इस सीजन में तैयब, अगर यहाँ विकेट मिल जाती तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा ये नुकसान होता सदरन को। रिजवान सीज़न का पहला मैच खेल रहे हैं सेंट्रल पंजाब के लिए। नौजवान खिलाड़ी हैं, इन्होंने बड़ी नाम कमाया कुछ देर में और मिडल ऑर्डर के एक बड़े अच्छे बैटर समझे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कराची आमद उनके लिए बेहतर ही रहेगी। जी हाँ, जो आप कैच के लिए बात कर रहे हैं वो यकीनन जो कुछ जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे ऑफ द विकेट, जिसको देखते ही आंखें बंद करके हमारे टॉस के प्रेजेंटर अली यूनुस ने भी सवाल किया। शाह फैसल ने भी बताया कि आप पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकते हैं। तो अवे टीम है सेंट्रल पंजाब की इस गेम में, उसने फैसला किया है और अगर आप एक तायराना निगाह डालें तो घास और आउटफील्ड यानी कि पिच और इसके दरमियान एक इम्तियाज़ करना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है
और अब लेकिन इब्तिदा के वक्त में ज़ाहिर बात है कि सुबह का वक्त है, गेंद में शाइन मौजूद है, इन मौक़ों का फ़ायदा उठाना होगा, अदरवाइज़ शायद ये फैसला बेमानी रह जाएगा अगर 1-2 घंटे तक वो सर्वाइव करने में कामयाब हुए। इस मरतबा ऑन पे खेले और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर वहां पे चूंकि मौजूद नहीं, इसलिए गेंदा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए थोड़ा सा विवर्ड हुए ऑफ स्टंप पे और ऑफ साइड पे फील्ड लेने के बाद गेंद को पांव पे किया, उसका पूरा फायदा उठाया एक्सपीरियंस उमर सिद्दीक ने और ऑन ड्राइव जिसके नतीजे में 4 रन हासिल किए। आप जानते हैं कि गुंजाइश मौजूद ही नहीं होती, मुकम्मल तौर पर पैक आउटसाइड की फील्ड लेके मौजूद थे इस गेंद को करने के लिए, 3 स्लिप 2 गली, लेकिन चूक गए करते करते और खमियाजा भुगतना पड़ा है। यकीनन फ्रस्ट्रेशन होगी वकास के जहन में। अच्छा कमबैक किया यहाँ इस मौके पर वकास मकसूद ने, और जिस तरह अकील अभी आप पिच की बात कर रहे थे, किसी भी कैप्टन के लिए कि जब उसके पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हो और इस किस्म के पिच मिल जाए तो एक आइडियल सिचुएशन होती है। ये वो रिप्ले जिसके नतीजे में डिसीव किया, अच्छा यहाँ पे सीम हासिल किया और इस मरतबा बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंद की वकास मकसूद ने, तो एक आइडियल परफेक्ट ये टॉस था जो जीतने के बाद फैसला किया कि पहले खुद फील्डिंग करेंगे। 4 फास्ट बॉलर के साथ सेंट्रल पंजाब इस मैच में ग्राउंड में उतरी है। वकास मकसूद, निसार, इसके अलावा बिलावल इकबाल भी बड़े जबरदस्त बॉलर हैं और मोहम्मद अली। कुछ बाउंस जनरेट करने की कोशिश की, इनको अपनी लाइन पे रहना पड़ेगा। अली जिस तरह से आप बता रहे हैं सेंट्रल पंजाब ने यह फैसला खुद लिया है क्योंकि अवे टीम होने की वजह से जो पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था पीसीबी ने सिस्टम के, आप अगर चाहें तो फैसला कर सकते हैं, जो कि उन्होंने इन कंडीशंस को देख के फ़ौरन से पेशतर फैसला कबूल किया। ओवर इस दौरान मुकम्मल हो गया, ये उन 3 ओवर के बाद 11 बिना से नुकसान के लास्ट बॉल बाकी है, अपनी बॉलिंग के निशान पे पहुंच रहे हैं। तो बड़ा ट्रैफिक है इस वक्त अगर आप पॉइंट्स टेबल के दरमियान की बात करते हैं। टॉप पे सदर्न पंजाब, लेकिन उसके बाद हम अगले ओवर के इब्तिदा में देखेंगे कि कितनी जगह गुंजाइश मौजूद है। 3 ओवर के बाद सदर्न पंजाब 11 बिना से नुकसान के। यहाँ एक मोहतात अंदाज से आगाज किया अपनी इनिंग का सदर्न पंजाब ने। पॉइंट टेबल की आप बात करते हैं, 5 मैचेस में 4 पॉइंट के साथ 71 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है सदर्न पंजाब, वो वाहिद टीम जिसने इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की और बाकी मैचेस ड्रॉ पे इख्तिताम पजीर हुए। दूसरे नंबर पे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पे और सेंट्रल पंजाब चौथे नंबर पे, बलूचिस्तान 5वें और नॉर्दर्न छठे और आखिरी नंबर की टीम। तो ये पॉइंट टेबल वाज़ेह तौर पर इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि अब तक सदर्न पंजाब जो है वो वाहिद टीम है कि जिसने किसी मैच में कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, बड़ा ट्रैफिक जैम है अगर आप मिडिल पार्ट की बात करते हैं। रन हासिल होंगे, उमर सिद्दीक को प्लेसमेंट थी जिसके ज़रिए से उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है, क्योंकि जिस अंदाज की बॉलिंग खासतौर पर पिछले ओवर में की है उमर सिद्दीक को, निसार ने उनके जहन में ये सोच ज़रूर मौजूद रहेगी कि वो स्ट्राइक के दूसरी तरफ जाकर इस तमाम नज़ारे को देख सकें। पॉइंट्स टेबल पे जो हम निगाह डाल रहे थे, सिर्फ 5 पॉइंट्स 5 टीम्स को एक दूसरे से वो जुदा कर रहे हैं और सदर्न पंजाब तो एक दूसरे से बहुत आगे दिखाई देती है, लेकिन ये जो आने वाले 5 मैचेस हैं जिनकी आज से शुरुआत हुई है वो फैसला करेंगे कि 25 दिसंबर को कौन सी 2 टीम्स जाएंगी। सदर्न पंजाब बखूबी इस बात का अहल ज़रूर है, लेकिन बाकी की टीम्स के पास तकरीबन अभी भी बराबर की अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे जा सकें। गो के 5 पॉइंट्स का फ़र्क है, लेकिन वो शायद इतना ज़्यादा माने नहीं रखेगा क्योंकि ना सिर्फ जीत के बल्कि इसके अलावा भी हम जानते हैं कि इस नए सिस्टम के तहत जो कि पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया, बड़ी तादाद में पॉइंट्स मौजूद हैं। निसार कंटिन्यू करेंगे, गुज़िश्ता ओवर बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर किया था निसार ने और पूरी तरह से इस पिच को यूटिलाइज़ किया था। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले इस पिच का, अच्छी ग्रीन ये पिच कि जहाँ पे टॉस जीतने के बाद पहले खुद सेंट्रल पंजाब ने फील्डिंग करने का फैसला किया, अपने बॉलर्स को आजमाने का फैसला किया। एजाज सीमा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसके साथ इलियास हैं जो एक और ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, आमिर यामीन कि जिनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं मुल्तान के लिए भी और साथ साथ सेंट्रल पंजाब के लिए भी, और बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं आमिर यामीन, ना सिर्फ मौसर मीडियम पेसर है बल्कि इंतहाई कारआमद बैट्समैन भी हैं। जी हाँ, तैयब बेहतर अंदाज से इस बाउंस का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, गेंद की लाइन में भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ दाद देनी होगी
इनके कप्तान को, जो कि उन्होंने एक अटैकिंग फील्ड बरकरार रखने का फैसला किया है। इब्तदाई लम्हात हैं, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर उन्होंने लेके रखा हुआ है एक कैचिंग पोजीशन में, ताकि जो चांसेस निकल सके उनका फ़ायदा हासिल हो। और इब्तदाई आधे से 1 घंटा जो कि क्लीशे भी है, ख़ासतौर इन कंडीशंस में बहुत मायने रखेगा। आसानी के साथ लेफ्ट किया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में इनफॉर्म बैट्समैन तैयब ताहिर ने। यकीनन सिलेक्टर्स की निगाहें होंगी तैयब ताहिर पर कि जिस अंदाज से इन्होंने इसे कायद अज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी, और सबसे जो स्पेशलिटी है इनकी, किस तरह ये आउटफील्ड में फील्डिंग करते हैं। ना सिर्फ एक सेफ फील्डर है बल्कि साथ साथ इनका आर्म बहुत अच्छा है। जुनेद अली विकेटों के अक़ब में मौजूद, इसके बाद सलमान अली आगा की वापसी हुई है। सैफ बदर भी आपको नजर आ रहे हैं स्लिप कॉरिडोर में। दिफा अंदाज से यहां पर इस गेंद को खेले, बल्ले के दरमियान में इस गेंद को लाते हुए हुसैन तलत को एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर लाए हुए हैं रिजवान की जगह फील्ड करने के लिए, जो कि पिछले ओवर में हमने देखा था कि उनको ये चोट लगी है और आते ही उनको एक कैचिंग पोजीशन पर लाने का फैसला किया है। साथ साथ अभी भी उन्होंने स्लिप्स और गली की पोजीशंस को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन अब कम से कम ये तैयब ताहिर का होना सदर पंजाब के लिए ऑन स्ट्राइक बेहतर समझा जाएगा। बेहतर मुकाबला किया है बाउंस का। एक और दिफा अंदाज से खेली गई गेंद, बड़ा जबरदस्त ओवर रहा ये निसार का, 12 बगैर किसी नुकसान के। शक्ल से वही लग रहा है। सर आपने ये तो नहीं बोला था कि वो खड़ा हो, मतलब ये तो नहीं आता वही वाला सलमान की वापसी। एक खुशगवार सुबह है ये कराची में, और जो ख़ास तौर पर वस्ती पंजाब में देख रहे होंगे उनको ज़्यादा भला मालूम होगा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग कंडीशन से वहाँ पर खेल के ये हमारे मेहमान पहुँचे हैं इस खुले और नीले आसमान के नीचे, जहाँ पर हल्की खुनकी महसूस की जा सकती थी। और ख़ास तौर पर अपर कंट्री से आने वालों को तो शायद उसका एहसास ना हो, लेकिन फिर भी कराची वालों के लिए थी। लेकिन चूँकि हवा में नमी बढ़ी है उसकी वजह से फ़िज़ा ज़्यादा साफ़ हुई, आसमान शायद आपको ज़्यादा नीला और ख़ूबसूरत महसूस होता होगा, और इसके साथ साथ विजिबिलिटी बड़ी क्लियर है। सुबह के औकात हैं, हवा बहुत थम थम के चल रही है, लेकिन जो है वो समंदर की तरफ से है, और इसके बाद वो जो गर्मी का एहसास है वो शायद दोपहर के औकात में ज़्यादा हो, पसीना ज़्यादा है खिलाड़ियों को। ऑन साइड पर खेलते हुए आसानी के साथ एक रन हासिल किया। काफ़ी खुशगवार मौसम है कराची का खेल। अभी आपने मंजर देखा कि आसमान पूरी तरह से क्लियर है, चमकती हुई धूप क्रिकेट के लिए बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन कि जहां पर प्लेयर्स आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और पिच का अब तक जो बिहेवियर है वो भी इवन बिहेवियर है पिच का, फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है और गेंद प्रॉपर बैट पर आ रही है। ये वसी और रईस सिलसिला इसके अक़ब में एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन इन पहाड़ियों के सिलसिले के पीछे, और ये खूबसूरत मेन पवेलियन बिल्डिंग के जहाँ पे हमारा कमेंट्री बॉक्स भी वाक़ है, और साथ साथ दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस मरतबा गेंद स्लिप में कैरी कर गई और यहाँ पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने इस गेंद को कैच करने की, और गुज़िश्ता ओवर में जो विकेट लेस रहे थे वकास मकसूद इस मरतबा इस ओवर में कामयाबी हासिल करते हुए और इन फॉर्म बैट्समैन तैयब ताहिर की विकेट हासिल की। तो पिछले ओवर में बच निकले थे, लेकिन इस मरतबा लगभग वही गलती दोबारा दोहराई। इन फॉर्म तैयब ताहिर ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पे वो एक एब्सोल्यूट नो शॉट खेलने के लिए चले गए, कि ना प्रॉपर ड्राइव थी ना डिफेंड करते हुए, और अब के लिए तैयार मौजूद थे सैफ बदर कैच करने के लिए। बाएं जानिब ड्राइव लगाई और पिछले ओवर में दी जाने वाली गलती का इजाला मुकम्मल तौर पर कर डाला। तैयब ताहिर 5 रन बनाकर आउट। बड़ी कामयाबी सेंट्रल पंजाब की। सदर पंजाब 13 पे।
तो नए आने वाले बैट्समैन इमरान रफीक तैयब ताहिर के आउट होने के बाद क्रीज तक पहुंचते हुए इमरान रफीक की भावलपुर से बड़ी परफॉर्मेंसेज है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है इमरान रफीक, सदर्न पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन। तो अब दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद। बिल्कुल अली, ये एक और टाइम हो सकता है इन रोड्स क्रिएट करने का, और चूंकि हम देख रहे हैं कि गेंद को बाहर की जाने मूव कर रहे हैं वकास लेफ्ट हैंडर से, और वो इनवाइट भी कर रहे हैं शॉट खेलने के लिए जाएं, तो तैयब ताहिर का जो कि बेहतर अंदाज से गेंद को मिडिल करते हुए गेंद की लाइन में आकर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका जाना एक बड़ा धचका होगा सदर पंजाब के लिए। और अब अचानक से आप देख रहे हैं कि कुछ रौनक हो गई है, 3 स्लेप के साथ एक मरतबा फिर 2 गली ले लिए और मजीद वो बाहर की जान में निकालने की कोशिश करेंगे और मजीद विकेट्स को स्मेल भी करेंगे वकास। अच्छा पेस, अच्छा बाउंस हासिल करने में अब तक दोनों बॉलर्स कामयाब हो रहे हैं। और अगर रिप्ले देखें अकील गुज़िश्ता गिरने वाली विकेट का कि जहां पे बल्ले को बहुत ज्यादा बाहर निकाल के खेल रहे थे तैयब ताहिर, पिछले ओवर में भी वो आउट होने से बाल बाल बचे थे, और देखें काफी ये देखते हुए कि 3 स्लिप एक गली लगी हुई है, उसके बावजूद इतना बैट को बाहर निकाला और बड़ा अच्छा कैच लिया सैफ बदर ने। तो सैफ इंतहाई सेफ। जी, इमरान रफीक अपनी पहली सेंचुरी के मुंतजर हैं, सीजन में 4 मजमूई तौर पर हासिल कर चुके हैं। एक और अच्छी गेंद जो कि ये शुको को शोबात जहन में डालती रहेगी बैट्समैन के कि वो प्रॉपरली इसको ड्राइव करने के लिए जाएं या फिर डिफेंड करें ऑन द बैक फुट, और इस मरतबा उन्होंने सेफ्टी फर्स्ट के फार्मूले के तहत जाने की कोशिश की। एक्सपीरियंस लेकिन अभी भी खासा नौजवान, जैसे अली ने बताया, इनका ये सीज़न खासा तौल पकड़ सकता है, ख़ास तौर पर ये जो 5 मैचेस हैं मोस्ट लाइकली इनको पूरा रन मिलेगा कराची में खेले जाने वाले मैचेस में। तो साथ साथ एक चैलेंज भी ज़रूर है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी कि सुबह के औकात में रन स्कोर करें और एतमाद बहाल करें। अच्छा बैकफुट पे रखा हुआ है अब तक का दोनों बॉलर्स ने सदर्न पंजाब के दोनों ओपनर्स को। ओवर मुकम्मल हुआ 13 पर 1। शादी ने अपनी ऐप भी रखी हुई है मैं अपनी चीजें पूरी पढ़ दी नहीं, मैं भी नहीं सामान 100 बरस का की खबर नहीं है, इतना सामान होता है। निसार गेंद करने के लिए एक मरतबा फिर, और खूबसूरत गेंद तैयब ताहिर के जाने के बाद ना सिर्फ निसार के हौसले बुलंद होंगे बल्कि लेफ्ट हैंडर जो कि दोनों एंड पे मौजूद हैं उनको वो तंग भी करेंगे, जो कि अब तक हमने दूसरे एंड से वकास को भी करते हुए देखा। एक मरतबा फिर गेंद पड़ने के बाद शार्पली बाहर की जानिब निकली है, तो मोहतात रहना पड़ेगा एक्सपीरियंस उमर को निसार के सामने। जी अच्छी अब तक बॉलिंग का मुजाहरा किया है दोनों इफ्तिताई बॉलर्स ने सेंट्रल पंजाब की जानिब से, और बैट्समैन को बैक फुट पे मुसलसल रखा है। बड़ा अच्छा अब तक पिच को यूज किया इन दोनों बॉलर्स ने, खूबसूरत स्मार्ट स्मूथ रन अप, अच्छी गेंद, और बहुत ही अनलकी रहे निसार इस मौके पर कि गेंद बल्ले का किनारा लेने के बाद विकेटों के पीछे नहीं गई। विकेटों के अकब में जुनैद अली पूरी तरह से चाको चौबंद, किसी भी एज को कैच करने के लिए तैयार। बिल्कुल देखना यह है कि ये कराची की हवा कितनी रास आती है। निसार को एक और खूबसूरत गेंद और विकेट कहना होगा कि डिजर्व करें इस तरह की तमाम कारकर्दगियों से। एक मरतबा फिर कोई आइडिया मौजूद नहीं था उमर के पास, और गेंद आउटसाइड एज को बीट करती हुई पहुंची है। शानदार फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा दोनों एंड से जारी। वकास विकेट हासिल कर चुके हैं और निसार इस हैवी मेटल को यहाँ पे निकालते हुए। एक और अच्छी डिलीवरी, काफी तंग किया हुआ है उमर सिद्दीक को निसार ने अपनी उम्दा बॉलिंग से, और ना सिर्फ अकेले पिच का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि हम देख रहे हैं कि ये गेंद भी देखें आपके पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ बाहर की जानिब निकली, और बड़ी ये एक अच्छी चीज थी कि बल्ले को ज्यादा बाहर नहीं निकाला उमर सिद्दीक ने यहाँ। और दूसरी जानिब नई गेंद का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा किया, पिच को तो यूज कर ही रहे हैं, साथ साथ नई गेंद का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो अमूमन हम देख रहे हैं कि जब से ये T20 क्रिकेट आई है बॉलर्स जो है वो नई गेंद को जाया कर देते हैं।
बिल्कुल, ये पेशेंस का गेम है जिसके लिए उनको अपने आप को सेम लाइन और लेंथ पर जारी रखना होगा, और अब तक ऑलमोस्ट वही करते हुए निसार। निसार जो कि पिछले सीजन में मंजर आम पर आए थे, कि इनके लिए भी ये भरपूर मौके मौजूद हैं, चूंकि तकरीबन हर टीम में कुछ ना कुछ अली हम देख रहे हैं कि गुंजाइश निकली है इस पाकिस्तान के बांग्लादेश के दौरे की वजह से, जो कि अब इन कोविड के दिनों में एक बड़ा स्क्वाड लेके जाते हैं। हसन अली इनके रेगुलर कैप्टन पूरे सीज़न में बज़ाहिर दस्तयाब नज़र नहीं आते, और उनकी अदम मौजूदगी में इस खला को पुर करने के लिए भी एक नौजवान कप्तान मिले हैं अली ज़रियाब की सूरत में, और साथ साथ जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है उसमें वकास को इस तमाम एफर्ट को लीड करना होगा, लेकिन नौजवान निसार बड़े अच्छे अंदाज से अब तक बाउंस जनरेट करते हुए। एक और अच्छी डिलीवरी, आसान कलेक्शन था विकेट कीपर जुनैद अली के लिए। और जहां पे आप सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे थे, आज यकीनन सेंट्रल पंजाब जो है वो अहमद शहजाद को मिस कर रही होगी, कि जब कल उन्होंने अपनी सालगिरह भी बनाई तो बर्थडे बॉय को मिस कर रही होगी यहाँ पे सेंट्रल पंजाब। जी हाँ, ये केक डेज का आजकल दौर है, तो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा केक नहीं खाया होगा। और कराची की फ़िज़ा की हम बात कर रहे थे, इस शहर के उनको खाने भी रास आएंगे, लेकिन बड़े लगातार क्रिकेट है। पिछला सीज़न पूरा यहाँ पे खेला गया था, और अभी भी आधा सीज़न उसके साथ फाइनल है, तो अपने आप को ठीक फ्रेम और माइंड के साथ साथ मुकम्मल तौर पर शेप में और रेडी रखना गेम्स के लिए भी खिलाड़ियों के लिए हर लिहाज से बड़ा चैलेंज है। जी हाँ, पाकिस्तान के वो प्लेयर के जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर की, अहमद शहजाद 6 ओवर मुकम्मल 13 पर 1। ये अब तक का सदर पंजाब का स्कोर कार्ड, के जहां पे आउट होने वाले वाहिद खिलाड़ी तैयब ताहिर 5 रन बनाने के बाद आउट हुए। 6 रन के साथ उमर सिद्दीक क्रीज पे मौजूद हैं, जबकि इमरान रफीक ने भी अपने स्कोर का आगाज नहीं किया। 13 1 विकेट के नुकसान पर। "13 for 1 is Southern Punjab at the moment. We're into the 7th over of this game. This is the 6th round game here at State Bank Ground between the Punjab Derby. It's Southern Punjab taking on Central Punjab. This was a pitch of a delivery. Very good ball, very good line. I've got with me Amir Said. A very good morning to you. Thank you, Ali. Welcome to all the viewers. This is the 17th match of this season. Central Punjab being the away team, deciding to bowl first. No hesitation whatsoever. That's the slip cordon we have. And have a look at that pitch, full of grass, full of green grass. And being an under-19 captain, Emmer, you would like to bowl on this pitch too? Oh yes, definitely. Give the bowlers as much chance as possible to get those early wickets and get into the game, get a hold of. Brilliant. What a spell of bowling we've seen from Waqas Ahmed. We're into the 4th over of his spell, and he's already bowled some brilliant deliveries. A catch gone down, and this. Yes, brilliant bowling that. Lovely areas. And when you get this sort of opportunity on this sort of a track, the responsibility of bowlers increases, as of course the lines and lengths are so important. It's very easy to get carried away on such a track. That's why the experience matters, and Waqas Maqsood is an experienced campaigner. That's the line, but probably a little on the shorter side. The captain would like him to bowl up to the batters, make them drive, and that's where you create those opportunities we talk about. Tayyib Tahir losing the wicket. It was a wrong shot by Tayyib. He could have easily let it go. He was well caught by Saif Badr off Waqas Maqsood. That's Agha Salman due next. Scored a century in Sri Lanka for Pakistan. He is in good form.
Southern Punjab would feel very comfortable after him being back in the side. Runs, couple of them easily, and if they push hard, they can come back for 3. Settling for 2 runs. Yes, as we were saying, Ali, that patience is the game here really for bowlers as well. Not only for the bowlers, but for the batsmen, but for the bowlers as well. Because you know, when you have a track like that, you try to do that something extra to get those early wickets, and it's very easy at times to leak away those runs and that pressure. Edge taken, beautiful delivery. This is a wonderful spell of bowling by Waqas Maqsood. Second wicket, Imran Rafiq going for that delivery and edging it straight to the keeper Junaid, who makes no mistake. So second wicket down for Southern Punjab. Score 15 for 2 now. Yes, a beautiful delivery that just left the batter at the last moment. Nothing much he could do about it really. There you see that channel, beautiful delivery, a bit away from the body, but you've got to play at those ones. Excellent areas. That is the way to go. That is what you expect from an experienced campaigner like Waqas. 2 runs Imran Rafiq made. It's a big wicket in this contest, because we all know that Imran Rafiq is a very good batter. He takes his time. He's a very cool and calm with patience. Losing his wicket. Another informed man, Agha Salman now joining the captain Umar Siddique in the middle, fresh from a century for Pakistan A against Pakistan Shaheens against Sri Lanka. A team in Sri Lanka. So at the moment it's all Central Punjab. Yes, making good use of that new cherry. Very important session, which will of course put your team on the right track. If you lose this session, it's very difficult to come back in the game before, because you know, at times we've seen in Karachi, even if it's a grassy track, later on in the day it does get a bit better to bat on. So this is a very important session, just to put that extra pressure on the batting line. Umar Siddique, a very solid player. He's got a very good defensive technique. A very young captain for Southern Punjab. And this is how the wicket fell. Very good, angling in and then leaving the batter after pitching. That's what you want to see from a seasoned campaigner like Waqas. It's beautiful delivery that. Beaten again. A wonderful spell of bowling by these 2 fast bowlers from Central Punjab. No clue whatsoever from Umar Siddique. Wonderful bowling. Well, Nisar has been on the mark from the very beginning. A bit unlucky, hasn't gotten that edge which he's looking for, definitely. But well, definitely if he bowls those areas continuously, success will come. Central Punjab would want to make those early inroads, because they're without some senior batters in their side. Ahmed Shahzad not included. Azhar Ali gone for national duty. Abid Ali also not in the side. Bilal Asif also not in the side. It's never easy, right, in the middle of a season when your 4 main batters go out of the team. Although it's a good opportunity for the youngsters to come and take that place, but it's never easy for the teams. This is a good news for Central Punjab. They've got those early 2 wickets. Oh, it's swinging after pitching, and that's what you will expect from a pitch like this in Karachi. Grass on it, moisture on it. You played a lot of cricket here. You would know better than me.
Yes, it does dart around a bit, especially in the morning and a winter morning. Not really winter here yet, but yes, the temperatures are down. Not as hot as it usually gets in Karachi. Beaten again. These are some tough conditions to bat on. You need to have a really high skill to bat on a pitch like this. You need to be very good with the defense if you're batting on a pitch like this. It's been a good ground for Agha Salman. He's got 200s in this ground and a 50 to his name in just 7 innings. 57 of average. Have a look at that delivery. How do you play this, Amr? Well, yes, difficult, very difficult, and the technique is very, very important on these tracks. You got to know where your off stump is, and definitely you cannot afford to hang that bat outside that off stump. That's what Tayyip Tahir did, what you were just mentioning. Just don't hang your bat on it, and he did and lost his wicket. At the end of 8 overs, it's 15 for 2 Southern Punjab. Abdul Razak and former Pakistan wicketkeeper Ashraf Ali, two very experienced people for Central Punjab, guiding their team throughout the season. Akram Raza is also there, Pakistan former off spinner. Razak, of course, being one of the most prolific all-rounders in cricket. And a very brave coach also, because he's called up a young guy from second 11, Ali Rizarab, to captain a central side. It's a brave decision. It's a good decision. One should groom the young captains. That's what you want to see. Well, definitely the way he's played his cricket, he's been aggressive. He's been, you know, very big part of that, of the success of that team in his times. And of course, that bravery is, you could see that when he was batting, when he was bowling, even when he was getting a bit of that reverse swing. So yes, definitely all the players must be expecting that sort of an attitude from Razak as well. Play and a miss. Oh, lots of oohs and ahs, and that's what you expect. And that's what I initially thought when I first went and looked at the pitch. I said, wow, you got to be bowling first on this pitch. Central did exactly that. And you can see the smile on their faces, because they know a wicket is around the corner, any delivery. Yes, nothing you can do about that as well. You know, pitched middle and leg nearly and left him. Exaggerated movement of the wicket at the moment, and the only way is to, you know, play very close to your body. Runs. Might not have the legs to go 4, but 2 definitely. It's been a rarity runs this morning. It's been a very tight morning by Central Punjab. They've kept it well. Other than just one drop catch, it has been all Central Punjab at the moment. They're the visiting team in this ground, deciding to bowl first. That was the right decision. And now making the most of the situation at the moment. Yes, definitely. And as you can see, Ali, when on this sort of track, you also get more opportunities to score runs. Only if you can, you know, with the help of your technique, you can keep away the good balls, and at times be a bit lucky as well, because some deliveries are really unplayable, as we have seen so far. But there you see that one, a half volley. Yeah, on this sort of track, these are the balls that you've got to capitalize on, and I'm sure he must be quite disappointed that he missed out on that one. It's been a rare sight. Over pitch deliveries. He's happy to let it go this time, Agha Salman. You're talking about making runs on the pitch like this. I think the loss of Tayyip Tahir will definitely dent
the chances of Southern Punjab, because he's sort of a player who once stays on the pitch, scores runs quickly. He's known as a dasher in back home, and Lahore he plays his cricket, local club cricket, but now has cemented his place in Southern Punjab. Scored a 200, and in the last day of the last game, he played a mammoth inning, draw the game against Sindh, the quality side like Sindh. It was a great inning, but this time it was different. The situation is different. Yes, well, at the end of the 9th over, it's 17 for 2. Well, usually, there you see Azam Khan, another dasher, waiting for his batting. Well, on tracks like these, there are two ways to go about it. I think one is that you wait for the better times when the ball starts to swing a bit less and the movement is, you know, less exaggerated, or you go for your shots, you know, which for me is it's not really the best way to go about it. One more run added to the total. But you have to wait for the bad deliveries to score runs. You cannot be just reckless and go around hitting every delivery, just realizing that you might get out any delivery. As you just said, you need to have the right skill set, you need to have right technique, especially when it comes to defense. If you have got a right sort of defense, runs do come. Definitely, defense is the most important thing, and secondly, it's the shot selection. You know, on a placid track, you can get away with a few strokes that you play away from the body, or most probably, if the ball is away from you and you play a drive outside off stump or something, but not on this track. It will be very, very difficult to get away with such shots here. Another delivery, rocking delivery. Nisar is happy. He's surprised also, shocked also. What's happening? Sometimes as a bowler you get excited, as you just said earlier. Oh, that came in, nipped in after pitching. A good leave actually by Salman. He knew where his off stump was and let the ball go. This is the first game in Karachi leg. Situations, conditions have been different in Punjab, especially at Gaddafi Stadium. Slow, low pitches there. But this is a good test of all these cricketers. Earlier, it was a test of bowlers in Lahore and Faisalabad and Multan. But here at State Bank, it's going to be a test for batters. Their technique, how do they cope up with this pressure? That's the question. And whoever scored runs here, I think that would be great for his career. Wanted a run. I remember in the last season at National Stadium, Agha Salman did ran himself out, and a couple of partners, the couple of times I saw him bat. He has a habit of just hitting and taking those few steps. But at the moment here, the situation they are in, they don't want to run out. They don't want any unnecessary risk at the moment. Just play out the session. Runs don't matter. Time matters. Definitely. A run out would be a sin on such a track, I think. And yes, you're absolutely right. Salman does have a habit of getting himself into trouble. This is nicely done. Might not get the 4, but definitely 2 on the take. Does it easily. You can just hear from the claps of the remaining players, of extra players who are sitting right underneath us, clapping for every run. That shows every run matters. It's not going to be easy. Oh yes, definitely, and especially when both the opening bowlers are bowling a spell of that sort, they
They seem to be in good rhythm. They're hitting the right areas. Very rare half volley from Nisar. He's in his 5th over, only given away 3 runs. So you can imagine the excellent lines that he's bowled so far. Again, played beautifully. Can we see the first boundary of the day? No. Doesn't have enough legs to go to the boundary. 2 more runs. To Salman Ali Agha, who's moved to 6 runs after 10 overs. It's 22 for 2, Southern Punjab. A very important partnership this between the in-form Salman Ali Agha and the experienced Siddiq. Here's the scorecard. Tayyab Tahir let off early on, could not capitalize, went for 5, and then Imran Rafiq was again caught in the slips for 2 runs. Both the wickets went to Waqas Maqsood. What a wonderful ground this has been for Waqas Maqsood, always into wickets. Remember, his 9-wicket haul came into this ground, at State Bank. That's the best ever by a bowler here at this ground at first class level. Wonderful. Edge again, falling short. Lucky this time, Umar Siddiq played with soft hands. That could have only saved him. It's very important, as you have mentioned, those soft hands on this track. There you see, good ball, but he didn't go for the ball. You see, he let the ball come onto the bat. Is it a good idea, Emmer? He took a few steps towards the bowler on this track, going to the length, taking the length. Strange tactics, maybe, being the captain. Well, nowadays all the players, they come up with new ideas with their own. They have their own technique to survive such a situation. So at times it does help when you were standing, a bit ahead of the crease. Some batters prefer playing it as late as possible, but some do want to meet the ball as early as possible at times. Calling it no straight away. Agha Salman. That's a very young captain, Ali Zarab, promoted from the second 11 to captain a side. You being the captain of under-19 team, Pakistan A team, how difficult is it for a youngster promoted from second 11 to come to first 11 and captain a big side like Central Punjab, who's got a huge star? It's a huge star-studded side. How difficult is it? Yes, it can be intimidating at times, having all those names in the team. But I am a strong believer that a captain is something different. A captain is not necessarily the most senior player, is not automatically a captain for me. Because, the captain has something different, that X factor. He looks at the game in a different way than the usual players. Even most experienced players sometimes miss a point, which a certain player who is most probably the captain or a captain in the making does pick those points. So it's very important to have that X factor, that vision as a captain. Fair enough. Oh, there's a huge appeal! Huge appeal! Oh! For a moment, I thought the finger is slowly coming up. Disappointed Waqas Maqsood. He thought he's got it, man. It right on the toe. Agha Salman not looking happy. These times can be very difficult times. Imtiaz Iqbal, the umpire, deciding against it. Waqas going around the wicket. Definitely made the ball dart in late. That must be, there you see, a bit away from the stumps.
Ball coming in. Oh yes, definitely I think going down with the swing. If we can see it again, I think it's a good decision by Imtiaz Iqbal. That one swung. And swung late, but swung a long way. So most probably would have missed leg stump. And the angle also, bowling around the wicket, taking it away from the leg stump. We'll have to have a look at it again. Agha Salman is not happy. These blows can be very difficult. Earlier we saw Rizwan Hussain going off the field after dropping a catch, which did hit his face. Second time another, and we're not over the first hour yet. What is happening here at State Bank? After the slow, lower conditions of Qaddafi Stadium, things are happening at State Bank. That's what you want to see. Yes, definitely as spectators, as commentators, we'd like to see some action. And we will certainly be seeing some action here, I think. But that blow on that toe, definitely it would be painful once he gets back to that hotel and you know, puts his feet on that bed. He will be feeling it more as the time pass goes. Salman Ali Agha, a very good, talented player for Southern Punjab. Plays for Ludhiana Cricket Club in Lahore. Faleed Yaqub. Scored 100 against Sri Lanka in Sri Lanka in testing conditions. Very talented, very skillful batter he is. More known for his white ball capabilities. Salman Ali Agha played for Lahore Qalandars also. With every delivery we hear lots of oohs and ahs again. And just rushing into the other side. That's what they know, the importance. Just don't let the batters settle. Just don't let the nerves settle. That's why they're rushing towards the other end to ball that over. Just quickly be onto the batters. 2 bowlers used so far. 6 overs for Waqas Maqsood. 16 runs and 2 wickets. But the main person who's put the pressure is Nisar Ahmed. 5 overs, 3 maidens and just 5 runs given. Yes, very important. As they say, you've got to hunt in pairs, the fast bowlers. And of course, usually we've seen that one bowler creates the pressure and the other one gets the rewards. Two is the call by Umar Siddiq. And 2 he will get. It's very important that runs keep coming. Because there's no point just blocking and getting out and losing your wicket. That is why runs, even 1s and 2s, they matter a lot. Yes, very well said. It's even though you are restricted with your stroke play, but it is very important to stay positive and score at every opportunity that the bowlers give you. Three slips and a gully. Outside the off stump. So usually what happens at State Bank ground, if you talk about the moisture in the pitch, for how long it stays, because you being the local person would be in a better position to tell us, because this is the first time I'm commentating here at State Bank ground. So probably at the pitch, when does this tough period gets over for the batters? Well, yes, definitely they will have to be careful till lunch at least. But you never know, it's the first day, fresh pitch. So it just might do things even after lunch for an hour or so. So yes, first day is always difficult on a grassy track. It's not being easy as a batter also on a pitch like this. It's known that it is a batter's game, but come play on this pitch against a quality bowling lineup and you'll realize batting is not that easy
as it is known, because conditions vary. And this guy on your screen, Waqas Maqsood, a wonderful fast bowler. 9 wickets it took at this ground, the best ever any bowler has ever taken in this ground. Wonderful cricketer. Good run, very good running between the wickets. Oh, it was close in the end. Oh my God, I thought they could make it easily. Lucky to be there. A direct throw was needed. Yes, direct throws are always dangerous in such situations. There you see, just dropped the ball, went for that. Oh, yes. Had that been a direct hit, it was game over for the skipper, I think. Why would you run for this? That is my question. You're 2 wickets down, we're not over the first hour, and you're taking such runs, such risk. Not sure why. Salman Ali Agha again, I told you, he will be involved in such situations. The usual suspect. Yeah. Definitely. And as we were talking about technique, and in these days when most players base their game on T20 cricket or shorter versions where they want to play strokes and want to play them freely, on tracks like these, you remember the days when your coaches at the initial stage told you that how important the technique is. End of 12 overs, 27 for 2 Southern Punjab. Well, something you mentioned, Ali, about captainship. I think it's very, very important that that captains are groomed. People with special qualities, who have a vision, who can see the game beyond all the rest of the players. They are groomed, picked and identified at a very early age, and then groomed, stage by stage to most probably captain sides at Pakistan level. Runs, it's a thick outfield here at State Bank ground, but this definitely will earn them 2 if they run hard. I thought there was 3 available, but they've settled for 2. Southern Punjab batters, openers. 1 is there. Umar Sadiq is still there on 10. Salman Ali Agha is on 9 of 18. And yes, I agree with you on this, Band. The captains are picked up early, and this structure, this new PCB structure, I think is suited for that, because there are different layers, different stages. You play for club cricket, city cricket, second 11 cricket, and then you come to this first level cricket. Again coming down the track. This is better technique by Salman Ali Agha, learning from Umar Sadiq, maybe trying to get to that length, get to that pitch of the delivery. That's what he's looking for. It's not easy conditions for batters. Yes, took a step forward, and it also came a bit outside that off stump just to, get to that delivery, get closer to that delivery. Yeah, it might help, especially when he's bowling round the wicket and the ball is coming into you. That can be helpful. Shorter one this time. We've been commentating in the last 5 games also. And by the first hour, in the games at Gaddafi Stadium, we have seen 2 to 3 bowling changes by now. This is the first time that we're seeing the opening 2 bowlers are still operating after almost the first hour of the play. So it's different here in Karachi than Lahore. Where do you like to play more, as a batter? At Gaddafi Stadium or National Stadium? Well, definitely Gaddafi Stadium. Because at National Stadium as well, it does do a bit early on. So yeah, Gaddafi Stadium is paradise for batting.
That's a good run. Very good running. This is a better call. Got to be sensible when you're 2 wickets down in the first hour of this game. 30 runs on board. 2 of the most experienced batters for Southern Punjab in. They don't want to just make a mess of it and give your wicket away with a run out. As we saw in the last over, it was a close call. Talking about Gaddafi Stadium, it's not that easy to score runs even there because pitches are slow. You got to have the right technique there also. You got to be very patient even at Gaddafi Stadium because you got to wait for the bad deliveries there. National Stadium, I believe, is a better choice to me. I think the ball comes nicely onto the bat. Soft hands again. Yes, I won't totally disagree with you, Ali, because once you see off that morning session, most probably at National Stadium is also excellent to bat on. And you're spot on with the fact that the ball does come onto the bat much better than Gaddafi Stadiums at times, because especially late in the season, when there are too many matches played on the same tracks, they get slower and slower. And very surprisingly, Emmer, the last hour that I've realized at National Stadium Karachi helps fast bowlers. I've seen fast bowlers take so many wickets in the last 1 hour of the game. It's pretty strange because the same pitch, same conditions, bowlers get wicket. That's the end of 13 overs. 30 for 2 Southern Punjab. तीस रन 2 खिलाड़ी आउट। सदर्न पंजाब का स्कोर। पहले घंटे के खेल में 13 ओवर्स का खेल हुआ। दोनों विकेटें हासिल की वकास मकसूद ने। सलमान अली आगा और उमर सद्दीक विकेट पर मौजूद हैं। अनकंटेस्टेड टॉस था। सेंट्रल पंजाब ने ये फैसला किया और पहले घंटे में ही 2 विकेटें हासिल की। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं अकील समर। खुश आमदीद अकील। खुशामदीद तो आपको कहना चाहिए शाह फैसल। आप उम्मीद करते हैं कि इस बेहतर विजिबिलिटी से बिल्कुल
लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे। क्रिकेट के लिए भी बेहतर है, सेहत के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि वस्ती पंजाब में भी फ़िज़ा क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से खासा बेहतर है, आसमान भी और विजिबिलिटी भी और पिच भी। जी हाँ, अब तक जो म्यूज़िक क्रिएट किया है उसमें मेरे ख्याल से सब कुछ सबके लिए था। आप मुझे यकीन है कि जब भी हम इन आउट्स को देखेंगे और उसके साथ साथ मज़ीद बात जारी रखेंगे तो बेहतर बता सकेंगे पिच के बारे में। लेकिन अब तक हम समझ सकते हैं कि तकरीबन बराबर का मुकाबला है, 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, लेकिन साथ साथ जो ये पार्टनरशिप है सलमान अली आगा और उमर सदीक, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं इनके सबसे ज़्यादा तजर्बा रखने वाले बैट्समैन के दरमियान है, तो इसने इस डूबती हुई नाव को सहारा भी दिया। जी बिल्कुल, और अब बॉलिंग में तब्दीली, मोहम्मद अली आए हैं। इससे पहले निसार ने यहाँ से बॉल किए, 6 ओवर ज़रूर उन्होंने किए। लेंथ कुछ पीछे रही जिसकी वजह से बल्ले को कई दफ़ा बीट तो ज़रूर किया, लेकिन एज हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। मोहम्मद अली की भी जो नेचुरल लेंथ है वो बैक ऑफ अ लेंथ है, ये अच्छी बॉल थी, लेकिन एजेस इंड्यूस करने के लिए जो 2 विकेटें वकास मकसूद ने हासिल की, अगर आप उनका जायज़ा लें तो वो गेंद जो है, वो गेंदें इस गेंद की बनिस्बत कम से कम जो है 2-3 फुट आगे गिरी हुई गेंदें थी। जो 6 मीटर का एरिया है उसके अंदर अगर बॉल ज़्यादा होगी तो एज लगने का चांस होगा इस बहुत ही लाइवली विकेट पर। और थोड़ा सा लेंथ को अपने देखना होगा सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स को, और शायद वकास मकसूद की जो लीड है उसको फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मोहम्मद अली एक 5 विकेट्स का हॉल भी हासिल कर चुके हैं और खासी क्रिकेट उन्होंने वहाँ पर सीज़न के दौरान खेली है, और जो इनकी अब तक की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है उस पर देखते हुए यकीनन इन कंडीशंस का अभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और दाद देनी होगी दूसरी तरफ नौजवान कप्तान अली ज़रियाब को कि उन्होंने अब तक इस अटैक को बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। स्लिप्स भी मौजूद हैं और 2 गली लिए हैं इन्होंने इस मूवमेंट को देखते हुए। ये आसान लेंथ है छोड़ने के लिए, अभी भी मूवमेंट है। मोहम्मद अली ने पिछले मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया, तो अच्छे रिदम से आ रहे होंगे, और वो जो राउंड थे 5 वो बैट्समैनों ने दिल खोल कर उनका फ़ायदा उठाया। ये लेंथ जिसकी मैं बात कर रहा था, 6 मीटर के एरिया में ये बॉल गिरी, ये भी बिल्कुल बॉडी से थोड़ा सा बाहर निकली ज़रूर, लेकिन इस लेंथ पे आपको मजबूर होना पड़ेगा खेलने के लिए। इससे पीछे जो लेंथ होगी वो ज़्यादा बड़ा एंगल क्रिएट करते हुए बैट्समैन को बीट करते निकल जाएगी। बिल्कुल, अब तक इन्होंने ये 3 स्लिप्स रखी हैं, साथ साथ 2 फील्डर गली में मौजूद हैं। एक कैच ड्रॉप ज़रूर हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 ओवर के मेहमान रह सके थे उसके बाद तैयब ताहिर। ये 1 घंटा शाह फैसल हो चुका है और उसके साथ साथ गेंद भी अब ये 13 ओवर पुरानी है, तो वो जो मूवमेंट इब्तिदा में दिखाई देती है वो इसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। अभी भी पहला पूरा सेशन कप्तान इस बात को फैंसी कर सकते हैं कि वो मूवमेंट मिलेगी। अच्छी मूवमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि सुबह जब हमने विकेट देखी उसमें काफ़ी मॉइस्चर था और ग्रास जो है वो फ्रेश ग्रीन है। जिस तरह हैमर पिछले स्पेल में बात कर रहे थे कि शायद ये खाने के वक्फे के बाद भी घंटा एक ऐसा होगा जहां बॉलर्स डोमिनेट करेंगे, उसके बाद देखना होगा कि क्या ये इस घास में से जो जान है वो निकल पाती है और फिर विकेट के अंदर कितना बाउंस है, तो वो मजीद बॉलर्स के लिए एक इंकरेजमेंट हो सकती है दूसरे सेशन में। इस मरतबा एज हासिल किया, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से खेला सलमान ने। बहुत अच्छी फॉर्म्स में से आ रहे हैं सलमान अली आगा। श्रीलंका में जहां पे कंडीशंस बैटिंग के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं थी, उन्होंने एक सेंचुरी बनाई शाहीन्स के लिए। जी हाँ, सॉफ्ट हैंड से खेलने की स्लाइड रखते हैं, जो कि अब तक हमने इनको करते हुए देखा। बड़ा कूल हेड इनके शोल्डर्स पे मौजूद है। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी मुंतखब हुए थे ये दौरा जिम्बाब्वे में, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रद्दबदल नहीं की जाती इस सबसे लंबे फॉर्मेट में, लेकिन वहाँ पर इनको ज़्यादा बड़े लेवल के क्रिकेट में मेन स्ट्रीम खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। खूबसूरत ड्राइव, ज़्यादा मायूस नहीं होंगे अली इस लेंथ से, लेकिन सलमान अली आगा ने बहुत ही उम्दगी से इसको खेल दिया और 3 रन हासिल किए। ये सलमान अली आगा का खासा है एक अंदाज से कि वो अपने लिए शॉट को कशीद करना जानते हैं। गेंद जो कि फाइनली अली आगे लेकर आए थे, लेकिन इसको बड़े दिलकश अंदाज से वो ड्राइव करने के लिए गए। 3 रन उन्होंने
ऐसा करके चुरा लिए हैं, दूसरे एंड पर चले गए हैं और हर गुजरता हुआ रन इनके एतमाद में इजाफे का बायस होगा। दूसरी तरफ अली जो कि गेंद करने के लिए आए हैं और इस एंड से बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही थी और 2 विकेट्स भी मजमूई तौर पर हासिल हो चुकी हैं, उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर इन्हीं 2 नुकसान के साथ जाते हैं लंच में ये सदर्न पंजाब के खिलाड़ी तो फिर अपने लिए वो एक बेहतर आगाज़ समझेंगे हर लिहाज से सेशन में। जी बिल्कुल, और जहां तक सदर्न पंजाब की अप्रोच की बात है, वो वाहिद टीम है जो इस टूर्नामेंट में एक मैच जीते हैं। बात जारी रखेंगे 14 ओवर के बाद 33 पर 2। पर 2। और जो बात कर रहे थे कि कप्तान उमर सदीक का जब टॉस के मौके पर अली यूनुस से बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि वो पहले बैटिंग ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कंडीशंस टफ हैं, लेकिन उस वो टफ कंडीशंस में से अगर वो गुजार जाते हैं टाइम तो उनकी अप्रोच ऐसी है कि वो गेम को सेटअप करें पहले बैटिंग करके। काफ़ी दिलचस्प थी उनकी ये थ्योरी। जी हाँ, और एक बात यकीनी दिखाई देती है जो कि कम से कम हमने इस ग्राउंड पे भी देखा है, आपकी इस पिच रिपोर्ट में भी और बाकी ग्राउंड से भी मुझे यकीन है कि जो प्रोग्रेस जारी है, कुछ वहाँ पर स्कोर्स आना शुरू होंगे तो कम से कम इन 5 गेम्स में अब चीज़ें शेप अप होना शुरू होंगी। पॉइंट्स अर्न किए हैं लेकिन फतूहात ऐसी कोई नहीं मिल सकी हैं, सिर्फ एक फतह सदर्न पंजाब के हिस्से में आई और बाकी का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। दूसरी तरफ से एक और मीडियम पेसर बिलावल इकबाल गेंद करने के लिए आ गए हैं। शायद ये कंडीशन उसके लिए ज़्यादा सूटेबल हों और पहला ही गेंद आगे किया, फ्रंट फुट पर खेलने पर मजबूर किया। यही लेंथ है जहां से एजेस लगने का ज़्यादा चांस है। और खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद शार्पली बाहर की जानिब निकली और बैट्समैन जो कि इतना ज़्यादा यहाँ पर स्विंग के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे थे, बिलावल को बिल्कुल इस पर एतमाद भी मिलेगा। पहली गेंद पर अगर आप बैट्समैन को मुश्किल से 2-4 कर देते हैं अपने स्पेल की तो आप दुनिया समेट सकते हैं स्पेल में। लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा आगाज़ किया बिलावल इकबाल ने। तो गेंद अंदर आया, ठीक इनसाइड एज लगा, 1 रन सलमान अली आगा को मिला। और अकील वो जो कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ एंगल्स, तो जितनी लेंथ ये पीछे होगी ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा और बीट तो बैट्समैन ज़रूर हो जाएगा लेकिन बल्ले के दूर से निकल जाएगी और वही बॉल अगर आगे से मूव हुआ तो वो एंगल इतना छोटा बनेगा कि शायद बल्ले के किनारे को छूती हुई निकल जाए। शायद यही की है इस विकेट पर। तीन विकेट्स मिली हैं बिलावल इकबाल के लिए और दूसरी तरफ जिस अंदाज की उन्होंने शुरुआत हासिल की है, ख़ास तौर पर राइट हैंडर के ख़िलाफ़ वो हौसला हासिल करेंगे। उमर सद्दीक इनिंग्स के आगाज़ के लिए आए थे, अब तक क्रीज पर मौजूद हैं, सेट नज़र आते हैं। तो अब तक नतीजे हमें बड़े कम देखने को मिले हैं। आपने लाहौर के मैचेस शाह फैसल कवर किए, कुछ इंटेंट की बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही थी या फिर पिच में वो कार्ड मौजूद नहीं थी जो कि इतनी विकेट से बाब आती जो 4 दिन में नतीजा दे। इसमें तो कोई शक नहीं कि पहले 4 राउंड्स में तो पिच में बिल्कुल कोई ख़ास मदद मौजूद नहीं थी, बल्कि कहना चाहिए पहले 3 मैचेस में, लेकिन इंटेंट की कमी भी बहुत नज़र आई। बहुत ही कप्तानों ने दिफाई हिकमत अमली का सहारा लिया। ये अच्छा तरीका है खेलने का, यहाँ पर सॉफ्ट हैंड बिल्कुल गेंद को अपने पास आने दिया। जो पिंक बॉल मैच था चौथे राउंड में कज़ाफ़ी स्टेडियम में और जो 5वें राउंड में जो विकेट थी, कप्तानों की हिकमत अमली और कोचिस की जो थिंक टैंक है उनका काफ़ी दिफाई रहा। नतीजे की तरफ जाने की उन्होंने खुद भी कोशिश नहीं की। जी हाँ, 5वां राउंड जिस तरह से बता रहे हैं शाह फैसल, उसमें विकेट्स की तादाद बड़ी दिखाई दी है और नतीजा को के से पहले आया, लेकिन कम से कम आपको चीज़ें इन एक्शन होती हुई नज़र आई हैं। और ये क्योंकि पिछला पूरा सीज़न कराची के मैदानों में खेला गया था जहाँ पर हर ग्राउंड की अपनी कंडीशन ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उनको अपने तमाम एलिमेंट्स को टेस्ट करने का मौका ज़रूर मिलेगा।
जी बिल्कुल। और इस ग्राफिक के बिल्कुल आखिरी लाइन पर अगर देखें रन्स पर विकेट जो 5वें राउंड में था वो 29 था, और पहले 3 में 42, 57 और 51 था, लेकिन 2 मैचों में कम आया है। और यहाँ पे स्टेट बैंक की जो विकेट है, इससे पहले ही ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये बॉलर्स के लिए एक अच्छा मैच होगा। अच्छा इख्तिताम किया बिलावल ने फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक पर उमर सिद्दीक के 34 पर 2। कराची का गुंजान आबाद इलाका जहां पर ये क्रिकेट की बहार आई है। 3 स्टेडियम्स में एक साथ मुकाबले जारी। समंदर के किनारे वाक़ मौजूद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके साथ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बज़ाहिर 8-10 किलोमीटर दूरी पे वाक़ UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। इसके साथ ये नाज़माबाद की पहाड़ियों का सिलसिला जो कि पहले वीरान हुआ करता था लेकिन अब आबादी से भरपूर है। अच्छा पेस और कैरी। सलमान अली आगा कुछ वक्त अब गुजार लिया है विकेट पर, उनके लिए अब ये आसान होता जाएगा। और अगर आप उन्हें अगले कदम पर ज़्यादा टेस्ट नहीं करेंगे तो जिस सलाहियत के वो खिलाड़ी हैं वो यकीनन लंबी इनिंग्स खेलने की अहलियत रखते हैं। शफैसल, आपके होने का हम फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपका कोचिंग में भी बड़ा तजर्बा है, अब तो वो हाउस होल्ड नाम बनते जा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में भी। लेकिन ये जो स्टांस है ये कोई आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस की सूरत में होना चाहिए? बात करते हैं। या फिर हर बैट्समैन को खुद जो सूट करता है वो उस लिहाज से आ सकता है, क्योंकि हमने कामरान गुलाम जैसे बैट्समैन को देखा है जो कि टेस्ट स्क्वाड में मुंतखब भी हुए हैं, रन्स उन्होंने बेशुमार किए लेकिन उनका कुछ और स्टाइल का है। ये कॉपी बुक स्टाइल में सलमान अली आगा देखते हुए आते हैं। तो एज अ कोच आपको क्या बताया जाता है कि आप बैट्समैन को मजबूर करें कि वो एक प्रॉपर कॉपी बुक स्टाइल में आए अपने स्टांस की सूरत में, या जो उसको सूट करे? नहीं, जो स्टांस, अगर स्टांस की हद तक बात है तो जो स्टांस आपको सूट करता है, जिस पे आप मोस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं, वो आप रखें। जहाँ तक ग्रिप की बात है उसमें और डिटेल आ जाती है फिर जिस पोजीशन पर आप फिनिश करते हैं। जब आप बॉल को खेल रहे हैं उस वक्त आपकी पोजीशन ज़्यादा अहमियत की हामिल है कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आपका सर बॉल के ऊपर होना चाहिए, नज़रों के बिल्कुल नीचे खेलना चाहिए। जिस तरह सलमान अली आगा शेडो अपना डिफेंस कर रहे थे, बिल्कुल बल्ला उनकी बॉडी के नज़दीक है, और इस चीज़ की वो प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि इस विकेट पे वो ज़रा सा भी अगर आगे बल्ला निकालेंगे तो एज कैरी भी होगा, और यहाँ से अगर उनका एज लग भी गया तो वो कैरी नहीं होगा। तो वो चीज़, वो पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टांस तो अगर हर बैटर अपनी सहूलत और अपनी आसानी के मुताबिक जो उसको बेस्ट लगे वो ज़्यादा बेहतर है। एक ज़माने में ये काफ़ी मिथ थी कि कोशिश की जाती थी, या जो अनऑर्थोडॉक्स स्टांस के प्लेयर्स होते थे उन्हें ट्रायल्स में या लोकल लेवल पे जो कोचेज़ हैं वो उनको काफ़ी जल्दी ही रिफ्यूज़ कर दिया करते थे, लेकिन वो ट्रेंड अब चेंज हो गया। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बड़े ये दिलचस्प और समझाने वाले अंदाज में बताया एज टिपिकल कोच। दूसरी तरफ सलमान अली आगा बड़े देखने में भले मालूम होते हैं, ड्राइव बड़ा अच्छा करते हैं, और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अच्छा सीज़न गुजार के आए हैं श्रीलंका से, और इनके लिए इनफरादी तौर पर बड़ा अच्छा मौका है कि वो रन्स मेटें। कंडीशन चैलेंजिंग ज़रूर हैं लेकिन मौके भी रन्स बनाने के लिए। नेक्स्ट साइड की जानिब ड्रिफ्ट की, अंपायर का इशारा देखना होगा, लेकिन शायद 4 रन मिल जाए यहाँ पर। सदर्न पंजाब लेगी ये 4 रन, और बल्ले का किनारा लगती हुई गई थी तो सलमान अली आगा ने 4 रन हासिल किए। तो थोड़ी सी लाइन में चूक गए अपने मोहम्मद अली, और पूरा फायदा उठाया सलमान ने। जी हाँ, और इसका फ़ायदा पहले चौके की सूरत में मिला। सलमान अली आगा जो कि ऐसे तोहफे के लिए तैयार मौजूद थे, अच्छी लाइन इससे पहले बरकरार रखी हुई थी, लेकिन इस मरतबा डाउन द लेग साइड गए और फ़ौरन से ये कीमती रन चुरा लिए हैं सलमान ने, जो कि इनके लिए कॉन्फिडेंस में और उसके साथ साथ ऑब्वियसली स्कोर्स में मुख्तलिफ कंडीशंस में ये बैटिंग करने के लिए आए हैं कराची में।
इनको आमद के बाद ज़्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन सेटल होने में हर लिहाज से रन्स मदद देंगे। डॉट बॉल 38 पर 2। सलमान अली आगा के लिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड रहा है। 7 इनिंग्सों में से 2 सेंचुरियां और 1 निस सेंचुरी उन्होंने बना रखी है इस मैदान पर, और अभी भी मुश्किल हालात में 18 रन बना चुके हैं। 34 गेंदों का सामना किया, वक्त गुजारा है विकेट पर। इस चीज़ की काफ़ी अहमियत होगी, और अगर ये मुश्किल वक्त निकाल गए तो बाद में कैपिटलाइज कर सकते हैं सलमान अली आगा। बिलावल ने बड़ा शानदार आगाज हासिल किया था पिछले ओवर में। तेज़ गेंद करने के लिए भागते हुए आते हैं और पेस जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो वकास मकसूद को उन्होंने प्लेस किया है, बड़े शूज़ थे फिल करने को, लेकिन अच्छा आगाज हासिल किया। मरतबा फिर लेंथ में चूके 2 रन मिलेंगे। मोहम्मद अली हैं फील्डर। बिलावल इकबाल बॉल तो आगे कर रहे हैं, उनकी लेंथ अच्छी है, लेकिन लाइन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ओवर द विकेट एक मरतबा फिर उमर सदीक को गेंद करने के लिए आए थे। सलमान को उन्होंने सरप्राइज ज़रूर किया था, लेकिन अपने आप को एडजस्ट करने में वो ज़्यादा कामयाब दिखाई नहीं दिए। दूसरी तरफ उमर सदीक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की मिसाल बने हुए। जो आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले, क्योंकि कुकाबुरा बॉल से मैच हो रहा है। कुकाबुरा जो है वो ज़्यादा देर उसकी सीम प्रोमिनेंट रहती नहीं, पहले ही इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन इन कंडीशंस में कहा यही जाता है कि वो 15-16 ओवर तक के बाद उसकी सीम बिल्कुल धंस जाती है। तो ये अब देखना होगा कि इससे कैसे एडजस्ट करते हैं सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स। ये तो बिल्कुल ही ख़राब गेंद थी, काफ़ी बाहर थी। क्योंकि पिछले मैच में भी बात हो रही थी, जब सुहेल खान से बात की तो उन्होंने यही कहा कि इस तरह की पिच जब मिल जाए बॉलर्स को 4 या 5 मैचेस के बाद, जब वो मुसलसल एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे खेल रहे हों, तो लेंथ एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है। और यही हुआ था सिंध की टीम के साथ भी। पहले नई बॉल को उन्होंने ज़ाया किया पिछले मैच में, लेकिन जब दूसरी नई गेंद मिली तो उन्होंने 6 खिलाड़ियों को एक सेशन के अंदर आउट कर दिया। बाज़ाहिर देखने में ये सिंपल लगती है ये एडजस्टमेंट, लेकिन काफ़ी ये मुश्किल काम है, क्योंकि 2 या 3 यार्ड गेंद को फुलर फेंकना उन विकेटों की बनिस्बत जहां आपको रन रोकने के लिए डिफेंसिव बॉलिंग थी, बैक ऑफ अ लेंथ करनी पड़ती थी बॉल, वहां की बनिस्बत अब यहां आपको वो लेंथ आगे करनी है। और लग रहा है कि सिवाय वकास मकसूद के लेंथ को अचीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब के बाकी दोनों बॉलर्स। अच्छी गेंद, लेकिन इस दौरान और कोचेस का किरदार जारी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो कितनी क्विकली अपने खिलाड़ियों को एडजस्ट करने के लिए उतरते हैं। जैसे टाइम मिलेगा मेरे लेजी में बात करिए, ये देखिए, ये लेंथ ऐसी थी जिसने बैट्समैन को फ्रंट फुट पर जरूर मजबूर किया, लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर ही रहकर खेल गए। यहीं से तकरीबन 1 या 2 फुट फुलर जब उन्हें ड्राइव खेलने पर मजबूर करेंगे तो तभी जो है एज लगेगा। ये लेंथ अच्छी थी, लेकिन लाइन बहुत बाहर थी, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए। उमर सिद्दीक 40 पर 2। अकील भाई बोले।
पिछले आधे घंटे में कुछ ऐसा लगा है कि शायद विकेट में वो जो मदद मौजूद थी पहले घंटे में थोड़ी सी उसमें कमी आई है, लेकिन जो लेंथ है जिसके बारे में मुसलसल बात कर रहे हैं उसमें भी सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स डिसअपॉइंटेड होंगे। कंसिस्टेंटली वो ट्राइंग और टीजिंग जो लेंथ होती है उसको हासिल नहीं कर पाए। मोहम्मद अली 3 स्लिप्स 2 गली के साथ। एक मरतबा फिर पीछे गिरा हुआ बॉल था और बाहर भी था। ऐसी बॉलिंग जो है वो बैट्समैन को तंग नहीं करेगी। शाह फैसल नौजवान कई हमारे जो कि क्रिकेट में मेरे जैसे एंटर होना चाहते हैं वो देख रहे होते हैं, तो एक बैटर के जहन में क्या चल रहा होता है जब गेंद हो रही होती है? वो स्लिप्स को देख रहा होता है तो पहले से जज कर रहा होता है कि क्या गेंद आएगी, या फिर वो ऑफ द हैंड ज़्यादा आमतौर पर रीड करने की कोशिश करता है, खासतौर पर इस प्री में फर्स्ट क्लास लेवल में? यहाँ से फास्ट बॉलर्स के तो हाथ में जो बॉल जब एज अ बैटर जनरल प्रिंसिपल तो ये कि आप बॉल पे नज़र रखें। जब इस वक्त अली के हाथ में जो बॉल नज़र आ रहा है वो बैट्समैन की नज़र होनी चाहिए उस पर। और इस कंडीशंस में जो कहा जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप दोनों स्विंग्स जो है वो या हाथ से या ऑफ द पिच वो रीड कर सकें, क्योंकि नए बॉल तो समटाइम्स बॉलर्स को भी नहीं पता होता कि वो किस साइड पे निकल जाए। तो एक जो प्रिंसिपल है, रूल ऑफ थंब जो है वो ये है कि हमेशा बैटर जो है वो इन स्विंग को खेलेंगे। तो अगर बॉल अंदर आ गया तो उनके बल्ले को टकराएगा, और अगर वो बाहर निकल गया तो एज को बीट करता हुआ निकल जाएगा। लेकिन उसमें भी की है कि आप बैट बॉडी से बाहर नहीं निकालना और सॉफ्ट हैंड से खेलना, और टेक्निकली उसको स्लैंग में कहते हैं एक स्विंग के लिए खेलना है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा बैटर को परेशानी होगी वो इस चीज़ से होगी कि आगे ललचाई हुई लेंथ पे उन्हें बॉल मिलें, क्योंकि ड्राइव, नेचुरल ड्राइव रोकना जो है वो बहुत मुश्किल है। बैक ऑफ अ लेंथ तो आप सॉफ्ट हैंड से खेल सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि बिल्कुल बॉल की पिच तक आप पहुंच जाएंगे, वहाँ पे ड्राइव को रोकना मुश्किल होता है, और ऐसी विकेट्स पे वहीं से एजेस निकलते हैं। जो हमने रन्स भी देखे हैं, बहुत कम रन्स जो हैं वो सामने बने, ज़्यादातर रन स्क्वायर बने, जिसका मतलब ये है कि सेंट्रल पंजाब ने बॉलिंग थोड़ी सी पीछे की है। ये फ्रंट फुट पे खेलने पर मजबूर किया, लेकिन एज जो है बिल्कुल ऑल अलोंग द ग्राउंड निकल गया। और जब मैं कहता हूँ कि पीछे बॉलिंग की है, इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग की है, लेकिन बैक ऑफ अ लेंथ बॉल किया है, जो कि इस पिच पे इवन जो लेंथ बॉल है वो भी बैटर उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ज़्यादा ड्राइव्स नहीं देखें, और कवर का फील्डर अगर एक गैप छोड़ के बैट्समैन को दिखाएं और आगे आउट स्विंग बॉलिंग हो तो रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड है। आपको बैट्समैन को भी कुछ दिखाना होगा, और उसी में गलती की गुंजाइश होती है। बिल्कुल, सदर पंजाब की पोजीशन मुस्तहकम है पॉइंट्स टेबल पे भी, और टॉस ना होने के बाद पहले बैटिंग करते हुए भी उन्होंने अपने इस नाव को संभाला है। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की जाने पाई है, लेकिन इनसाइड एज पर ज़ाहिद मौजूद था। ये तमाम तर अपील और उस पर दबाव डालने के बावजूद अंपायर को मुतासिर करने में कामयाब ना हो सके, लेकिन अच्छा स्विंग हासिल किया। बिल्कुल अच्छा पिक किया अकील आपने। 2 आवाज़ें ज़रूर आई थी, और बॉल अंदर आया तेज़ी के साथ, और इनसाइड एज लगता हुआ, लेकिन बाउंस इस पिच पे ज़्यादा है। इस लेंथ पे हमने देखा है कि अगर नी रोल पे लगेगा बॉल, इस लेंथ पे पिच हुआ बॉल, ज़्यादा इम्कान है कि वो साइड से निकल जाए। सलमान अली आगा अपनी क्रीज से बाहर रहकर भी खेल रहे हैं, तो काफ़ी जो है वो ऑप्शंस उनके हक में जा रहे थे। एक और वेस्टेड डिलीवरी, पेस, बाउंस एंड कैरी, लेकिन बैट्समैन को अच्छा देखने का मौका मिला इस बॉल को।
42 पे 2। Runs, one of it. It's been a steady partnership by these two, Umar and Salman Ali Agha, and that's what we expect from somebody of this skill set and this experience. Both Salman and Umar Siddiq. Umar being the captain has played a responsible inning. 45 deliveries for him, 40 deliveries for Salman Ali Agha. Waqas Maqsood on your screen getting 2 wickets. Amir Saeed alongside me again. Southern Punjab, we can say that they've brought themselves out of that hole they were in early on. That's one view of watching the game. Yes, definitely they have done well, this partnership, especially Umar Siddiq, who's been very impressive. Very compact, has played very close to the body. And he has played the role of a conventional opener, which is to, of course, see off the new ball first and then maybe later on capitalize on that and score as many runs as possible for your team. Absolutely. I think if you spend time on a pitch like this, maybe as you mentioned earlier, that after lunch session, maybe situation will get easier and runs will come, because on a pitch like this, ball will travel. But one concern I do have over here is the outfield. It's towards the thicker side. The ball is not traveling. We have seen quite a few times. It's a good run, very good running. Just realizing the fielder and taking a run. Nisar Ahmed, the fast bowler, standing on point position. Good presence of mind. Yes, definitely. Also, it was on his throwing arm, actually. It was on the right, but early call, as we were talking about earlier, that if you hesitate, that is where you get into trouble. But an early call and an early takeoff, singles can be picked easily. Yeah, that has been the quality of this partnership. They've taken singles, they've rotated the strike. Every now and then they've got the opportunity of taking 2s, because the outfield is on a thicker side, so you got to run. Zafar Gohar having a discussion with the coaching panel. What would that be? Early on the first day, deciding to bowl first, everything going in your favor. Intense discussion. Zafar Gaur most probably not very happy with the lengths the bowlers are bowling. They have been consistently on that good length spot, but most probably that good length is not that good on this track. It just becomes back of a length. You need to just bowl a bit further to get that swing and to get the batsman to, come into that drive. And that is where the edges are. I like the point that Shah Faisal earlier made while having an interview with Sohail Khan. We'll come back to do that after this. 19 overs gone, 44 for 2 Southern Punjab. The point Shah Faisal earlier made about the lengths
as he had a discussion with Sohail Khan that you play on a flat deck, slow pitches, the length is different, and suddenly after 5 games you see a pitch like this. It's not that easy for a bowler to adjust quickly. That's why Waqas Maqsood has been the only experienced bowler getting 2 wickets. Nisar and other bowlers have struggled to get that line right, the length right rather. Absolutely right. Experience is the key here. Once you've played a few seasons. Wow, wonderful. Muhammad Ali has bowled a brilliant delivery here. Fresh from a 9-wicket haul in a match, yes. So he's bowling into good rhythm. And length again. Little fuller maybe. Yes, a bit fuller would have been a bit better. Of course, most probably a fuller length might have taken the edge there. But again, that angle with which the ball was coming in, Salman had to play at that one, and it left him in the end. So yeah, good delivery in the end. You got to give the credit to these batters, Salman Ali Agha and Umar Siddiq. I think they've negotiated with this time very nicely. They've left the ball, they played with soft hands, they've rotated the strike. They've done everything that is needed on a pitch like this. So that's experience, that's skill for you. Yes, definitely. They have batted really well. A very, very good partnership. As we were saying earlier, that it is most probably the most important partnership. Runs available. Can we see another boundary? No, no, no. The thick outfield restricting the batters to just 3 runs. But that doesn't matter as long as runs keep coming. 47 now, Southern Punjab, 2 wickets down. This great partnership going along between the 2 most senior batters of Southern Punjab. Yes, and you know that previous delivery again a bit short of length. Just a defensive stroke really played, but timed well, so we got the runs. But they've got to try and bring those batters on that front foot. Again an edge, not comfortable but still surviving. Umar Siddiq, this is where he's so good at the technique. As you said, play the ball late, close to the body. That's the right way to go. This is not a Gaddafi Stadium pitch where you can hang on to bat and might get lucky, but not on a pitch like this. You got to be technically very correct. Absolutely right. And as we were talking about the bowlers earlier, the experience you were talking about, Ali Waqas, and he has shown it today, that once you've played a few seasons, you do know that how to adjust to that length, and only experience can teach you that. You know, once maybe you're a good fast bowler, you've got the pace, you've got the movement and everything, but only after playing a few seasons at first class level, only then you learn that how to vary that length on different pitches. Different conditions. I definitely agree with you on this. Muhammad Ali, for example, coming all the way from Iqbal Stadium, Faisalabad, where he took 6 wickets, 9 in the match, 6 in 1 inning. Coming here, these are different conditions. These are much helpful conditions for him. Again, a miss. This has been the story of the first days still. 20 overs gone, 47 for 2 Southern Punjab. Umar Siddiq for me has been really, really impressive. Here's the scorecard. Tayyib Tahir, the first to go, scored 5. Imran Rafiq, again a left-hander, who's caught in the slips for 2. And then this partnership between Umar Siddiq and Salman Ali Agha, who's not on 24, and Umar Siddiq 13. He's got plenty of batting left, so Azam Khan, the dash is still to come. Yusuf Babar is not going to come at 11. He's a batter. Should move up to the number 5 position maybe.
Amir Yamin can bat. Imran Randhawa can bat. So they got plenty of batters behind. As Bilawal Iqbal bowls driven nicely but straight to the fielder. Salman Ali Agha showing that he is in form. Fresh from 100 in Sri Lanka. Just continuing his form here. 103 runs he made. He's got 941 runs last season at the average of 58.81. 206 50s in the last season. A very talented player from Lahore. Hurried on to him. Played it late also. Sensible batting. Good all-round cricket. That's what you want to see. Good competition between two highly skillful teams. And the pitch is supporting the bowlers. That's what you want to see. Because they say it's a batter's game, but on a pitch like this, when the support is there, it's an even contest between bat and ball. You just got to be patient. Well, if you look on paper, this team looks very, very strong. Southern Punjab, and they've got a good mix of experience and youth, and they've got those bowlers who can get their wickets. They've got those batters who've been in form and of course can score, as we saw Azam Khan's name in the team. He can be a difference at times, the way he plays, especially on tracks like these. Nicely driven straight to the man. Talking about Southern Punjab, they are the only team in this competition so far who won the game against Northern in Multan. They've got a very good bowling side. I think if they had bowled first on a pitch like this, things would have been different. We saw Ziaul Haq, Amir Yamin, Mohammad Ilyas, Imran Randhawa. Their natural length is up to the batter. If you look at all these bowlers, so they would have liked it. They've got a very good coach in form of Azaz Chima. Very wonderful man, a wonderful character, a great bowler he was of his time. Irfan Fazal, although he's here as a fielding coach, but he's a test fast bowler, also known as Babu Bhai in Lahore. Oh, inside edge, lucky that didn't go straight to the wickets. Yes, you mentioned Irfan Fazil, quite quick in his days. That one played away from the body, inside edge, onto the pads. Lucky that it didn't go through that gap. Technique hammer again. It's very important. You got to be spot on with every delivery you face. This is the cricket of highest quality in Pakistan. You cannot let it go. You cannot let go of this opportunity. That's better. Very good leave by Salman Ali Agha. That will end the over of Bilawal Iqbal. Been talking about Umar Siddique has been spot on with his technique. Not even a single time has he just hung his bat outside that off stump, played within his body. Soft hands, and that is what saved him on that occasion on the previous delivery. It did not, the edge did not reach the slip cordon when you play with soft hands. Seems like a player who knows his limitations. Playing it soft, close to the body as just mentioned. Not flashy, not overly aggressive. He's got his strokes, there's no doubt about it. I know him, I've followed him since his childhood. He can hit big, but he's got a very good head on his shoulders too. Very good prospect. The length again. Not quite getting it right. Mohammad Ali, after the 9-wicket haul in the last game, you would expect him to be in better rhythm and better flow. But again, as we've been talking about, on a pitch like this, you might get excited sometimes. You think maybe bowling short pitch delivery will scare the batter. But these batters, they're different. They're a different breed.
10 minutes away from the lunch session, from the end of first session. Ahmed Shahzad, Hussain Talat and Zafar Gohar, the left arm leg spinner, very experienced players. Most probably carrying some niggles or something. Might have been rested. But I still like their bench strength, Emmer. They've included Imran Dogar. He was there in the last game also, scored lots of runs for second 11. Ali Zaryab also coming from second 11. Good run, very good run. Saad Naseem losing his place also. He's been a prolific performer for Central Punjab, but not quite there in this season. Saad Naseem, a very good all-round cricketer, not included. Dropped right there, the opportunity. If you're good enough, go out there, score runs, make your case stronger in front of the selectors. Very rightly said. Of course, these are the pitches where selectors look at batsmen in difficult situations. How do they cope with it? And that is how it should be, actually. You know, batsmen piling up runs on placid wickets. Edged, oh, again going through. Whoa, luck is on Umar Siddique's side because of the technique. Again, those soft hands helping him survive. That brings 50 for Southern Punjab. It has been a hard effort. Have a look at this. Squared him. Yes, squared him up. But once again, those soft hands saved him. The ball did not carry. And it was also in the gap between that fourth slip, wideish fourth slip, and the third one. So yes, a bit of luck is needed on a track like this. But again, you cannot only rely on luck. You've got to get that technique right. Skill first. End of another over by Bilawal Iqbal. 23 gone, 52 for 2 Southern Punjab. Hussain Talat, as you mentioned, has been the part of State Bank. They've been, sorry, Rizwan Hussain. This ground has not been a high-scoring game. I can just think of 4 games. Those lowest totals here at State Bank ground: 65, 68. A team was bowled out on 85, and then 95. So this ground has it in him for the teams to get out inside a 100-run total. State Bank ground at the moment 52 for 2 Southern Punjab. Oh, that's nipped in by Mohammad Ali. He's bowled well without luck. What is he signaling? No idea whatsoever. Yes, at times it does happen when the ball is darting around. You're not sure which way it's going to go. As we saw in the previous over, he bowled the same delivery which went away. And Salman was beaten on that one, and this one held its line and hit him on the pad. So it's not easy, of course, to pick the side which is going to swing. It's always difficult when a seam bowler is operating, like Mohammad Ali is, who hits the seam, because you never know which side it's going. One ball will come into you, one will leave you, and that's why Agha Salman was surprised and shocked rather. How do I play this? What should I do? Coming from Sri Lanka on a slow turning pitches, straight to State Bank on a grassy pitch. Good learning. Just 4 minutes away from lunch. They've done the hard part. Just a little bit more. Maybe this over. It's very important to capitalize on the next session.
from the batter's point of view, of course, as you said, they have done the hard work. But if just a little loss in concentration, you know, on this track at any moment can get you in trouble. So it's very important to capitalize on the hard work they've done so far. That's why I like this new structure where the best plays against the best. There is no room of survival if you're not technically correct, if you're not good enough, because they will get you out if you're not technically correct. These are the best players available in Pakistan circuit, playing in these 6 teams. So you got to be good enough to be in that side and score runs. Definitely no time to relax. And that is what first class cricket is all about. That is what first class cricket should be all about. Absolutely. That's why I love this new structure. Because every delivery get tested. There are no easy times whatsoever. And a pitch like this, you must know how to score runs. You must adapt to the situation, the conditions pretty quickly. And that's what they've done, this partnership especially. Yes, Test cricket is the next step, isn't it? So you've got to perform in all sorts of conditions against all bowlers and against all qualities of bowlers. So no excuses from here upwards. And for a longer period of time. It's just not just one session you play well. Again, using his feet in the gap, 1 run. Yes, just one available here. So 24 gone. We'll have to wait for umpires. No, they're gonna go with 1 more over, because I thought it's almost time for the lunch, but deciding that 1 over we can sneak in. Remember, lots of overs were wasted in Lahore because of the bad light, smog. Probably that might not be the case here. We will see complete 90 overs in this day, and we might be able to see some results here at State Bank, which the history says the results have come, because over there in Punjab only 1 result came, and that of Southern Punjab winning against Northern. And we'll be coming from there, Emmer, in your city, looking for some results. Well, we are hoping to oblige you. That's generous of you, kind of you, if you can give us some results early on. Bilawal Iqbal will continue. Oh, that nipped in again. Testing times. Definitely testing times for Agha. Because when the ball is seeming like this, it's really impossible. Have a look at this. Oh, wow. Yes, just came back enough to take that glove. Lucky that it didn't scoop or went to hand. So again, as we've been talking about before, that a bit of luck is needed on this track. And in the last 7 games in this ground, 5 have results. So we're really looking forward for a result in this game. If you're not going to get a result on this pitch, wonder where you will. Again, play and a miss. See, probably the bat coming down because of that seam movement. He's covering that for the delivery that comes in, because he's not sure. In our times, even the limited over cricket was played with a red ball. Usually, only the night games were played with white ball. So yes, the times have changed definitely, and a lot of more runs, a lot more aggression. Should be the last ball before lunch. Negotiated wonderfully by Salman Ali Agha, as we see umpires coming together and announcing it's lunchtime here at State Bank Sports Complex, Karachi. This is the 17th match between
Southern Punjab and Central Punjab. 53 runs have been scored by Southern Punjab after losing 2 wickets in 25 overs. Tayyib Tahir, the man gone. Imran Rafiq also lost his wicket. It's all about Umar Siddique and Salman Ali Agha at the moment, who've done a wonderful job for their team. Hung in there. It was difficult times to bat on, but they've done some great, she's showed some great skills. Central Punjab must feel unlucky. They should have gotten more wickets than the 2, because they were the visiting side, deciding to bowl first on a pitch that looked like a very dangerous for batting, but they've just taken 2 wickets. Yes, definitely a break would help the bowlers and the fielding side as well. They will definitely rethink their strategy, their lengths. I'm sure they will be looking at the coaches. They will be pointing out that what are better lengths to be bowled in the next session here. Just 53 runs in this session in 25 overs. You don't blame the batters, because it's not about the runs, it's about the survival. Have a look at this batting card for Southern Punjab. Tayyib Tahir lost his wicket early on, caught by Saif Badr off Waqas Maqsood, scored 5 runs only. Imran Rafiq also, to the same bowler, Waqas Maqsood, could only manage 2 runs. And it's been this partnership between Salman Ali Agha and Umar Siddique, still there, still not out, still struggling, still making the most of it, because they know that they've done the hard part. They need to carry on. Here's the bowling so far. The most successful bowler and the only successful bowler, Waqas Maqsood, got 2 wickets for 19 in his 7. Nisar Ahmed, very good with his lengths and lines. 6 overs 9 runs. Muhammad Ali 6 over 13 runs, and Bilawal Iqbal 6 overs 10 runs with 2 maidens. No spin yet. We haven't seen the introduction of spin, but of course on this track that was expected. So what we'll do is we'll take a break. We'll see you in about a half hour's time.
A very warm welcome back to the State Bank Cricket Complex here in Karachi. We are here with the post-lunch session in a very, very exciting morning session on a green top pitch. And this is how things looked after the first session. Southern Punjab having been put in after uncontested toss, 53 for 2. Tayyib Tahir lost his wicket. Waqas Maqsood found the edge. Imran Rafiq went early as well. Waqas Maqsood doing the double trick for his side. 25 overs were bowled in the session. Two wickets for Waqas Maqsood. Very economical. The other two pacers, the three pacers rather, but they would be ruining the fact they didn't put the ball in the right areas more often to get more rewards. There's the two wickets that fell in the morning session. Were the deliveries that Central Punjab needed to bowl more often. Found the edge on the front foot. Tayyib Tahir, the informed man, found the edge and Saif Badr pouched him very, very neatly in the third slip. And the second man to go was Imran Rafiq, who also found the edge, and wicketkeeper Junaid took his catch. That's Tayyib Tahir once again, a nice catch, diving forward, never easy, but Saif Badr got to it. And this one was another peach from Waqas Maqsood. Junaid Ali did the rest. Good time to welcome along in the com box Akil Summer. A very good afternoon, Akil. Thank you very much, Shah Faisal, and I hope you had a great lunch in Karachi. And I would advise you to be careful as long as you are having those spicy things. But we hope for the sake of this game that these teams have a good lunch and they are now ready to roll their things out here in State Bank of Pakistan Sports Complex. And we would also continue to talk about the other two games going on, because this is exactly almost the middle part of the points table and the tournament itself. The other game going on at UBL Sports Complex, where Balochistan are up against Sindh. There Balochistan have scored 58 for the loss of 3 wickets. Over there, Iyaz Tasawwur and Imran Butt are at the crease. And the other game which is going on in National Bank of Pakistan Sports Complex, which is just next to the coastal part of the city, there Khyber Pakhtunkhwa and Northern Cricket Association are locking horns. Over there, Northern are 61 for 4. So by that standard, I think the things are pretty well for Southern Punjab here in SBP Sports Complex. Shah Faisal. Definitely, and credit be given to the two batters, because after the fall of 2 early wickets, 15 for 2 they steadied the ship. Salman Ali Agha and Umar Siddiq took their time, all in readiness. 3 slips and a gully. And it'll be interesting to see Akil, because of another 40 minutes of sun during the lunch break on the surface. We'll be seeing that how the character of this pitch will change throughout the afternoon session. Yes, exactly. They should be keeping their heads high as far as this Southern Punjab team is concerned. Only losing 2 wickets, but still the legs are fresh after having lunch, and it is still not too hot over there. By comparing it to the weather in Punjab, it is definitely 3 to 4 degrees hotter here in Karachi. But still, one would assume that coming fresh out of their dressing room, they would try to create some magic, because the pitch which you have described before the start of the game would hold, and one would assume that it will continue to get better and better as the game progresses here in SBP. Absolutely. Nisar's figures of none for 9 into his 7th over, they're slightly deceptive, because more often than not he hasn't been able to make the batsman play, and the batters were prepared to leave the ball because of the green nature of the pitch and the moisture. And looks like he started again slightly short of length. Just round the wicket angle will allow him to angle the ball in to the left-hander and make him play more. And if he could straighten one down the line, probably the slips will be in business. Yes, one would say that Umar Siddiq has been leading from the front. The going was tough in the earlier part of the day, but he has kept his head down and now is seen off that first 2-hour session, and now in a comfortable position to start rolling the ball and get some runs going
in some good condition. Once again, shot of a length, allowing the batter to play off the back foot. Umar Sadiq punching it. Even then, the ball was quite short, but he's not prepared to give it the full follow-through because he still wants to watch that ball all the way onto the bat. Good defensive batting there from this pair. And talking about that lunch, Akhil, it was pretty good and feels better now. But yeah, the weather is just about perfect. You say it's a few degrees warmer than Punjab, but the visibility is a lot better. And it looks absolutely refreshing to see all these players in their whites, very neat and tidy with the red ball. Just this is for the purist. Another single into the gap. Strike rotation is very important. Left hand, right hand combination. This has been good going by the pair. Yes, he has shown some good temperament. Salman Ali Agha landing here right from the turning pitches over there in Sri Lanka and almost continued with the same momentum with which he has been scoring some good runs over there in the island nation. Still 3 slips in the action, waiting and lurking for that edge. That's better, but once again, soft hands, beautifully played. That's the name of the game here. They've looked in complete control. First over after lunch, done and dusted, 56 for 2. Shah Faisal, we have been talking about the conditions in Karachi. Otherwise, in the normal days, the season comes to Karachi towards the business end of the season when the things start getting foggy in the rest of the country, and over here there is bright sunshine and you can have longer hours of play. But the last season was completely played over here in the coastal city, and now it is going to be a huge substantial part. Once again, it would be played over here. So another name of the game in this kind of format, which we talk about, that they have to learn the tricks of the trade when you are playing in the first class cricket. Another part is definitely that you have to adjust in different conditions and different kind of pitches and also those weathers which are coming your way. Waqas Maqsood in the meantime is coming from his own end. 3 slips, 2 gully to start with. Starts off one down the leg side. Yeah, Akhil, you're right in saying, because they have to be very, very adaptable to different conditions. If you aim to make it big, then you definitely have to have the character of adaptability. And this is what Waqas Maqsood adapted to, a fuller length, and the reward was there for him. Consistently nagging away, and he got the wickets. And probably looking on to this session as well, you still cannot run through the batters here. So it's better to build a plan and be patient. Once again, it'll be hard for the bowlers to blast any batting lineup here. They just have to consistently put the balls in the right areas, and only then they can have a few misses and a few edges as well. But if you bowl 3 or 4 short pitch deliveries or back of a length deliveries, allow the batsman to let them go easily, probably you won't find those edges regularly. Yes, he has been the workhorse for Central Punjab. Waqas Maqsood belongs to Faisalabad, which has been the textile-oriented city of Pakistan. But now, lately, it has been producing cricketer after cricketer. And also, specifically talking about Waqas Maqsood, the team is now looking towards him. He has been the mainstay of their bowling in the absence of Hassan Ali. And not only that, he has to play his role as far as his own bowling is concerned, but now with all that wealth of experience, he will have to involve the rest of the team with himself. And I think he has been playing his role pretty well as far as bowling is concerned. He keeps the things intact. He keep it alive as far as the things are going on in the ground. When the things are going tough,
he would be there and can give you a wicket out of nowhere, which is required in this format of the game. And Akhil, the break might have come at just the right time for Central Punjab, because they would have had a chance to regroup. The coaching unit, Akram Raza, Abdul Razak, Mansoor Amjad, they would have set the bowlers down and talked to them that what was the length required. And like I said, they can always show the wickets as an example. Shot this time, Umar played and missed. He's kicking himself, but that extra zip and carry defeated him. Yes, definitely. He was looking in a bit of doubt, playing in two minds, and in the end decided to go for that driven shot, but hardly missed that outside edge. Once again into the hands of the wicketkeeper. Waqas would be smelling a wicket or two just after the lunch break. Over here, the conditions are still suiting him. He is coming back for his second spell. Got the first two scalps for Central Punjab. Good one to begin after lunch from Waqas Maqsood, 56 for 2. It's a pleasant afternoon in Karachi, and the wind has been started to pick up just after the lunch break. Good time to relax, have a nap, maybe, but not obviously for the batters out there. They would have to keep themselves going, and after spending those huge hours, the onus is now on them to continue with this momentum. Salman Ali Agha has played brilliantly in the first session. He was out there when they were in a bit of trouble, 15 for 2, but since then it's been partnership, contributing 41 runs, and he has been looking good, Salman Ali Agha. Shah Faisal. Very good. And I'm sure we were talking earlier about his stint in Sri Lanka. You might have had the chance to cover some cricket in Sri Lanka. There's great diversity in pitches in Sri Lanka. There's ranked turners, but there also some of them are very seamer friendly. And the footages that we got to see after Pakistan Shaheen's tour to Sri Lanka, it seemed that some of the pitches were very spicy and they had plenty of bounce and carry. So this pitch, Salman Ali Agha probably is coming into a better frame of mind, having already made 100 in Sri Lanka, where because this time of the year it was quite seamer friendly, and he's looked in good order. Talking about the nap, do you think he's napping? Zafar Gohar. Nisar has probed at that length all morning. And one more thing, Akhil, we need to keep an eye on when we went there in the morning. If there's the old-fashioned key, it would have gone through the surface because it had the moisture. But with all that sun, if that moisture evaporates, will the grass still quite fresh, there might be good carry and bounce for the bowlers. That might keep them interested for longer. And the scores which we have been noting from the rest of the stadiums which are coming our way, it is definitely telling you the story that there would be some good results in this part of the tournament. Shot got up on his tiptoes, couldn't find the gap though. Just a single to the total. So yeah, once again a reminder where Balochistan and Sindh are playing against each other not too far from here, hardly 10 kilometers, which is not too much by the standards of Karachi. They are 58 for 3, Balochistan at the lunch break. Look at that replay now. Look at how high he got up on his tiptoes to get on top of the bounce. Good bit of fielding there from Bilawal Iqbal. That bounce that I was talking about is already quite evident in this session with the wicket drying out. Once again, soft hand, good calling, excellent running. This is superb cricket from the pair. Strike rotation really puts the bowlers off when they have to put up with two
batters, left-hand, right-hand combination. The partnership propels to 43. In all the big partnership, they have this ingredient. Running between the wicket, strike rotation doesn't allow the bowlers to settle into one plan against a particular batter. End of a good over once again by Nisar, 58 for 2, Southern Punjab. Okay, quick crossing from the city, Yasha Faisal. We have now got the updated score courtesy of Farhan. They are 77 for 5, Balochistan over there in UBL Sports Complex. And Sindh perhaps are doing finally their part of the damage. Abrar Ahmed is among the wickets. Sohail Khan is also getting good return out of these surfaces. And arguably one would assume that these are going to be the pitches in this part of the tournament over here in this leg, which will these batsmen have to counter. Otherwise, over there in the Punjab part of the tournament, we have noted that the things were quite placid as far as the run scoring were concerned. It was quite straightforward as well. But now it will be some good contest between bat and ball finally. Yeah, definitely. Early signs of that already in the first day of the 6th round. The morning session, plenty of wickets. And here in the morning when we turned up and both the teams turned up, the first look of wickets of the pitch, I mean the bowlers, they were just gleeing with happiness, and the batters, you could see that they were feeling like, here we have to earn our money now. We've had it easy in the first 5 rounds, but here definitely they have to work very hard. And if a batter scores runs here, that would really please him, and it will be a very satisfying performance. Change of angle and a big shout. Umpire Imtiaz had a close look but decided against the bowler. The length was good, clearly defeated the batter. Interesting replay coming up. Well, this is once again the same combination. Waqas Maqsood bringing the ball in to Salman Ali Agha. It happened in the previous session as well, and once again coming round the wicket, almost wide of the crease, creating that angle. And once again could be a borderline decision, but Imtiaz Iqbal, once again, he was the best judge, and according to him, it was going to miss the leg stump. What's your call, Shah Faisal? Great call, Akil, because the wide of the crease he went, created a bigger angle. It definitely would have taken it down. Good decision, umpire. Once again, wide of that crease. Hit him further down. On that occasion, he was walking into the stroke. And they have gone for a leg bye, it may seem, as Salman looks to have hurt himself. No signal. So yeah, he was walking across the stumps, and I think that was the point which was there in the mind of Imtiaz Iqbal. And at one point in time, his leg stump was also exposed, coming once again, widening the crease and creating that angle. I think the point of impact was also outside the off-stump, Shah Faisal. Akil, eagle-eyed, perfectly spotted. That's exactly was the case. And although he was a long way down, and that allowed him to get offside that off-stump, and the impact was outside, probably he ended up hitting his knee with his own bat. We'll have to wait and see. Just over the knee roll, which is less padded, but the knee was bending, so probably it hit him on the bony part. That's why it's hurting him more. But definitely good bowling from Waqas Maqsood. He's creating that angle. Agha Salman, who's been mostly untroubled, was really put under pressure in the last 2 deliveries. That's the experience of Waqas Maqsood. That's why he got the wickets. He's putting the ball in the right areas. Yeah, but he's absolutely disgruntled after these 2 decisions back to back, creating that angle
against Salman Ali Agha. Remember, this also happened in almost at the end of the first hour of play as well, where he hit his toes, and for some long portion of the play he had to create that kind of drama, and ultimately he got that treatment from the physio. And once again we could see that the physio is walking in, and most likely he would like to give some treatment. But this is going to be some kind of a magic and little battle between Salman Ali Agha and Waqas Maqsood. Both, you remember, belong to otherwise central part of the Punjab, but this is good battle between these two. Now, for some relief to Salman Ali Agha in southern Punjab, Umar would be facing the left-arm fast bowler, but he has been bowling his heart out. This is so good to see, and we'll see what are going to be the dividends for the left-arm fast bowler. Yeah, definitely Waqas Maqsood is troubled now. Change of angle for him. See, this is sometimes left-hand, right-hand combinations are so handy. Waqas is once again left arm over the wicket now. Three slips, 4 slips in a gully. Edge and slightly short, is it? It didn't carry. Waqas Maqsood doing it consistently, and it looks like he can take a wicket every ball. Wow. If you have to pick some moment, this over is going to be the highlight of the day by all means. He was walking a few steps down the road and once again played with soft hands and putting the bat downstairs, coming from the upside, and not allowing the fielder to get to the ball, and creating some kind of heavy metal off the surface. Good to see. It swung in the air, nicely knocked down, but the fielding is good as well. Look at this, fantastic cricket here. The battle is really on, like Akil said, and Central Punjab are making sure they don't let Southern Punjab get away. And this is good learning for Ali Zaryab as well, the captain himself, throwing on the ground, not allowing any room whatsoever. No quarter asked, no quarter given, and this is good cricket. Umar Siddique would be facing the final delivery of this full of highlights over. He succeeded in his plan because Waqas had to bowl it short as he was advancing. Sensational over comes to an end. 60 for 2. Well, this SBB Sports Complex is clearly a fresh of breath here in the hustle and bustle of the city of Karachi. We are in the northern part of the city, where two grounds are hosting these two first-class games, and in the coastal part another game is going on. So the cricket has well and truly arrived in Karachi. Nisar to continue from the other end. Nisar has got a job to do. Waqas Maqsood has created a lot of pressure, and if, that's where they say you hunt in pairs. If Nisar can find the right lens, probably the batters will go against him, and that may mean that he will be in the business as well. So far, too short for my liking. Still 3 of them on their toes in the slips region. Now 1 in the gully. This batter, for a moment, Salman was looking to come forward and play it, but he's been there long enough now. It's a very good battle, Akil. You see Central Punjab are keeping themselves interested in the field. A slow hand clap at every delivery. They want to keep their hands dry and ready when the nick comes their way. Yes, creating that crescendo against the batsman. And one benefit of sitting in a ground like SPB Sports Complex, that you, the broadcaster, are very near to the action. Whatever is going on, you can feel that energy, and the batsman could also feel what kind of messages are being pushed from the dugout or the pavilion to the fielding side.
Salman Ali is sensing that kind of magic which these two fast bowlers are trying to produce. I think they are going to be in the action no matter what wickets they are going to get for the next 2-3 overs or so. And the next over would be another highlight of the session if Waqas Maqsood is to continue. Very, very comfortable, right on top of the bounce. Salman Agha is a tall lad. He's showing very, very good technique here. It's so good to see that the batting culture finally changing in Pakistan, where we're getting a lot of these technically correct batters, and they're doing good with the red ball and equally effective with the white ball as well. Yes, good opportunity on the other end for Nisar, and he has been rising up to the occasion also into his 9th over. Second spell of the day continued in the morning throughout the first session. Just about perfect in terms of the line. The angle of deviation was too big to get anywhere close to that edge because of that short length. We look at the slip cordon right now. Look at them. They're doing their stretches. They were all in unison at one time, keeping the energy going. We've seen this trick from them throughout the season, where they had to be in the field for long hours. Probably they won't be here for that long. Look at difference in techniques as well. When we watch Salman Ali Agha, he's right outside his crease. Umar Sadiq staying back in his crease. Probably a leg by. We'll have to wait for umpire's signal. 30 gone, 61 for 2. Umar Sadiq and Salman Ali Agha have clearly steadied the ship, and Azam Khan, Amir Yamin to come. One would say that Southern Punjab are in a good condition into the second session of play after losing 2 wickets earlier on. Tayyab Tahir and Imran Rafiq within a space of 2 runs. They were back in the hut, but since then, some good batting by Salman Ali Agha and good show of temperament by Umar as well. You got your wish. It's Waqas Maqsood once again. Glorious drive. That's the beauty of Waqas Maqsood. This is what he's tempting the batters to do. Not afraid to pitch that ball up. He got driven, but he won't mind that. And he has been clearly disgruntled on the decisions given against his will. Obviously, Salman Ali Agha, the right-handed batsman, he has been creating that angle coming wide of crease. Perhaps he will have to rethink that strategy as well to get that going into his way. There you go. Inviting that drive again, lured him into that full pitch delivery, and that is the movement he's getting. Classy spell from Waqas Maqsood. Just coming over the wicket, and once again slight bit of movement and a full invitation to go for that cover drive. Umar Sadiq has been showing a lot of patience throughout the first session, but this is going to be tough for him, and a bit of talk between Salman Ali Agha and Umar Sadiq. After that delivery, he would clearly be advising him, Umar Sadiq, to put his head down, and the delivery which would coming into the left-handed batsman, he will have to be careful. Wide of the crease once again, inviting the drive. Skipper Ali Zaryab, you have to give credit to him. Look at the slip cordon. 4 slips, a gully, and a very short square point. And some huge boots to fill as well. He has been leading Central Punjab, which has been the land of the superstars throughout these years, these days as well. Obviously, Babar Azam and Azhar Ali all belong to this region. Unfortunately, we have not seen much of them in this first-class season, but they would be joining sometime sooner or later this team. So this is definitely a huge boot to fill for Ali Zaryab, and he has been doing well.
taking reins of Central Punjab, who has been the joint winner of the previous season along with Khyber Pakhtunkhwa. Definitely a big learning curve for the youngster. Azhar Ali had to leave for the national duty, but he's in good hands. Abdul Razak is there, Akram Raza, Ashraf Ali, Mansoor Amjad. That's the backroom staff for Central Punjab. Will be guiding the youngster along the way. Immaculate in forward defense. Umar Siddiq. Waqas Maqsood has tried his best. You have to say he hasn't got much of help from the other end. And so it's going better for Southern Punjab that Salman Ali has been away from the strike, and Umar has been teasing, standing well within his crease, and that was a different strategy when the right-handed batter was facing Waqas Maqsood. He has to create that length and also that angle against the left-handed batsman. So little battle so far won by Umar Siddiq. Final delivery of the over. Off the back foot, a dot to finish off the over. 31 gone, 62 for 2. ये समरी है जो एक और मैच इस वक्त यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में खेला जा रहा है। यहाँ पर बलूचिस्तान ने 96 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर। इमरान भट्ट 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे और यहाँ पे सोहेल खान ने डैमेज किया, 25 रन देके 4 विकेटें हासिल की हैं। आज कराची जो है वो कायद आज़म ट्रॉफी की क्रिकेट सरगर्मियों का हब बना हुआ कि जहाँ पर इस वक्त स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच खेला जा रहा है। हौसलों से बाहर गेंद, इसको खेलने में कामयाब हुए, कट किया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पर 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़े कम मौके इस तरह के देखने को मिले हैं आज, जब के विथ भी इतनी मिल जाए और शॉट भी इतनी हो बॉल, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। देखें शॉट ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, सलमान अली आगा ने मिस नहीं की अपॉर्चुनिटी, 4 रन के लिए खेल दिया। एक अच्छा स्ट्रोक था जिसके नतीजे में 4 रन हासिल किया, लेकिन कॉन्फिडेंस भी हासिल हुआ आगा को। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आज कराची में 3 ग्राउंड पे मैचेस खेले जा रहे हैं, 6 टीमें इस कायद आज़म ट्रॉफी की नबरदाज़मा हैं। आज ये 2 टीमें इस मैच में यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, जबकि यूबीएल पे बलूचिस्तान और सिंध का मैच है और केपी और नॉर्दर्न नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन एक्शन। बड़ी अच्छी लाइंस पे बॉलिंग की है आज सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स ने, जबकि ये ज़रूर हम कमेंटेटर्स में बहस रही है कि उनकी लेंथ ठीक है या नहीं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से शॉर्टर साइड पे उन्होंने बॉलिंग की है, विकेट्स लेने के बजाय रन्स रोकने पे ऐसी विकेट पर भी ज़्यादा इन्हिसार उन्होंने किया है। अगले कदमों पे खेला गया स्ट्रोक, बॉलर की पेस को इस्तेमाल किया, फील्डर गेंद के पीछे गेंद का ताक़ुब करते हुए, लेकिन इससे पहले कि गेंद तक पहुंचते आसानी के साथ स्कोर में 2 रन का इजाफा। एक अच्छी पार्टनरशिप सलमान अली आगा और उमर सिद्दीक के दरमियान बिल्डअप होते हुए मुश्किल सूरत हाल पे दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया कि जब इनफॉर्म बैट्समैन तैयब ताहिर जल्दी साथ छोड़ गए उमर सिद्दीक का, और उसके बाद 1 डाउन बैट्समैन इमरान रफ़ीक भी ज़्यादा देर क्रीज पे अपने क़याम को मुमकिन नहीं बना सके। 15 के स्कोर पे दूसरी विकेट गिरी थी जब इमरान रफ़ीक को जुनेद ने कैच किया वक़ास की गेंद पर। मिसफील्ड की है ये पॉइंट पे, 2 रन का इजाफा होगा, बल्कि तीसरे रन के लिए भी कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया उमर ने उनको। सैफ बदर थे फील्डर के जो इसे स्लॉपी फील्डिंग के जिम्मेदार करार पाए। इससे पहले बड़ा अच्छा कैच लिया था स्लिप में उन्होंने,
तैयब ताहिर का, तो सैफ इस मरतबा ज़्यादा सेफ नज़र नहीं आए। जी हाँ, कुछ कोई बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बाउंस भी नहीं था, वो मेरे ख्याल से नज़र उन्होंने बॉल पे से हटा ली, जो कि ज़ाहिर है कोई भी फील्डर हो, कितना ही अच्छा हो, अगर बेसिक सही नहीं हो तो मुश्किल हो जाती है। इस मरतबा फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज से गेंद को नहीं रोक सके। एक और रन। इस किस्म की फील्डिंग को यकीनन जो है वो दरगुजर करना होगा और काबू पाना होगा इस किस्म की स्लॉपी फील्डिंग पे, क्योंकि जो प्रेशर इस वक्त है यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के इन दोनों प्लेयर्स पे वो ज़ायल हो जाएगा इस किस्म की स्लॉपी फील्डिंग से। अली उस्मान थे। अगर पूरे हिकमत अमली को सलमान अगर देखा जाए तो सेंट्रल पंजाब की इस वक्त डिफेंसिव लग रही है। हालांकि उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला भी किया, विकेट में उनको मदद भी हासिल हो रही थी, लेकिन उस तरह से वो उस माइंड सेट के साथ फील्ड में नज़र नहीं आए कि जहां टीमें विकेटें लेने की कोशिश करती हैं। शॉर्ट बॉल की थी, बैकफुट पे गए। 1 रन का मजीद स्कोर में इजाफा और हमारे स्टेटिशियन और निसार के मुताबिक 57 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 72 2 विकेटों के नुकसान पे। तजुर्बे की बात पहले हो रही थी और बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी विकेट पे जहां बॉलर्स को मदद मिल रही हो, तजुर्बा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि आज हमने वक्कास की बॉलिंग में देखा है, उन्होंने अपने तजुर्बे की मदद से वो लेंथ्स ढूंढी हैं सही, जहां पे उन्होंने बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। बाकी जितने बॉलर्स हैं वो अपनी रेगुलर लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, जिसके वो आदी हैं या जिस पे वो आमतौर पे बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये विकेट मुख्तलिफ है, इस पे मुख्तलिफ लेंथ पे बॉल करने की ज़रूरत थी, जो कि वक्कास के अलावा और बॉलर्स नहीं कर पाए। वकास मकसूद स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और इस तरह अहमद ने बात की वकास मकसूद के हवाले से, तो मुझे याद है 2017-18 के सीज़न में वापडा की नुमाइंदगी करते हुए केआरएल के खिलाफ इन्होंने एक इनिंग में 9 विकेटें इसी ग्राउंड पर हासिल की थी और केआरएल इनकी उम्दा बॉलिंग के बायस महज 95 रन पर आउट हो गई थी। और ये जो इस वक्त विकेट कीपर है जुनैद अली, इन्होंने 40 रन की इनिंग खेली थी उस मैच में केआरएल के लिए। मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद, कलाइयों की मदद से इस गेंद को खेला। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन के दरमियान 1 रन का इजाफा। थोड़ा लो प्रोफाइल में रहते हैं वकास मकसूद, हालांकि जितनी इनकी परफॉर्मेंसेज है इतना इनको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन शॉर्टर वर्जन हो या लॉन्गर वर्जन हो, दोनों में इन्होंने अपनी अफादियत को साबित किया। ये अली उस्मान है कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की है इस सीज़न में। ये बिलावल थे इनफैक्ट ये। इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान बहुत अहम शराकत, अहम इसलिए भी ज़्यादा कि अब उन्होंने जो मुश्किल वक्त था उसको गुजार दिया है। अब निस्बतन कुछ आसान वक्त है, लेकिन इसकी अहमियत इस पार्टनरशिप की यूँ है कि ये जितनी लंबी चले उतना अच्छा है, क्योंकि जहाँ विकेट गिरेगी नए बैटर को जो है वो हमेशा इस विकेट पे सेटल डाउन होने में मुश्किल होगी। इस मरतबा अगले कदमों पे खेला गया स्ट्रोक, और अगर हम स्टांस दोबारा से देख सकें यहाँ पर सलमान आगा का, तो आप देख सकेंगे अमर, और आप बेहतर बता सकेंगे कि चूँकि यहाँ पे सीम मिल रहा है स्विंग को किल करने के लिए, सीम को से निमटने के लिए थोड़ा सा क्रीज से आगे खड़े हुए, ताकि बॉलर को इतनी ज़्यादा स्पेस ना मिल सके कि वो बॉल को स्विंग कर सके या पिच का बेहतर इस्तेमाल कर सके। ये आप देख सकते हैं स्टांस सलमान आगा का। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, आगे खड़े हैं वो स्विंग को काउंटर करने के लिए, और अक्सर और बेशतर वो एक कदम और एक बड़ा कदम आगे लेते हैं बॉल खेलने से पहले, ताकि उस एंगल से जिससे वक्कास बॉल कर रहे हैं उसको भी ख़त्म कर सकें वो। ऑपोजिशन से काफ़ी बाहर गेंद थी, स्विंग को भी किल करने के लिए और साथ साथ जो पिच से जो मूवमेंट मिल रही है उसको भी ख़त्म करने के लिए, ताकि जो लाइन और लेंथ है जो उसको डिस्टर्ब कर सकें वकास की।
एक अच्छी स्ट्रेटेजी जिसको कही जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। हर बैटर जो है वो अपने हिसाब से, अपनी सलाहियतों के और अपनी मूवमेंट्स के हिसाब से जो है वो इस बात का तयन करता है, हर विकेट पर, मुख्तलिफ विकेट पे मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाता है कि किस तरह से वो इस विकेट पे सरवाइव कर सकेगा और बाद में ज़ाहिर है इसका फ़ायदा उठा के रन बनाएगा। तीन स्लिप, एक गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ या ऑफ साइड की फील्ड, मिड ऑन पे फील्डर देखा आपने। एक दफा फिर यहाँ पे गेंद बॉडी पे हिट हुई। आज काफी गेंदें जो है वो जिस्म पे लगी हैं सलमान आगा के। जी हाँ, इस तरह की विकेटों पे अमूमन ऐसा होता है कि क्योंकि सीम जहाँ पे दोनों तरफ बॉल हो रहा हो तो वहाँ पे पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बॉल बाहर जाएगा या अंदर आएगा। तो अक्सर और बेशतर बैट्समैनों की हिकमत अमली ये होती है कि वो अंदर आने वाली बॉल को खेलते हैं। और एक बड़ा अच्छा परफेक्ट यॉर्कर भी था जो पाँव पे लगा था सलमान आगा के वकास मकसूद की जानिब से। इस मरतबा काफी दूर से इस गेंद को खेला लेकिन गैप में खेलने में कामयाब हुए। अहमर पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन। अहमर, अगर हम इस शॉट का रिप्ले देखें तो 3 स्लिप, एक गली लगी और उसके बाद इतना बल्ला बाहर निकालना, किस तरह से आप इस शॉट का एनालाइज करेंगे? जी बिल्कुल ठीक देखा आपने। ये 33 ओवर में 75 रन पे 2 खिलाड़ी आउट, सदर्न पंजाब। बिल्कुल ठीक आपने ये जज किया है कि सलमान अली आगा जो है वो शुरू से थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर टेंटेटिव लग रहे हैं। वो अपने जिस्म से दूर बॉल को खेलते हैं। खुशकिस्मत रहे हैं, काफ़ी बार जब बॉल पड़ के बाहर निकली और वो एज लिए बगैर कीपर के पास चली गई। 156 गेंदों पर 60 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान। 75 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर। और ये अमूमन हमारे यंगस्टर्स में T20 की वजह से नजर आ रहा है कि वो गेंद पे चढ़ के खेलने की कोशिश करते हैं और बाहर से गेंद को लेने की बल्ले पे कोशिश करते हैं। इसका हमने अमली मुजाहरा से थोड़ी देर पहले देखा। अभी तक स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया कप्तान अली जरियाब ने। सेंट्रल पंजाब की टीम अपने कई खिलाड़ियों की खिदमत से महरूम। अजहर अली, आबिद अली भी इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, नेशनल ड्यूटी पर है। इसके अलावा हसन अली भी टीम के साथ नहीं है और अहमद शहजाद जो टीम के साथ है लेकिन इस मैच में शिरकत नहीं कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग थी पॉइंट पे मौजूद फील्डर की जानिब से। जफर गौहर है ये। जफर गौहर एक मुस्तनद लेफ्ट आर्म स्पिनर। आज उनको रेस्ट दिया गया है मेरे ख्याल से, विकेट को देखते हुए भी। दूसरे स्पिनर की आज ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से टीम में, इसलिए रिप्ले। थोड़ी शॉर्ट बॉल थी और अब आप देखें तो जो वक्त गुजर रहा है बैट्समैन ज़ाहिर है सेट भी हो गए हैं, ज़्यादा श्योरिटी के साथ खेल रहे हैं और कुछ आसानी भी हो रही है उनको अब शॉट मारने में। जज अहमद सफ़ी अब्दुल्ला को फौकियत दी गई है जफर गौहर पर, जो SNGPL और फैसलाबाद के लिए खेलते रहे। ये वो रिप्ले कि जिसके नतीजे में गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई जुनैद अली के हाथों में महफूज हुई। इस सीजन में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अली उस्मान की बात करें, जफर गौहर की बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स यहाँ पे हमें डोमिनेट करते नजर आए। अमर, इस तरह मोहम्मद असगर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सिंध के लिए। और आज अबरार ने UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 विकेटें हासिल की सिंध के लिए अगेंस्ट बलूचिस्तान, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान महज 95 रन पर आउट हुई। जी हाँ, लाहौर में ख़ास तौर पे फैसलाबाद में आमतौर पे विकेटें जो है वो काफ़ी बैटिंग के लिए साजगार थी, इसलिए हमने वहाँ पे देखा कि स्पिनर्स जो है वो बड़े लंबे लंबे स्पेल्स कर रहे थे, ज़्यादा उनको बॉलिंग करनी पड़ रही थी, इसलिए ज़ाहिर है विकेट्स भी उन्होंने हासिल की। लेकिन बहरहाल ये मेरे हरगिज़ कहने का मतलब नहीं है कि वो
ज़्यादा ओवर्स कर रहे हैं तो इसलिए विकेट ले रहे हैं। जाहिर है अच्छी बॉलिंग, अच्छी लाइन, अच्छी फ्लाइट से ही बॉलिंग कर रहे होंगे जब भी विकेटें मिल रही हैं। इनिंग को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए इन 2 रन के इजाफे के साथ 25 के इनफरादी स्कोर पे पहुंचे उमर सिद्दीक। क्रिकेट इनका फैमिली गेम। इनके बड़े भाई काशिफ सिद्दीक स्टेट बैंक के लिए खेलते रहे, भावलपुर के लिए खेलते रहे। काशिफ सिद्दीक लाहौर की नुमाइंदगी की और इनके वालिद अंपायर सिद्दीक खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो क्रिकेट इनका फैमिली गेम है और उमर सिद्दीक भी काफ़ी अरसे से सीन पर है, लेकिन अब तक जो है इनको उस तरह से मौके नहीं मिल सके जितनी इनकी परफॉर्मेंस रही है। यूबीएल के लिए भी खेला इन्होंने। ये वो टेक्निक है जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं। सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, लेट खेलने की कोशिश करते हैं उमर सिद्दीक हमेशा। इसलिए इस सीमिंग विकेट पे जहाँ पे बॉल काफ़ी सीम कर रहा है वहाँ पे बड़ी अच्छी टेक्निक इनकी लगी है हमें अभी तक सुबह से। बहुत अपने कॉम्पैक्ट हैं, अपने जिस्म के पास खेलते हैं, इसलिए जो एज लगती भी है वो स्लिप्स में कैरी नहीं करती। ज़्यादातर हमने ये देखा। और एमर चूँकि क्वालिफाइड कोच हैं, एमर इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि अगर वो यंगस्टर जिस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन लेसन है उमर सिद्दीक की बैटिंग कि अगर आप कोई इस किस्म पिच पे 3 स्लिप 1 गली या 3 स्लिप 2 गली के साथ आप पे अगर बॉलिंग हो रही हो तो आप अपना बॉटम हैंड जो है वो थोड़ा सा लाइट रखेंगे, ग्रिप लाइट रखेंगे ताकि गेंद कैरी नहीं कर सके स्लिप तक। 34 गए, 77 पे 2। बॉलिंग का अब तक की कहानी। मकसूद अब भी 2 विकेटों के साथ वाहिद कामयाब बॉलर है। निसार अहमद ने 10 ओवर में 25 रन दिए हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। मोहम्मद अली 7 ओवर 15 रन और बिलावल इकबाल 6 ओवर में 10 रन दिए हैं। लेकिन वक्कास मकसूद के अलावा अभी तक किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। टेक्निक की जहाँ तक बात थी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये बॉटम हैंड जो है वो जितना लाइट होगा और टॉप हैंड से आप उसको खेलेंगे उतना ही कम चांसेस हैं कि बॉल जो है वो बल्ले का भारी किनारा लेके जो है स्लिप्स तक कैरी करे। ख़ास तौर पे सीमिंग घास वाली विकेटों पर बड़ा ज़रूरी है कि आप टॉप हैंड को मजबूत रखें और उससे ज़्यादा खेलें। बिलावल इकबाल है बॉलर, अच्छा गेंद था इस मरतबा। और एक दफ़ा फिर देखें सलमान अली आगा एक दफ़ा फिर इस गेंद को चेस करने चले गए। ऑफ स्टंप से बाहर काफ़ी फ्लैशी नज़र आ रहे हैं सलमान अली आगा। ऑफ स्टंप से कहीं बाहर गेंद थी, 3 स्लिप लगी हुई है, 1 गली लगी। कहाँ खेलने गए इस गेंद को? जी हाँ, बहुत ही ख़तरनाक शॉट खेला है। ये मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि इनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि मुश्किल वक्त वो गुजार चुके हैं तो ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से कोई नुकसान हो टीम को भी और आपको अब खुद भी, क्योंकि नए आने वाले बैट्समैन के लिए अब भी इस विकेट पे खेलना आसान नहीं होगा। और एमर इस वक्त 3 स्लिप 1 गली के साथ गेंद कर रहे हैं। अगर आपका हम क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, कैप्टनसी का एक्सपीरियंस अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर 1 गली 2 गली के साथ गेंद कर रहे हैं और इनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर रखें तो मुश्किलात से 2-4 हो सकते हैं सलमान अली आगा? जी हाँ, बिल्कुल। गलीज भी 2 ली जा सकती हैं। इस वक्त 4 स्लिप से बॉलिंग कर रहे हैं ये तकरीबन, और गली एरिया खाली है, पॉइंट है उसके बाद। जी हाँ, इससे पहले गली में थे, गली से इनको फिर अभी स्लिप में प्लेस किया है, शायद पिछले शॉट को देखते हुए। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से एक बेहतर स्ट्रेटजी है इस विकेट पे जहाँ पे बॉल कैरी कर रहा है और जो एज लगेगा वो खासा फाइन आएगा। और ख़ास तौर पे इस तरह की लेंथ पे जब बॉलिंग कर रहा हो बॉलर तो चौथी स्लिप ज़्यादा मेरे ख्याल से कारामत साबित हो सकती है, बजाय इसके कि आप उसको गली लें। गली वक्कास के लिए आप ज़रूर ले सकते हैं जो बॉल आगे कर रहे हैं, ड्राइव खिलाने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन को, वो ज़रूर गली
को इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन इस लेंथ पे बॉल जो है वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो स्लिप्स में ही जाएगी। और आपने अपने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे देखा होगा कि वकास मकसूद भी जिस बात का अहमद तस्करा कर रहे थे, शायद वकास मकसूद भी साथी प्लेयर से इसी बात का तस्करा कर रहे हैं कि लेंथ को मजीद खींचना होगा, जिस तरह क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं। ये वो लाइन है जिसमें गेंद करनी है बिलावल इकबाल को। इम्तियाज इकबाल एक और ज़बरदस्त अंपायर, सीजन अंपायर, नौजवान अंपायर में एक अच्छा इजाफा है इम्तियाज इकबाल। विल्स कप खेले में अच्छी गेंद दी है। सूरत बॉल, लेट स्विंग हुआ, थोड़ा सा खेलना ही पड़ गया सलमान को ये बॉल, क्योंकि मिडल एंड ऑफ से शुरू हुई थी ये बॉल और लेट फिर बाहर निकला। खुशकिस्मती के एज नहीं लगी, कोई पैरों की कोई मूवमेंट नहीं थी। ये आप देखें तो अपनी क्रीज में खड़े हो गई, सिर्फ बल्ला उन्होंने आगे बढ़ाया, जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक और अच्छी गेंद, ये वो लाइन है कि जिसका अहमद शहीद और हम तस्करा कर रहे थे कि यहाँ पर गेंद करनी होगी सलमान आगा, क्योंकि ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा फ्लैशी है, थोड़ा सा ड्राइव खेलने में जल्दी कर रहे हैं, खड़े खड़े खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि काबू पाया है अली जरियाब ने, सेंट्रल के कप्तान ने, और अब लाइन को थोड़ा सा तब्दील किया है। और आप देखें थोड़ी लिंपिंग में नजर आ रही है, क्योंकि वकास की बॉल इनके पाँव पे भी लगी थी। जी, 2 बॉलें इनके स्टोप पे लग चुकी हैं, तो ज़ाहिर तकलीफ में तो होंगे। और हमने ये पहले ही बात की थी कि आज जब शाम को घर जाएंगे तो असल में तो इनको इसका अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर तकलीफ दे हो सकता है। ये देखिए बॉल एक बार फिर थोड़ा सा आगे इस बार किया, पैरों की मूवमेंट देखिए, कोई मूवमेंट नहीं है, उसी तरह खड़े खड़े खेल रहे हैं। और सिर्फ अपने बैट को वो जैसे हम पहले कह रहे थे हैंग करते हैं बाहर ऑफ स्टंप के, तो खतरनाक हो सकता है। 35 ओवर के इख्तिताम में 77 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर सदर्न पंजाब। और शायद ये मूवमेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पाँव में चोट लग चुकी है, और रीज़न शायद यही है कि मूवमेंट में कमी नज़र आ रही है। अगर हम बात करते हैं सदर्न पंजाब की, तो इस खित्ते से कई ज़बरदस्त प्लेयर पाकिस्तान को मिले। कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े नाम रहे। इस खित्ते में मुल्तान और भावलपुर के इलाके ऐसे हैं कि जहाँ से बड़ा टैलेंट सामने आया। भावलपुर के इमरान आदिल, यंगेस्ट बॉलर के जिन्होंने इनिंग में 10 विकेटें हासिल की, उनका रिकॉर्ड अब तक कायम है कि कोई और बॉलर अब तक उनसे कम उम्र नहीं रहा जिसने 10 विकेटें इनिंग में हासिल की हो। दिफा अंदाज से खेलें इस मरतबा मोहम्मद अली की इस गेंद को। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो आमिर बशीर मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, एक ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने बड़ा परफॉर्म किया मुल्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। पाकिस्तान के लिए भी उनका नाम आया, लेकिन अनलकी रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। वरना अगर हम मुल्तान की बात करते हैं तो इलाही बिरादरान, वक़ार इंज़मा मुश्ताक़, ये नाम तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। भावलपुर से कामरान हुसैन, जुल्फ़िकार बाबर, मुर्तज़ा एक ऑफ स्पिनर थे, बड़े ज़बरदस्त थे। मोहम्मद जाहिद लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तो बड़े ज़बरदस्त थे ये प्लेयर जो भावलपुर की नुमाइंदगी करते रहे। आमिर बशीर मरहूम का आपने नाम लिया, क्या खूबसूरत, क्या शानदार प्लेयर थे वो। और अगर आप यूबीएल की उनकी इनिंग्स ज़्यादातर उठा के देखें तो इतनी बड़ी टीम में जिसमें ज़्यादातर टेस्ट प्लेयर्स खेला करते थे, उसमें भी कई मैच ऐसे हैं जो कि आमिर बशीर और इकबाल इमाम का भी मैं नाम लूँगा उनके साथ। वो ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई इनिंग्स ऐसी हैं जो यूबीएल की उन्होंने बचाई हैं उन टेस्ट प्लेयर्स की मौजूदगी में भी। और ये उर्दू में कहावत है कि अगर मुंडेर पे कौवा बैठा हो तो मेहमान आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कौवा बैठा होता तो ग्राउंड में तमाशाई ज़रूर आते। लेकिन यहाँ पे चीले मौजूद हैं। इसी दौरान एक और यहाँ पे स्ट्रोक हासिल किया और 4 रन हासिल किए। कोई मौका नहीं था फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का। वलीद याकूब की जानिब से 4 रन का सिग्नल। बहुत अच्छा शॉट था ये उमर का। ये देखिए बॉल थोड़ा आगे पिच था, लेग स्टंप पे था, लेकिन उन्होंने जोर से मारने की कोशिश नहीं की, उसको टाइम किया हल्का सा, इस बात की यकीन दहाने की कि बॉल गैप में जाए। और जो जो वक्त गुजर रहा है, फील्ड भी मेरे ख्याल से सूख रही है और अब थोड़ी सी तेज़ होती जा रही है, बॉल बाउंड्री को
की तरफ कैरी कर रहा है। जी हाँ, गेंद रोल होता हुआ, अच्छी हैवी, अच्छी आउटफील्ड है यहाँ पे। बड़ा अच्छा यहाँ पे जो ग्राउंड ये बनाया है, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड। 20 नवंबर 2016 को इस ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ था। वसीम हैदर, इंजमाम उल हक और उस वक्त की दीगर सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। ये रिप्ले कि जिसके नतीजे में स्लाइड लगा के गेंद को रोका और दूसरा रन बनाने से बाज रखा। हम बात करते हैं मुल्तानी खित्ते की भी। अगर हम फास्ट बॉलिंग पर आते हैं तो फिर अब्दुल रऊफ की बड़ी सर्विसेज हैं। इसके अलावा शब्बीर अहमद बड़े ज़बरदस्त बॉलर। इमरान आदिल का मैंने तस्करा किया। कामरान हुसैन एक ऐसे प्लेयर थे जो शायद वक्त ने उनको ज़ाया कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान विमेंस टीम के साथ हैं। इक्वली गुड बॉलर, इक्वली गुड बैट्समैन कामरान हुसैन। हबीब बैंक के लिए बड़ी सर्विसेज है उनकी। और इसके अलावा अगर हम फर्स्ट क्लास की सबसे बड़ी इनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फैसल मुबशिर का रिकॉर्ड है। 216 रन की उन्होंने खेली थी बावलपुर के लिए अगेंस्ट कोयटा। तो बड़ा अच्छा यहाँ से टैलेंट मिला है। अगर क्योंकि इस वक्त क्रिकेट इतनी ज़्यादा जो थी, इतने प्लेयर होते थे, पूल ज़्यादा था प्लेयर्स को, तो ये प्लेयर ज़ाया हो गए, इतने मौके को नहीं मिल सके। लेकिन टैलेंट में इस खित्ते के प्लेयर कहीं किसी तरह भी कम नहीं थे। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र आपने किया, वो फर्स्ट क्लास के बहुत बड़े नाम हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी बहुत से खिलाड़ी इसी खित्ते से मिले। फैसल मुबशिर का मैंने अहमद जिक्र किया। इन दिनों जर्मनी की नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्टेट बैंक से खेलते रहे माजी में फैसल मुबशिर। और एक बार फिर पैरों की कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ ड्राइव मारने की कोशिश की। और इस बार वेट भी थोड़ा सा जो है वो बैक फुट पे था, फ्रंट फुट पे ट्रांसफर नहीं कर सके, लेट हुए तक बॉल पे और उसकी स्विंग को काउंटर नहीं कर सके। एक बार फिर खुशकिस्मत कि एज नहीं लगी। 36 ओवर के इख्तिताम पर 82 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्टेट बैंक का ये ग्राउंड, खूबसूरत ग्राउंड, बड़ा अच्छा पवेलियन भी बनाया गया है यहाँ पे। मॉडर्न लाइंस पे बना हुआ पवेलियन, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। और स्टेट बैंक ने जिस तरह खूबसूरत ग्राउंड बनाया, इस तरह स्टेट बैंक ने पाकिस्तान क्रिकेट में एक नर्सरी का रोल प्ले किया है। अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो ऐसे। बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान स्टेट बैंक के लिए, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद उनकी पाकिस्तान की टीम तक रसाई हासिल हुई कि जहां फाइनल में उन्होंने हबीब बैंक के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की थी। आमिर यामीन, कामरान गुलाम, मुख्तार, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, काशिफ भट्टी, ताबिश खान। ये खूबसूरत मंजर स्पोर्ट्स स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। बिलावल के हाथ में काफी जोरदार अंदाज से गेंद लगी है। जी हाँ, बड़ा तकलीफदेह होता है जब बॉलर्स बैक ड्राइव को फील्ड करने की कोशिश करते हैं। देखें, उन्होंने ड्राइव किया था, अच्छा टाइम किया, रोकने की कोशिश की और उंगलियों के बिल्कुल किनारे पे लगी है। ये बड़ी तकलीफदेह होती है। मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ आपको कि जब ये बॉल बिल्कुल उंगली के एज पे लगती है तो खासी तकलीफ, एक सनसनी सी आपके पूरे जिस्म में दौड़ जाती है। काफी जोरदार अंदाज से गेंद लगी है फिंगर टिप पे। तकलीफ का शिकार नजर आ रहे हैं बिलावल इकबाल। अमूमन बॉलर से बॉलर बैक ड्राइव लगती है। मुझे याद है शुएब खान का एक ड्राइव लगा था, वहाब रियाज के चेहरे पे
फिर जिम्बाब्वे के एक बॉलर के दांत टूट गए थे बॉलर्स बैक ड्राइव लगने से। हेवर्ड का इंजमाम का ड्राइव उनके सर के ऊपर से गुजर गया था। तो अमूमन ऐसा होता है कि बॉलर चूंकि फॉलो थ्रू में आगे होता है तो उसके पास रिएक्शन टाइम कम होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये रिप्ले उस चोट का जो बिलावल को लगी है बिल्कुल उंगलियों की टिप पे। हमारे एक चीज़, चूंकि आप खुद मैच रेफरी भी हैं, तो एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इनका अगर आप फॉलन थ्रू देखें तो आपको लगता है कि फॉलन थ्रू में दानिस्ता नहीं गैर दानिस्ता के तौर पे थोड़ा सा डेंजर एंड की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो काम अंपायर्स का है, जो दो फील्ड पे अंपायर्स खड़े हैं, ज़ाहिर है उनकी नज़र इस पे होगी। और आजकल की क्रिकेट में ख़ास तौर पे बड़ी एक जो है वो गहरी निगाह इस बात पे रखी जाती है कि डेंजर एरिया का। ये इम्तियाज इकबाल है जो विल्स कप खेले, एक विल्स कप खेले कराची के लिए, क्लब की सतह पे बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन रहे, लेग स्पिनर भी रहे इम्तियाज इकबाल। कराची केसीसी जोन 4 के पाक स्टार क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करते रहे। डेंजर एरिया की जो आपने बात की, वो आजकल की क्रिकेट में बड़ा ख्याल रखते हैं अंपायर्स इस बात का कि उस डेंजर एरिया को प्रोटेक्ट करें, इसलिए लॉज भी उस कुछ तब्दील किए गए हैं। पहले एक काफ़ी सारी वार्निंग्स दी जाती थी, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता था, फ़ौरन स्ट्रेट अवे जो है वो वार्निंग मिल जाती है और उसको जो है वो नुकसान उठा सकता है बॉलर अगर एक से ज़्यादा बार वो इस डेंजर एरिया में आए तो। अभी फॉलन थ्रू इनका देखना पड़ेगा। एक अच्छी गेंद, एक दफा फिर डिसीव किया सलमान आगा को, इंतहाई नाराजगी से देखा है सलमान आगा ने फील्डर की जानिब और मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पे। सौ गेंदें खेल चुके उमर सिद्दीक, काफी हद तक सेट हो चुके हैं, जबकि 97 गेंदें खेली हैं सलमान अली आगा ने। कुछ खेली हैं और कुछ झेली हैं। जी हाँ, सलमान अली आगा के उसमें कि अगर आप बात करें तो ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, झेली उन्होंने खासी बॉलें। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही खुशकिस्मत है यहाँ सलमान अली आगा कि गेंद उनके बल्ले का लेके विकेटों के पीछे नहीं जा रही। 83 2 विकेटों के नुकसान पर। रिप्ले देखिए, बॉल पिच होके थोड़ा सा अंदर की तरफ आया था हालांकि, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जो टेंटेटिव सुबह से सलमान अली आगा लग रहे हैं वो अभी तक जारी है। वो बात मेरे ख्याल से उनकी गेम का हिस्सा ही है। ये पानी का वक्फा यहाँ पर 83 पे 2 सदर्न पंजाब।
2 wickets. These 2 wickets fell before the session, before the lunch session. And since then, it's been these 2 players, Agha Ali Salman and Umar Sadiq, doing a wonderful job. Muhammad Ali to continue. Some aggression early on, after the break. Akil Samar alongside me. It's been a good effort by these 2 batters, if we talk about. They've showed patience, courage. Yes, one for the over as called by the umpire already. He was trying to do too much off the surface, but I am not sure if it is going to bring some kind of dividends for the bowler or not. Otherwise, there was a good start to the session, courtesy some good in-dippers by Waqas Maqsood, creating that angle. Instead, Salman Ali Agha was on the other end, very comfortable. Getting the ball from the middle of the bat now, getting comfortable with every delivery they're facing, Umar Sadiq and Salman Ali Agha. As you just mentioned about Waqas Maqsood, he's been the only bowler that has looked to threaten this partnership. He's bowled at a right line and length. Other than him, I believe that the bowlers have not used this pitch accordingly. They bowled outside the off stump. The line has not been right. It has been easy to leave the deliveries for these 2 batters. And they both are very talented, very skillful batters. Not quite getting the timing right there, Umar Sadiq. 3 deliveries now for 31 shows that he's got patience behind him. A news coming in from UBL Sports Complex, Ali. Balochistan have been bundled out on only 96. So finally things are moving in a very fast phase over here in Karachi. Sindh has been all over against them, and Sohail is finally in the rhythm. I think you were covering the last match where Sohail was finally starting to get the rhythm back, and in this age where you are kind of downhill, the performance as well as the pace, but still you are bowling your heart out. It is so good to see that he has been contributing, but credit to the groundsman as well. So finally some things are happening, and I think one of the lowest total is the UBL Sports Complex. I think Sindh has been in a great form this season. Even in the last game that we covered, and the day-night match we covered against Central in Lahore, Hassan Ali scoring a 300, Ahmad Alam scoring runs, Saad Khan scoring runs. So these youngsters coming from Sindh side, young batters, very good to see. We'll talk about Sohail Khan also. As the timing not there, quite not there again by Umar Sadiq. That's what experience does. If you talk about Sohail Khan and Waqas Maqsood in this inning, is if you talk about, because you should know the art of getting wickets, you should know how to get batter out, and that's what experience brings. Overhead also these 2 wickets falling to Waqas Maqsood because of his experience. That is very important. And Sohail Khan at this age, wonderful fitness, good man and good attitude towards cricket. I think that's the best thing about Sohail Khan, his attitude. Oh, fell short again. Was in the air for a while. Saif Badr there. 38 gone, 83 for 2, Southern Punjab. Yes, this is the batting performance for Southern Punjab. They have won 1 game as well, almost 2,000 runs. And this tells you the story that they have been scoring significantly. And Central Punjab are not too far away from the Southern Punjab in that tally. But this tells you that you have to be positive with the intent in your run scoring. And both the things are going good. Not only the runs, but also the runs per over has been doing good for them. And this is going to be the name of the game when you are playing here in Karachi in these kind of tricky surfaces, when you will have to score significantly towards getting some good runs. Otherwise, if you just prefer to get your head down and spend that time right out there in the middle. Oh, get an edge. Falling short of Saif Badr again. He's been in action from the last few deliveries, Saif Badr. Agha Ali Salman
Very technically correct, played it with soft hands. That has been the quality of this guy. Waqas Maqsood, he'll be needed. The only person who's got these 2 wickets in this inning that has fallen so far. And we were talking about, you just mentioned about Southern Punjab being on the top of the list of runs per over. That's for first 100 overs. Because it's 100 overs that the bonus points are available for. The first 100 overs of the inning. That is why they're on the top of the table, Southern Punjab. Nicely done. Flick of the wrist. Might not have the legs to go for 4, but they should surely come back for 3. They do. Gaining confidence with every delivery, Salman Ali Agha. Yeah, this is good running between the wickets as well. Right from the word go, we knew that there would be 3 runs available, and also getting them, rotating the strike. For the last 20 minutes or so, we have seen him facing some kind of trouble as far as footwork is concerned after being hit by Waqas Maqsood. But this is going to be good for his confidence and as well as footwork as well. Getting some runs going on the other end, away from the strike, and also spending some more time out there in the middle. One would definitely say that Southern Punjab has won this 1 hour in this session clearly. No wicket fallen. And now finally the runs are also coming thick and fast for SP. Oh, it's in there. Is it taken? Oh, falling short of the fielder. There was an opportunity, very slow to react. Muhammad Ali just took lots of time to react. He should have taken this. Considering the need to get rid of this partnership, it was in the air for a long time. Have a look at this. Timing not there by Umar Siddique. It took him ages to come to that. Look at that. Absolutely, he's going to kick himself for the next hour or so, or as long as Umar is going to be out there. The tick-off of the fielder, Muhammad Ali, was very slow, and had he run a bit faster and a quick earlier, he would have been clearly under the ball, just camping himself to get that easy catch, getting into him. But a big lie for Umar Siddique. Obviously now the runs are coming thick and fast. They would like to get use of every short ball which is on the offer, but this is not going to do any justice. The kind of bowling which was being started by Bilawal Iqbal, also by Waqas Maqsood, but the rub of the green is also not going their way. Driven again. Timing not quite there again. 1 more run added to the total. It did hit him high on the bat of Umar Siddique. If you can have a look at the action replay again. Hit him high on the bat. It was in the air for a long time. Even in my opinion, wicketkeeper have gotten easily, had he tried, must have gotten to that delivery, but Muhammad Ali very slow to react. Opportunities are very rare to come. If they come, you must capitalize on it, must get every opportunity. Disappointment clearly on Bilawal Iqbal's face. He's bowled well. Unlucky that it could not get the wicket of Umar Siddique. On the other end, this shot was not expected out of Umar Siddique, for the batsman who has spent more than 100 deliveries out there in the middle, also captaining his side and knowing that the kind of track is still in the offer, and if a wicket falls, Azam is going to come. He likes to go after the bowling. Amir Yamin is a useful all-rounder, but he definitely doesn't like to take a lot of time to settle in. That would have created some inroads into the batting of Southern Punjab by the central team. So he should take this opportunity with both hands and should be settling in to play long innings. Absolutely, and another name you missed out in that is Yusuf Babar. Left-hander batter from Okada, very solid in technique. End of 39 overs, 88 for 2 Southern Punjab. It's been 39 overs and we are yet to see a spinner in process. That's very rare sight. In the first 5 rounds we would see spinners coming in the first hour of the play,
And over here at State Bank ground, it's been 39 overs. We're yet to see a spinner. Ali Zaryab is one spinner included in Central Punjab, left-arm spinner, coming in this game in place of Zafar Gohar. That was a surprising decision in my opinion, because Zafar Gohar is into wickets. Is the third highest wicket getter in this tournament. Dropped in the side. Good call, very good running. Very good call by Salman Ali Agha. Yeah, I think that was that kind of the magic which was created by this green top wicket on the mind of Central Punjab, that they not only opted to bowl first but also just decided to go with the 4 strong bowling unit of the fast bowlers. Obviously the first session also belonged to them in a way until the first hour, but since then not only that luck is not going their way, and a drop chances, and also some good shot selection by Salman Ali Agha. So let's see how things are going to pan out and what is going to be this decision in the long run for them, because this is going to create the building blocks for the rest of the tournament. Shot one again. Some aggression by Mohammad Ali. Fresh from 9 wickets in the last game that he played in Faisalabad. Strong lad, runs in hard. Have a look at that smooth action and effort delivery. That's what you want to see from your fast bowlers. Commitment, giving 100% every time you bowl. That's what you associate with somebody like him. Mohammad Ali is into his 10th over, just 21 runs. But just the line, I think in the first session they were wayward after getting 2 wickets. Again, it's pretty easy to leave those deliveries outside the off stump. If you keep on bowling like this, it's very easy. Batters will play for 1 swing coming into the bat, and they can leave any delivery outside the off stump. That's where they have missed out, other than Waqas Maqsood. He's got 2 wickets because of his discipline, of his experience and bowling in the right areas. But that has been missing in the other 3 bowlers that included Ali and Bilawal Iqbal, who are operating at the moment. How do you like the weather of Karachi? I'm not asking him, I'm asking you, Ali. Obviously, when you are in Karachi, there are different weathers which you can see within a day. Slightly short ball being offered, and he banged on that opportunity. Umar Siddique off the back foot. What a delight to watch. Wonderful shot. Quick to judge the length, quickly onto the back foot. Played it safely for 4 runs. Nicely done. He's a very talented batter. Umar Siddique takes his time, and once he's set, he will definitely make this catch drop pay to central batters. He's moved to 36 runs. Salman Ali Agha just 5 runs away from his 50, much deserved 50 if he gets to those 5 extra runs. Fresh from 100 from Sri Lanka. It's coming from the middle of the bat now. They're gaining confidence. This is what happens on a pitch like this. The ball comes nicely onto the bat. If you don't get them early, if they get set, runs come. It's still a little help from the outfield. It's towards the thicker side. We've seen balls go towards the boundaries, but it's been stopped before the boundary line because of that thick outfield. Other than that, it's all beautiful. Wonderful conditions. You were asking me about the weather. I've just come last evening. Oh, nicely done again. Wonderful shot. Will be stopped because of that thick outfield. Only 2 runs to Umar Siddique. 40 overs gone and 95 for 2 Southern Punjab. Yeah, Ali, talking about the weather in Karachi, you start with a wintry morning. When you come into the afternoon, it is kind of a summer feeling, which is right now. And then you get that feeling of the autumn when the sun sets. And once again, it is kind of a winter feeling when you sail into the night. I know you're a night man, a night rider by all means. And good to have the most handsome man of Central Punjab in Karachi. So I wish you a very good stay over here in the coastal city.
I've been here since last evening and waiting for you to take us out someday for some nice food. We're searching for some nice food. We went outside yesterday alongside Shah Faisal, but could not find much. But yeah, in the meantime, in the first 100 overs, Northern have grabbed 43 wickets, which would definitely mean for them. But Southern Punjab has been playing a huge role in getting good points, not only by way of winning one game, but also by grabbing good bowling points which are available for the offer. Southern Punjab has got 39 wickets. Central Punjab are right at the bottom of the ladder, 29 wickets only for them, and also given away more than 1500 runs. So this is going to be the key moving into the business end of the tournament. oh, flashy aggression by Salman Ali Agha, because runs are coming now. They got to be very careful on this sort of a pitch. Got to be on focus with every delivery. Losing some focus here, Salman Ali Agha. We were just looking at the graph early on. Central Punjab being on the last position of that graph because of their inexperience in their bowling lineup. They've mainly relied on Bilawal Iqbal and Waqas Maqsood. It was a very strange decision to let go of Naseem Shah, who was in their side last season. He's moved to Southern Punjab. Not much pace available for Central Punjab in their lineup. They're all medium pacers. If you talk about Bilawal Iqbal, a medium pacer. Waqas Maqsood is also considered as a medium pacer. Muhammad Ali also. So no real threat. But this is a good opportunity coming here on pitches like these. These fast bowlers should get wickets. We can give them a little bit of margin playing on slow low pitches of Qazafi Stadium or Faisalabad pitches. But this is good conditions. This is where they should be looking to make the most of this opportunity. Bowled, nicely done. 1 run taken by Salman Ali Agha. Now moves to 46 runs, and what a timely inning. What a wonderful partnership, Akhil, this has been. At a time when they needed it the most, they have delivered. Yeah, now this is going to be a stern test of the captaincy of young Ali Zariab. In an hour or so, we will be moving into the final session of the evening, and traditionally, the sea breeze in Karachi during the time of around Asr picks up, and that usually gives the bowling side some kind of an advantage, and we have seen a cluster of wickets in many first-class games in the final session of the day one in the first-class game. So it is going to be key. He keeps his head down as far as this second session is concerned, not to allow the batsman to score runs freely, which we have seen in the previous few overs or so. Not bowl too many short deliveries, and then fancy their chances to grab at least a couple of wickets in the final session of the evening to keep themselves into the game, because remember, it was his decision to bowl first, and if they run away with a total of around 250 to 300, Southern Punjab, they can definitely think that they would be somehow out of the game. So they will have to grab a few wickets moving into the final session of the evening. Yes, very good point. They decided to bowl first on this pitch, which every captain would do. We were so happy being the commentators when you looked at the pitch that finally we might see a result, Akhil. We are coming in Karachi after lots of draws in Punjab. Just one result. Oh, again, I thought it's come off the glove. But lucky Salman Ali Agha. So yes, if I definitely agree with you on this point, that if from here Southern Punjab can get to the score of 250 or 300, that will be a moral victory for them. And Central Punjab will definitely be disappointed. Who've given away lots of runs to buy a wicket. As we saw in the graph, they were in the last when it comes to runs and wickets taken. I wonder if Southern Punjab had bowled first, it would have been different, because they have got bowlers who would like bowling on this track, who likes bowling up to the batters, swings the ball from that good length. 41 gone, 97 for 2 Southern Punjab. The partnership now 82 runs, and have a look at the balls they've taken for that. 204 deliveries taken for 82 runs.
It's about consuming the time. Early on when they came together, it was testing times. The ball was seeming, swinging, difficult conditions. They held their nerves, showed character, and now they've done the hard part. It's runs available for them. Just need to be sensible, Akhil. Yeah, you were talking about having a result. If you were in the UBL Sports Complex, you would have got a day off because I'm sure that that game, irrespective of who is going to win that one, is going to finish well within the 4 allotted days, or maybe within 3 days. And we've seen your brother doing scuba diving during the World T20, so that might be one option, but that is quite far away. So you need an extra day or 2 off for that to be completed outside Karachi. And he's not been well since that day, Akhil. Really? Okay, so that is some beans which we have spelled, really. Yeah, he's not feeling well. He's gone to Australia though, and he was hospitalized the last evening. And wish him a speedy recovery. But I hope that it has nothing to do with scuba diving, is it? I hope not. I hope not. Yeah, it was really tough. And talking about these players or the organizers or the broadcasters staying away from their families into this bubble life, it has been always tough. Nicely done, beautifully done. Wonderful shot by Umar Siddique, timing it right in the gap. Placement perfect, result perfect, 4 runs. Yeah, riding on the top of the bounce. Left-hander Umar is now in total control and command of his game. Once again shot, not too away from his body, but perfectly placed by the left-handed batsman into the gap for 4 runs. No stopping to that one. Another boundary for Umar Siddique. His second boundary within 2 overs. So that tells you the story that he has been now rollicking in SBB Sports Complex. Both the batsmen now in their 40s. Great partnership. This partnership is of the highest quality because of the times they were testing when they came together, and they've done a great job. Umar Siddique on 43, Salman in 46. Not much difference in the deliveries faced. Right in the middle of the bat. Very committed cricketer, Umar Siddique, very talented. He's got an added responsibility of being the captain. He's a wicketkeeper too. Very solid player. Good boy. Not happening at the moment for Central Punjab. I think their follow-up bowlers, other than Waqas Maqsood, they've been disappointed. They've not used this pitch accordingly. They should have gotten more wickets, but the line has not been right. They've given away so many deliveries that were easily negotiated and let it go to the wicketkeeper. I think that's where they have lacked, this Central Punjab bowlers. In the last season, also remember the Central Punjab was pretty much down and out, but with the arrival of Hassan Ali into the business end of the tournament, they injected a new life. And not only by way of his bowling, but the way he enjoys the game. He led his team into the final and ultimately were the joint winners of the tournament. Also contributed a lot with his batting. I think they would be needing some kind of that X factor which could put them in motion in this business end of the tournament. Okay, our captain did change. Last year it was Azam Ali and he was replaced by Hassan Ali, and over here also he's been replaced by Ali Zarab, and who knows, luck might change after this. They travelled to, but most of the games were played at National Stadium, Karachi. We're going to let it go, this one too. 42 overs gone, 101 for 2, Southern Punjab.
101 2 विकेटों के नुकसान पर 42 ओवर से खेल मुकम्मल हुआ। खाने के वक्फे के बाद 1.5 घंटे का खेल हुआ है लेकिन कोई विकेट नहीं गिरी और उमर सिद्दीक और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया है। सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सकी इस सेशन में अब तक। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आ गए हैं अली सलमान। खुशामदीद अली। थैंक यू फैसल। 16 ओवर्स का खेल हुआ इस सेशन में, ओवर रेट भी कम रहा है और 44 रन का इजाफा हुआ है लेकिन विकेट कोई नहीं मिली सेंट्रल पंजाब को। जी चांसेस मिले, उसको अवेल नहीं कर सकी सेंट्रल पंजाब। एक कैच का चांस मिला था लेकिन मोहम्मद अली इसको कैच नहीं कर सके। काफी रूम मिल गया था, हाथ चलाने का मौका मिला और 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक सलमान अली आगा की, एक और निस्फ सेंचुरी यहां स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। 2 सेंचुरियां और अब 2 निस्फ सेंचुरियां बना ली हैं। शानदार बैटिंग। जी हाँ, काफ़ी लकी रहा ये ग्राउंड सलमान आगा के लिए। इससे पहले 2 सेंचुरी इसी ग्राउंड पर स्कोर कर चुके हैं और अब एक और निफ्ट सेंचुरी यहाँ पर स्कोर करने में कामयाब हुए। 50 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं। काफ़ी लकी भी रहे कि कई गेंदें उनके जिस्म पे लगी, पाँव पे लगी। ऑप्शन से काफ़ी बाहर गेंद थी और 4 रन ज़रूर हासिल किए उन्होंने, लेकिन खेले बड़े ख़तरनाक अंदाज से थे क्योंकि गेंद ऑप्शन से काफ़ी बाहर थी और ऑफसाइड से बाहर गेंद को ये चेस करने जाते हैं। 109 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से ये निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। काफी तवील कामद हैं, इनकी रीच काफी अच्छी है। तो आपने सही कहा, बॉडी से दूर खेले थे लेकिन अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन दिखाई और अब काफी सेट हो चुके हैं इन गेंदों को। जिस तरह भी उन्होंने इनिंग्स के आगाज में वो काफी हद तक छोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन अब शायद उन्हें लग रहा है कि बॉल उन्हें इतना अच्छा नजर आ रहा है कि वो बाहर वाली बॉलों पर भी जा सकते हैं। दोनों के दरमियान अब तक 90 रन की पार्टनरशिप, 213 गेंदों का सामना किया। 15 के स्कोर पे यकजा हुए दोनों उस वक्त जब इमरान रफीक को कैच किया विकेट कीपर जुनैद अली ने वकास मकसूद की गेंद पर, और उसके बाद से अब तक ये पार्टनरशिप दर्दसर बनी हुई सेंट्रल पंजाब के लिए। ये इनिंग्स का इनका खासा रहा है, सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं ज़्यादातर। स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी रही है। अब देखिए रन रेट तो 2.46 का है पूरी इनिंग्स का, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो कॉम्बिनेशन है स्ट्राइक रोटेशन की वजह से भी उन्होंने काफ़ी बॉलर्स की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब किया। वकास मकसूद अब तक के वाहिद कामयाब बॉलर कि जिन्होंने गिरने वाली दोनों विकेटें हासिल की। बिलावल इकबाल कोशिश कर रहे हैं गेंद को आगे गिराने की। खुकबरा बॉल है अली और ज़्यादा इसकी सीम ठहरती नहीं है, हालांकि ग्रीन विकेट है लेकिन फिर भी उस तरह की मदद दूसरे सेशन में नहीं मिल रही। लेकिन बॉलर्स की कंसिस्टेंसी पर भी क्या सवालिया निशान होगा। जी हाँ, जैसे जैसे जो है वक्त गुजरता जाएगा, पिच को धूप लगती जाएगी, ड्राइनेस आती जाएगी और जो पिच का जो मॉइस्चर जिसका इब्तिदा में फ़ायदा उठाया वकास मकसूद ने वो ख़त्म होता जाएगा। अब्दुल रज़्ज़ाक सेंट्रल पंजाब के हेड कोच मुंतज़िर हैं कब उनको जल्दी ब्रेक थ्रू मिले। आसान सी गेंद थी, इसको लेफ्ट किया, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा 105 पर 2। ग्रीन टॉप विकेट थी सुबह में और मॉइस्चर भी था, लेकिन सेंट्रल पंजाब की जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ रही है पूरे सीजन में वो काफ़ी सवालिया निशान उस पर उठे हैं और कहीं भी वो ज़्यादा रन थ्रू करने में कामयाब नहीं हुए टीमों को। पहले तो खैर कंडीशंस ही ऐसी नहीं थी लेकिन यहाँ तो ज़रूर उन पर उनकी अहलियत पर सवाल उठेगा।
जी हाँ, ट्रिपल सेंचुरी जो स्कोर हुई वो भी सेंट्रल पंजाब के खिलाफ ही स्कोर हुई सिंध की जानिब से डे नाइट मैच में। और एहसान अली वो पहले प्लेयर बन गए पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास हिस्ट्री के जिन्होंने डे नाइट मैच में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। इस वक्त सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सिंध की टीम बलूचिस्तान में के खिलाफ यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच खेल रही है। पहली मरतबा वकास मकसूद का एंड चेंज किया गया है। बाएं जाने वाले एंड से अब आए हैं। सुबह उन्होंने मुखालिफ एंड से बॉल किए थे नए बॉल के साथ और दूसरे स्पेल में भी, लेकिन अब तीसरे स्पेल में इस एंड से आगे हैं। देखते हैं कि कुछ मदद हासिल कर पाते हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा जो है विकेट टेकिंग बॉलर नजर आए हैं सेंट्रल पंजाब की लाइनअप में। अच्छी गेंद, इसको खेलने चले गए खतरनाक अंदाज से उमर सिद्दीक, रश ऑफ ब्लड का शिकार हुए और खुशकिस्मत रहे कि गेंद बल्ले का एज लेने के बाद नहीं गई विकेट कीपर जुनेद के ग्लव्स में। ड्राइव पर उकसाया, यही वो लेंथ है जिससे बैट्समैन जो हैं वो लालच में आते हैं। हालांकि काफ़ी बाहर बॉल था, लेकिन क्योंकि इतना वक्त गुजार चुके हैं, जैसे पिछले ओवर में भी अली ने कहा कि अली सलमान बॉडी से दूर खेल गए थे, सलमान अली माफ़ कीजिएगा। और उमर सिद्दीक भी इस मरतबा बॉल को आगे देखा तो वो ललचा गए और खुशकिस्मत रहे। गुज़िश्ता शॉट को देखते हुए आप देखेंगे कि फील्ड प्लेसमेंट जो है वो तब्दील की है और अब 2 स्लिप के साथ एक गली और अब तीसरी स्लिप भी लगाने का फैसला किया। पॉइंट पे एक फील्डर रखा है तो तब्दीली की है फील्ड में, ये देख सकते हैं आप लॉन्ग शॉट में। 3 स्लिप एक गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, ऑफ साइड की फेल और स्क्वायर अंपायर के साथ मौजूद है फील्डर। कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर अटैम्प्ट कराने की कोशिश करें, ड्राइव करें, फ्लैश करने जाएं और गेंद बल्ले का आउटर एज लेने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में हो। एक बैट्समैन ने निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, एक बैट्समैन निफ्ट सेंचुरी करीब है और अगर दोनों बैट्समैन के और बॉलर के शर्ट नंबर देखें तो 50 तीनों ही क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, और एक बैट्समैन को 50 करता देखकर दूसरे बैट्समैन को लालच भी आई कि मुझे भी जल्दी से पहुंचना है इस संगे मील तक। 7-2 की फील्ड है, 7 फील्डर्स ऑफ साइड पे हैं इस वक्त। इस मरतबा वापस अपने डिसिप्लिन के अंदर आए और बॉल को जाने दिया आराम से। ये देखिए 58 नंबर की जर्सी पहनी है वकास ने और 53 और 50 नंबर की जर्सी दोनों बैट्समैन पहने हुए हैं। ये 50 नंबर की उमर सिद्दीक ने पहनी है और 53 नंबर की जर्सी पहनी है सलमान आगा ने। तो इस तरह इस वक्त जो पिच पे कॉम्बिनेशन है वो तीनों ही 50 के लगभग और क्रॉस कर चुका है। इन नंबर्स की भी बड़ी अहमियत होती है शाह फैसल, और प्लेयर्स के कुछ ये लकी नंबर होते हैं। शॉर्ट बॉल, किसको कट किया, फील्डर के ऊपर से गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी रूम मिल गया था और जैसा कि लग रहा था इस ओवर में कि उमर सिद्दीक जो हैं अब अपने हाथ खोलने के लिए तैयार हैं। इस मरतबा उन्हें बॉल मिल गई और काफी लूज बॉल थी। वकास मकसूद ने ज्यादा खराब बॉल किए नहीं इस इनिंग्स में, लेकिन ये काफी खराब बॉल था, शॉर्ट एंड वाइड, और इसका पूरा फायदा उठाया, जोरदार फ्लैश किया। जैसा आप कहते हैं कि जब आप फ्लैश करें तो फ्लैश जोर से करें, अगर एज भी लगेगा तो वो स्लिपर्स के ऊपर से निकल जाएगा, और पूरा फायदा उठाया। यही होता है जब आप सब्र से अच्छी बॉलों का दिफा करते हैं तो फिर जरूर आपका वक्त भी आता है। बॉलर्स अपने दूसरे और तीसरे स्पेल में थकने लगते हैं और बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन उसी का फायदा उठाते हैं। ओवर का इख्तिताम 109 पर 2। सेंट्रल पंजाब ने 1622 रन दिए, महज 29 विकेट हासिल की और एवरेज अगर देखें तो 55.93, जो सबसे सेकंड पे है, थर्ड पे है बल्कि बलूचिस्तान 60 की एवरेज के साथ, उसके बाद 57 की एवरेज के साथ सिंध और फिर सेंट्रल पंजाब। और आप 50 के हिस्से का जिक्र कर रहे थे, सेंट्रल पंजाब की एवरेज भी 50 से ज़्यादा है, 55.93। और जो हम बात कर रहे थे कि इनकी बॉलिंग ने स्ट्रगल किया है पूरे सीजन में, और ये इस बात का सबूत है कि वो इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर हैं। इस विकेट पर भी अगर वो रन थ्रू नहीं कर सकेंगे तो यकीनन उनकी मैनेजमेंट काफ़ी मायूस होगी। और अब स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया है, अहमद सफ़ी हैं
इनफैक्ट ये शर्ट ये हुसैन की पहने हैं, अहमद सफ़ी है ये, लेकिन शर्ट ये हुसैन की पहने, हुसैन तलत की आई थिंक ये शर्ट पहने, लेकिन ये बॉलर अहमद सफ़ी है। ये क्योंकि अभी अभी श्रीलंका से वापस आए हैं पाकिस्तान शाहीन्स के साथ और स्क्वाड को ज्वाइन किया है। स्पिन काफी दिलचस्पी हो सकती है इस विकेट पे, क्योंकि बजायर तो काफी घास है, हरी भरी विकेट है। और आते ही आड़े हाथों लिया, पेस का अच्छा इस्तेमाल किया और 4 रन हासिल किए सलमान अली आगा ने। लेग पे गिरी हुई गेंद थी और उसको बड़े आसानी के साथ सेव किया, कोई फील्डर वहां पे प्लेस नहीं किया था इस स्ट्रोक को फील्ड करने के लिए। और 4 रन यहाँ पर सलमान आगा के नाम, अहमद सफ़ी कि जिनको आज फौकियत दी गई है जफर गौहर पर। और माजी में बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं वो फैसलाबाद के खत्ते से सामने आए। अहमद सफ़ी इस वक्त हमें एक्शन में नज़र आ रहे हैं। इससे पहले मुझे याद है एक SNGPL से खेलते थे सदाकत, जो नॉर्दर्न से भी ग्रेड 2 आई थिंक सेकंड 11 से खेले, इस वक्त सेकंड 11 की नुमाइंदगी कर रहे हैं सदाकत, कि जिनको प्यार से काका के नाम से पुकारते थे। वो बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। जाहिद एक स्पिनर थे इनके, वो बड़े ज़बरदस्त थे। इसके अलावा अदनान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहला सीज़न खेले, खालिद, वो बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो 3-4 लेफ्ट आर्म स्पिनर आगे पीछे बड़े ज़बरदस्त आए। और अहमद सफ़ी की बात की जाए तो सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी में पहली मरतबा उनको देखा गया और फिर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट में भी नज़र आए। और जैसे मैंने कहा कि अभी हाल ही में ये शाहीन्स के टूर के साथ आए हैं। और लेकिन पूछूंगा इस बॉल के बाद सलमान से कि जफर गौहर जो इस सीज़न में 17 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और उनकी जगह इनको लाया गया है इस सिलेक्शन पर। काफ़ी लोगों ने जो है वो हैरत का इजहार किया है कि जफर गौहर बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। सलमान क्या कहेंगे आप इस बारे में? ओवर यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुंचा 113 2 विकेटों के नुकसान पर। सेंट्रल पंजाब का बॉलिंग कार्ड 2 विकेटों के साथ अब तक नुमाया रहे वकास मकसूद। अब तक 5 बॉलर आजमाए सेंट्रल पंजाब के कप्तान जरियाब ने, और सिवाय वकास मकसूद के सभी विकेट लेस रहे। 113 2 विकेटों के नुकसान पर 45 ओवर से खेल के बाद। रन रेट तो काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जिस तरह पहले सेशन में अमर बात कर रहे थे कि ये विकेटें हासिल करने वाला पिच है, यहाँ पे रन रोकने का इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब 2 सेटल बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं। अब पार्टनरशिप तोड़नी मुश्किल लग रही है यहाँ पे सेंट्रल पंजाब को। जो कंट्रोल उन्होंने हासिल किया था पहली 2 विकेटें लेकर, वो तकरीबन अब खो चुके हैं वो। उमर सिद्दीक एक स्ट्रोक के फासले पर है अपनी निफ सेंचुरी से। आप कंपैरिजन कर रहे थे अहमद सफ़ी का और जफर गौहर का, तो मेरा अपना ख्याल है क्योंकि अभी रिसेंटली शाहीन के स्क्वाड से वापस आए, तो कॉन्फिडेंस देने के लिए अहमद सफ़ी को यहाँ शामिल किया गया और रेस्ट दिया गया है जफर गौहर को। वरना जफर गौहर की सलाहियतों से कोई इनकार नहीं, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, प्रूवन क्रिकेटर हैं जफर गौहर। और मैं जिन लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करता फैसलाबाद की, इमरान खालिद था उनका नाम, कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब पहला सीज़न जीता, फैसलाबाद ने T20 में कामयाबी हासिल की, तो बड़ा वाइटल रोल रहा था इमरान खालिद का। हवा में बॉल लेकिन गैप में चला गया, फिर उसी ड्राइविंग लेंथ पर ललचाया तो वकास मकसूद ने, लेकिन इस मरतबा किस्मत ने साथ दिया उमर सिद्दीक का और अपनी शानदार निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली उन्होंने। जी हाँ, तो स्कोरर का अगर स्कोर बोर्ड ना भी दिखाए, सिर्फ इनकी शर्ट दिखा दे, तो जब भी अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने 50 रन मुकम्मल कर लिए।
20वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी है उनकी और 11वीं सदर्न पंजाब के लिए। और इस स्टेट बैंक के ग्राउंड पर उनकी ये दूसरी नेफ सेंचुरी है। देखिएगा काफी बॉडी से दूर अपना खेले और लेकिन खुशकिस्मत रहे, बॉल गैप में से निकल गई। ज़्यादा पूरा एतमाद स्ट्रोक नहीं था, लेकिन 12 रन्स की अहमियत है। जब सेंचुरी मुकम्मल की, मुश्किल वक्त उन्होंने इस वक्त गुजार लिया है जब इब्तिदा में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी। और शॉट के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप भी मुकम्मल हो गई है। 102 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 231 गेंदें इन्होंने खेली हैं। कुछ देर में पहले मैं सुन रहा था, आपने कमेंट किया कि कुछ खेली और कुछ जेली। इस विकेट पर ऐसा होता है और उसका जो भी उन्हें लक ने उनका साथ दिया थोड़ा बहुत, उसका भरपूर फायदा उठाया दोनों ने और इस चीज का क्रेडिट जरूर इन दोनों को जाएगा। बैकफुट पे खेले, पॉइंट को थोड़ा सा पीछे रखा है सर्कल से बाहर। अच्छी प्लेसमेंट थी यहाँ पर, रन बनाने से बाज रखा। और जो पिच है ट्रेडिशनली जो ये फास्ट बॉलों को इब्तिदा में सूट करती है। मैंने काफ़ी डिपार्टमेंटल क्रिकेट इस पिच पे खेली है, इस विकेट पे खेली है। इब्तिदा में फास्ट बॉलों को काफ़ी मूवमेंट मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसकी जो डैम्पनेस है वो कम होती जाती है और फिर बैट्समैन के लिए जो है पिच साजगार होती जाती है। 102 रन की पार्टनरशिप है इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान। 15 के स्कोर पे ज्वाइन किया था इन दोनों ने और अब 117 है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अली जो मूवमेंट है वो तो यहाँ कम होती जाएगी। बाउंस के बारे में बताएं कि जब ये मॉइस्चर जाता रहता है तो इस विकेट का बाउंस फिर कैसा होगा। अच्छी फील्डिंग थी इस मौके पे, अपने दाएं जाने डाइव करते हुए रन बनाने से लेकिन बाज नहीं रख सके। क्योंकि सुबह में जब विकेट देखी तो इस पे मॉइस्चर था, जब ये मॉइस्चर खुश्क होगा तो क्या बाउंस भी उसी तरह बॉलर्स को मिलेगा। ये देखिएगा एक्शन रिप्ले, अच्छी तरह डाइव लगाते हुए गेंद को रोक लिया। पूरी तरह तो रोक नहीं सके लेकिन एक ही रन हुआ। देखिए शाह फैसल, मैं थोड़ा सा इस फील्डिंग से मुतासिर नहीं हूँ। अगर आप रीप्ले देखेंगे, अगर आप फ्रेम टू फ्रेम देखेंगे तो बहुत देर में डाइव की है यहाँ पे। आप देखिएगा अगर हम इस रीप्ले को दोबारा देखें तो ये रन बड़ी आसानी के साथ बचाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मोहम्मद अली अभी तक हम आहंग नहीं हुए। ये देखिए, यहां से देखिए कितनी दूर उन्होंने जो डाइव की है, काफी टाइम था और लेट मूवमेंट के साथ डाइव की, वरना आसानी के साथ अगर ये चलते हुए भी जाते तो ये आराम से एक रन बचा सकते थे। बिल्कुल ज्यादा बेहतर एंटिसिपेशन करनी चाहिए थी। 118 पर 2। एक 118 पर 2। सेंट्रल पंजाब के कप्तान तो नौजवान हैं अली जरियाब, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास इस वक्त पिच पे, जिनसे वो यकीनन कुछ ना कुछ मदद चाह रहे होंगे। कोई इंस्पिरेशन इस वक्त चाहिए सेंट्रल पंजाब को। ये पार्टनरशिप जो है काफ़ी तवालत इख्तियार कर चुकी है और ऐसा लगता है कि उनके पास ज़्यादा जवाब अब बचे नहीं हैं, ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। लगता है सब कुछ उन्होंने यूज़ कर लिया है। और ये हमने देखा इस सीज़न में सेंट्रल पंजाब की जो टैक्टिक रही है कि ये गेम को ड्रिफ्ट होने देते हैं, ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते नहीं गेम को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तो बहुत जल्द है ये कहना, लेकिन कुछ आसार नज़र आ रहे हैं ऐसे ही। इस सीज़न में लेफ्ट आर्म स्पिनर से बड़ा उम्दा परफॉर्म किया। जफ़र गौहर की आप बात कर रहे थे उससे थोड़ी देर पहले। इसके अलावा अली उस्मान जो सदरन पंजाब के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, साथ साथ असगर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया इस सीज़न में। नबी तुली गेंद अहमद सफ़ी की जानिब से, और जिस नाम में सफ़ी है तो मिस्ट्री तो फिर उसके नाम में ज़रूर आएगी। मिस्ट्री उसका खासा होगी। जहाँ जहाँ अहमद सफ़ी का जिक्र होगा इब्ने सफ़ी ज़रूर याद आते हैं, जो पाकिस्तान में जासूसी नावल्स थे, मिस्ट्री के मुअज्जिद समझे जाते हैं, पायनियर समझे जाते हैं।
और उनकी मशहूर ज़माना इमरान सीरीज जूलिया, जोसेफ, जवाना, ये सब उनके किरदार हैं जो आज तक लोगों के अज़हान में मौजूद हैं। बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त जासूसी का लिटरेचर क्रिएट किया अपने सफ़ी मरहूम ने। कुछ क्रिएट करना है सेंट्रल पंजाब को यहाँ पर, क्योंकि इतनी ग्रीन विकेट पर जब वो ये स्कोर सजा देखेंगे तो यही इनके हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी होगा। ये नवीद यासीन है, स्टेट बैंक से खेलते रहे माजी में और अनलकी रहे, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम के दरवाजे में दस्तक दे रहे थे और फिर वहां से ये लाइमलाइट से दूर हो गए। और हमने इस पूरे सीजन में देखा है कि इन्हें सदर्न पंजाब से भी ज्यादा मौके नहीं मिले। 118 पर 2। अली चाय के वक्फे में सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। अगर आप अब्दुल रज़ाक की जगह हो तो जब टीम वापस आएगी क्या मशवरा आप देंगे कि इस गेम को टर्न अराउंड करें? मैं कहूँगा चाय जल्दी पिएं और फिर मैच में वापस आएं। नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि लाइन और लेंथ को मेंटेन करें। आप बात करते हैं पिच के बाउंस की। अब आप देखें कि जो बाउंस है उस हाइट पे कैरी नहीं हो रहा है। इब्तिदा में आपने देखा होगा कि अपने चेहरे के सामने जुनैद अली ने गेंदे कलेक्ट किए अपने दोनों पाम्स को खोलते हुए। अब उस बाउंस पे, उस हाइट पे बॉल नहीं जा रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये देखें क्या वो इतना वो बाउंस नहीं मिल रहा जो इब्तिदा में बाउंस था। अब ये ऐसा बाउंस है जो मेजरेबल बाउंस है। आप इसको मैनेजेबल बाउंस है। इनफैक्ट इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, वरना इससे पहले आप देख रहे थे बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। वकास मकसूद अपने एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि सेंट्रल पंजाब की जो सीज़न का एक खासा रहा है कि ये गेम को ड्रिफ्ट होने देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं करते। अभी पूरा सेशन गुजर गया के पास मोहम्मद अली हैं जो अच्छे पेस बॉलर हैं और शॉर्ट पिच बॉल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा हमें शॉर्ट पिच बॉलिंग का एक बैराज देखने को नहीं मिला कि 15-20 मिनट वो मुसलसल अटैक करें बैटर्स को। अब फ्रंट फुट पे काफ़ी कंफर्टेबल होते जा रहे हैं बैटर्स। कोई इस तरह की टैक्टिक देखने में नहीं आई। पूरा सेशन गुजर गया। और अभी आपने स्क्रीन पे शॉट देखा हमारे कमेंट्री बॉक्स का, मुझे और शाह फैसल को देखा। तो शॉट को देख के हरगिज़ ये मत समझिएगा कि कमेंट्री बहुत लुक्रेटिव जॉब है, क्योंकि हम ऐसा लगता है हम दोनों को देख के कि एक बहुत रिलैक्स जॉब है ये, क्योंकि जिस तरह से हमने अपना वेट बढ़ाया हुआ है तो ऐसा लगता है बहुत रिलैक्स जॉब है, लेकिन इतनी रिलैक्स है नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा लिया आपने। काफ़ी ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ की तरफ, और वेट बढ़ने के आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। लेफ्ट ऑफ से बाहर ये गेंद थी, इसको आसानी के साथ लेफ्ट किया। सलमान आगा ज़्यादा बेहतर निक में नज़र आ रहे हैं, हम आहंग हो चुके हैं पिच से, बाउंस से, और अब तक काफ़ी बेहतर इन्होंने कम बैक किया। इब्तिदा में थोड़े परेशान ज़रूर नज़र आए, शेकी नज़र आए, लेकिन अब काफ़ी काम, कंपोज, ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, और पार्टनरशिप में यकीनन उमर का जो रोल है वो भी काफ़ी क्रूशल है। जैसे मैंने कहा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, स्ट्राइक रोटेशन ने बॉलर्स को मुसलसल परेशान किए रखा। और इस विकेट पे स्लो डिलीवरी, वाइट बॉल क्रिकेट का असर नुमाया है अगर बैट्समैनों पर भी तो बॉलर्स पर भी। जी हाँ, ये विकेट जो है वो सूट करती है वकास मकसूद को। इस तरह मैंने पहले भी अपने स्पेल में कहा था कि 2017-18 के सीज़न में इन्होंने वापडा के लिए खेलते हुए 9 विकेटें एक इनिंग में हासिल की। बड़ा माइलस्टोन है जो इन्होंने हासिल किया, बड़ी अचीवमेंट है इस ग्राउंड पर वकास मकसूद की अगेंस्ट KRL। और इनकी उम्दा बॉलिंग के बायस KRL महज 95 रन बनाने में कामयाब रही, और उसमें से भी 40 रन उस वक्त KRL के लिए खेल रहे थे सेंट्रल पंजाब के विकेट कीपर जुनैद। 40 रन जुनैद ने स्कोर किए थे। तो काफ़ी खुशगवार यादें हैं वकास की इस ग्राउंड से। और ये डायरेक्शन लूज करके विकेटकीपर की पहुंच से भी बहुत बाहर बॉल था। बाई के रन जरूर दिए जाएंगे, लेकिन जुनैद के पास कोई मौका नहीं था। जिस एंगल से वकास मकसूद आए, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, वाइड ऑफ द क्रीज, बिल्कुल मौका नहीं था।
काफ़ी बाहर गेंद थी, पड़ने के बाद मजीद मूवमेंट मिली और कोई मौका नहीं था यहाँ पे कि जुनैद इस गेंद तक पहुँच जाते। बदकिस्मती रहे कि ये बाई उनके नाम के आगे लिखी जाएगी। 122 2 विकेटों के नुकसान पर। एक 122 पर 2 और शायद ये चाय के वक्फे से पहले का आखिरी ओवर होगा। पेनल्टी ऑफ बैटिंग हैज येट टू कम। इसके बाद यूसुफ बाबर अच्छे बैट्समैन हैं, उसके बाद आमिर यामीन है, आजम खान, इमरान रंधावा अच्छे बैट्समैन हैं अभी सदरन के पास। वही जिस स्ट्राइक रोटेशन का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से खेला और फील्डर जो है वो बैकफुट पर पाए गए। अच्छी रनिंग का मुजाहरा। पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात का बाइस बनते हुए 1 2 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और जिस तरह हम फिगर्स की बात करते हैं, आदात की बात करते हैं, अगर किसी को जाने का कहना हो तो कहा जाता है कि 1 2 3 हो जाओ। अब क्या 1 2 3 पे कोई विकेट गिरेगी? अगर आप सेंट्रल पंजाब के हैं तो जरूर उम्मीद करेंगे, क्योंकि विकेट आ जानी चाहिए। जितनी देर हो गई है सेंट्रल पंजाब बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो ढीले ढाले से हुए और ऐसा होता है जब काफी देर तक विकेट ना मिले। हम नंबर्स की बात कर रहे थे और प्लेयर्स की जर्सियों की बात करते हैं। कुछ लकी नंबर होते हैं, कुछ डेट ऑफ एयर के हिसाब से, कुछ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखते हैं, कुछ अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से लिखते हैं। तो शाह फैसल पाकिस्तान के एक प्लेयर थे, उनके एक ज़माने में एक सेलुलर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने डायलिंग कोड अपनी शर्ट पे लिखवा लिया था। ये अच्छा टूल है पब्लिसिटी का। मुझे याद है कि शाहिद आफरीदी हमेशा 10 नंबर की जर्सी पहनते थे और कुछ हलकों ने तो ये भी कहा कि उनके रिटायरमेंट के बाद उस जर्सी को रिटायर कर दिया जाए। इसका मतलब है कि वो नंबर दोबारा किसी और प्लेयर को नहीं मिलेगा। ये एक तरह का खिराज तहसीन होता है। और घर की बात लेकिन घर में ही रही, वो जर्सी अब मिल गई है शाहीन आफरीदी को। इसी दौरान 49 ओवर्स भी मुकम्मल हुए, चाय का वक्फा भी हुआ और मैंने कहा था कि आदाद में अगर 1 2 3 लिखा हो तो चले जाने को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सबके सब चले गए 123 2 विकेटों के नुकसान पर। और सब जा तो जरूर रहे, लेकिन सेंट्रल पंजाब जो है वो काफी मुस्तरब होंगे, लेकिन सदर्न पंजाब का खेमा काफी खुश होगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप हुई सलमान अली और उमर सिद्दीक के दरमियान 108 रन की अटूट पार्टनरशिप है, अभी भी चल रही है और पूरा क्रेडिट देना होगा इन दोनों को। बहुत ही शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। सेशन में 24 ओवर्स हुए, ओवर रेट कदरे स्लो रहा, 70 रन बने और सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई विकेट नहीं गिरी। रन रेट रहा 2.92, अंडर 3 रहा रन रेट यहाँ पर सदरन पंजाब का।
Welcome back once again to State Bank Cricket Stadium here in Karachi for the round 6 game between Southern Punjab and Central Punjab. But this is how the scorecard looks like at the moment for Southern Punjab after they were put in to bat by the Central Punjab captain. Tayyib Tahir was the first one to go, who was caught by Saif Badr or Waqas Maqsood, scored 5 runs. Imran Rafiq could only manage 2 runs. He was caught well by Junaid Ali of Waqas Maqsood. And since then, it's been these two players, this partnership of 108 runs between Umar Sadiq and Salman Ali Agha. Umar Sadiq, the captain, 53 not out, with Salman Ali Agha on 54 not out. 123 for 2 Southern Punjab. 5 bowlers used by Central Punjab. Just one bowler who could manage 2 wickets, Waqas Maqsood, 2 wickets for 32 runs. And other than that, there's nothing really to talk about. Just 1 over for the spinner Ahmed Safi Abdullah, 3 overs for 5 runs. They've been disappointing. With the line and length, I can talk about, got Amr Saeed alongside me. Amr, if you talk about the bowling of Central Punjab, they've been disappointing other than Waqas Maqsood with their length and line maybe. Yes, definitely. I would have liked to see more wickets. Here, State Bank ground. Let's see the wickets. That one. Outside edge. Well taken at 3rd slip. And once again, this one played away from the body. Edge taken by the keeper. That was a good spell. A good little spell, I would say, for Central Punjab, because after that they have actually missed the plan. I think they have bowled accurately, they haven't given too many runs away, but on a track like this, and especially once they had put the opposition into bat, they would also have liked a couple or most probably 3 more wickets at least in the 2 sessions that they have bowled so far. But again, that defensive mindset is very, very visible. Even on this track, they're not willing to give away free runs to buy or get those wickets, which is, yes, I would say a bit disappointing. Absolutely 100% accurate. I think they've missed the plan. They've not bowled at the right line and length. Earlier we saw that Waqas Maqsood was the only one who was bowling on proper channel, and you can see the result. Already has gotten 2 wickets. And no doubt, nothing taking away from these 2 batters, Umar Sadiq and Salman Ali Agha, who've shown courage, who've shown patience, who've shown that they're technically very correct, very sound. And they have got runs now. It's getting easier and easier to bat on. And in the last session, we saw no wicket fail. And the runs were coming by the end of the session. If you talk about the runs, kept coming. You can see 54 runs for Agha Salman and 53 not out is Umar Sadiq. The partnership is 108 runs off 252 deliveries. They've taken their time, they're well set, and from here on they should look to get to that 3-figure mark, both of them. Yes, definitely. An excellent partnership for their team so far. And especially, this is more important, as I have emphasized before as well, that it is very important for them to capitalize on this lovely little session they have played between lunch and tea. Now they have to capitalize on it, because even now, if you see the bowlers, if they bowl that line that, you know, a bit ahead or a bit fuller length, they do get a bit of help still. So if they get out here, it won't be too easy for the new batters to, you know, settle in. And to help them settle, we've got now a part-time bowler, Mohammad Saad, now for the first time this inning. Maybe just they're looking to break this concentration, because that is bound to happen when an irregular bowler comes to bowl. You sometimes try to score runs, gets easier. Oh, he's beaten him right away. It's that sort of a pitch where you just cannot lose your concentration for even one delivery, Amr. Yes, exactly. And as you mentioned rightly, there you see that one just drifted away and missed that edge. And as you said, yes, not even a single ball, you can lose your concentration.
20 wickets for Mohammad Saad in his first-class career. Is more known as a batter. Some stretching going on, some exercise. These are the two batters who've gone out, by the way, so they can afford it. Right on your right is Tayyib Tahir, and the other batter got out. So that's what you do once you got out. 2 runs available. Easily done by Umar Siddique. So yes, this is what happens when you get out early on. It's a 4-day game. You get out on the first half hour. Then what do you do all day? You sit, you stretch, and you get bored and have lots of tea. Yes, again, that is the only thing you can do now, is make your back strong. Using his feet again, Umar Siddique. He's done that since morning. That has helped him get to the pitch of the ball. And as you just said earlier too, you got to be closer to the ball to play on a pitch like this. You just cannot hang your bat away from your body. We saw 2 wickets fell because of that. At the moment, it looks all easy for Umar Siddique. He's middling every delivery from here. 50 overs gone, 125 for 2 Southern Punjab. If you see Southern Punjab's batting to come with Azam Khan and Yusuf Babar and Amir Yamin, who can all play their shots. So this partnership is also important in that regard, that they've set a platform, a base for these free-flowing batsmen to come in later on and, you know, build a total, a challenging total for the opposition. Yes, again, a very good point made by you. This will happen because once you get to that safe zone, maybe 250, then give a go to your big hitters. Somebody like Azam Khan you mentioned. Randhawa won. He's got 100 in this tournament so far already. Amir Yamin can hit 1 big hits. But the job is not done yet by these two. They need to occupy more time, be on the crease, make some more runs. As we were talking, just get that score to over 250, and then you can capitalize on it, on the base they've made. Swept nicely. Protection is there. It's rushed to the fielder there. Yes, and especially on these sort of tracks, when you've done all the hard work, it's very important for your career as well to, you know, capitalize on this good start, make a big score, which will definitely be liked by most of the selectors and the people watching. Definitely help your cause as a cricketer who wants to play at international level. Absolutely. I think nothing is better than performing in difficult conditions. That's what you like as a selector. That shows the character. Oh, that kept straight. Played for spin. 1 run taken by Umar and Salman Ali Agha. 127 for 2 now, Southern Punjab. Very good partnership. 112 rounds of 262 deliveries. And now runs are coming. That's not a good news for Central Punjab. After deciding to bowl first on a pitch, they would have liked more wickets in the first session probably, because that was the time there was moisture in the pitch. It was seaming around. And I don't think so. The follow-up bowlers, the other bowlers than Waqas Maqsood did a good job here today. The ball was swinging. They were too much outside the off stump. That was very easy for the batters to leave. Waqas Maqsood on your screen took 2 wickets early on. End of the 51st over, it's 127 for 2. Another lesson here, Hammer. Don't lose your wicket or you'll be doing this all day. Any better, any youngster watching this, you get out in the first session, this is what you do all day.
That delivery from Saad in the last over has earned him one more over. He's a part-time bowler. Oh, this has gone beautifully done. In the gap. Umar Siddiq is realizing that there's no pace on that delivery, coming down the track and placing it beautifully towards mid-wicket for 4 runs. Yes, this is the time with a part-time bowler on. This is the time to dominate, to get a few runs quickly, as you've been bogged down all day. So of course, you at some point do look to play those release shots and things, and this is, I think, the moment, this is the time for them to do so. But again, on this track, they have to be a bit careful. Keeper coming up to the wickets. Oh, there was a chance. Had there been a direct hit, it would have been made things very close, and in doing so, they've given away 4 extra runs, 4 overthrows to Southern Punjab. That's not what you want to see from a central point of view. Easy runs given. Look at that, just a nudge to point, straight to point in fact. Throw and, well, the batsman was in. I think the keeper let it go, just in the hope that it might hit the wickets and there might just be a little chance. But it was not to be, and 4 extra runs added. Up and over, thick outside edge, will on Agha Salman, 4 more runs. So the part-timer bowler costing for Central Punjab. 3rd boundary of this over, 1 boundary courtesy to overthrow and 2 by the bat of these batters. Wonderful partnership. Yes, at that pace you cannot bowl over there. Outside off stump, short, with no fielders in the outfield. That was a free hit for Salman Agha, who's now well set on 59. He's had his time when he showed the patience, but of course not to these deliveries. You've been the captain of Pakistan under-19 to Emir. Is it a good idea, you coming back after the break, to use a part-time bowler? Would this give them time to set back, get back to the rhythm? Oh, maybe this is my answer. I got my answer through this shot, Emir. Yes, you see, taking the pace of the ball at times does help, and if you are willing to play some silly shots, yes, but I would always go for a regular fresh bowler. Of course, after the break they are fresh, and definitely they have a better chance of getting a batsman out than a part-timer. Yes, a part-timer may come in when in the middle of a session or something, when you're trying to just bowl some quick overs, because as you know, we've seen that most of the bowling has been done by fast bowlers. The over rate must also be in the captain's mind, but again, coming back after a break, it's always like a couple of overs when the batsman's feet are not moving, their hands are not well coordinated. It is always a good idea to have your regular bowlers to start the proceedings. Ahmed Safiullah. Oh, short of this one. Pulled in the gap. 4 more runs. So boundaries coming thick and fast for this Southern partnership. Excellent batting by these 2 batters. They've seen it off. They've done the hard part. Now they're getting runs. Beautiful batting. Yes, just a tad short, that one. Quickly on the back foot. And the best thing was that it went in the gap. 21 runs of 20 deliveries now
since the tea interval, Emmer. That is why that question arose of using a part-timer right after the break. It has just led them off, I believe. Yes, I strongly believe that if you are slipping away those runs, it must be for a cause. It must be in an attempt to get a wicket, not just because you're bowling loose deliveries. It's way too easy for now for Umar Siddique. Early on in the day, the pitch had moisture. So as the game progresses, the pitch will get hard with the grass on. It would be interesting to see tomorrow's morning session when Southern Punjab, whenever they come to bowl. Really looking forward to see them ball on this pitch, because they have the sort of bowlers who would utilize these conditions better than the Central have done. Ziaul Haq, Amir Yamin, Mohammad Imran Randhawa, Mohammad Ilyas, they all rely on their line and length. They prefer bowling up to the batter. That's what he wanted to see. 53 gone, 144 for 2. Well, absolutely right about the Southern Punjab's bowling. Their bowlers tend to, hit the seam, but at the same time bowl fuller, try to swing the ball. And of course, as you said, it would be very interesting and exciting to watch them bowl on this track. Persisting with Mohammad Saad. Mohammad Saad is known for his batting. Got a 200 at Gaddafi Stadium. And the gap. See, it's too easy. They're doing it pretty easily now. Both of the bowlers are making no trouble to the batters. Yes, and now when I look at the field, I think for a part-time bowler on a track, after tea, it's far too aggressive. You see, 3 slips with that pace, and of course the ball not doing all that much. It's quite a few overs old now, 53 overs old, softer, and it's not as shiny as it was in the morning. So I think it's far too aggressive. Edged, not carrying. That was my concern, right? I was just about to say this. For the pace of Mohammad Saad, I think they're too far behind the slip fielders. And with the soft hands they play, I doubt that the ball will carry to them. That's one point that the captain, the young captain of Central Punjab, Ali Zoria, must look at. Because these little things matter in a big match. When wickets are hard to come, you got to be spot on with every decision you take. Wicketkeeper up to the wickets now. Change of plan. It's been guided toward third person. One more run added to the total. The last wicket fell when the score was on 15. And since then it's been all Umar Siddique and Salman Ali Agha since then. Yes, they've negotiated the bowling pretty well. After the fall of that second wicket, and a few leg byes here. This time straying down leg side. Leg byes, umpire says. Waleed Yaqub, who's not had one of the ideal seasons in this tournament. In the last 2 games, a lot of decisions going against him. Nicely done, but straight to the man, straight in the air. So now we've got the answer that why he was persisting with Mohammad Saad. It was because of this shot, this type of a shot that they were waiting for.
for a batter to make a mistake, and exactly this is what he's done. Played it straight to Ahmed Safi Abdullah, who makes no mistake at point, and a big wicket for Central. Agha Salman, who played so nicely for 60 runs. Just break that concentration maybe. Have a look at that. Cut it, but straight, the placement not right, and a very good catch by Ahmed Safi Abdullah. Yeah, it's a low catch, difficult one to take. But again, as we saw, Salman Ali Agha in the previous over, lost it for a second. Was lucky at that time, but not this time. And as we were discussing, that is one problem that a team can face when part-timers are bowling, is that batsmen also tend to lose concentration at times. And that is a pretty big wicket the part-timer has got for his team. It worked, Hammer, it worked. Can't say anything to that plan now, because it has got the big wicket of Agha Salman, losing in concentration, did the whole hard work, scored 60 runs. Not a good time to lose your wicket. There was really nothing happening. Yusuf Babar, another very talented player, into his 5th game, 323 runs, 150 to his name already, average of 46. It will go up definitely, because this guy has a lot of talent. Very skillful batter, belongs to Okada, and good time to bat. Yes, good time to bat, and an occasion where you can prove that you are worthy of a place in at this level. A brilliant opportunity to impress not only the selectors but all your colleagues, your management. Agha Salman was looking itchy against Mohammad Saadi, wanted to dominate in the last over. Also saw it coming down the track to him, and then playing a reckless shot straight to the fielder. It's now the responsibility lies on Umar Sadiq, how he motor alongs the remaining batters of the side. Yusuf Babar very young, Azam Khan another young player still to come. Shorter one, short leg fielder in action. Never liked this position. It's such a scary position, Amr. Have you been standing on that position? I'm sure you must have been for the number of times you played first class cricket. Yes, nearly always in my under-19 days as well. Even when I was the captain, I used to field at short leg or the shorter positions. Can be a nightmare at times when the bowlers are missing their legs, especially leg spinners who are prone or are known to bowl a bit short or full at times. The short leg. Saif Badr, Saif Badr not happy there. I think that's a concussion test there. Everyone must go if you're hit on the head, and that's why the physio is here. It did hit him on his head. So you got to have all those concussion tests going whenever you're hit on your head. That's what they're all laughing at. It looks all good at the moment though. That's a good technique for a short leg fielder. Instead of backing out, you just put your head down. Beaten. Things happening for Central Punjab suddenly after the wicket of Salman Ali Agha. This is what can happen. It can give the different energy to the bowling side once you get the big wicket. And this time Umar Sadiq wanted to cut it, probably too close to cut. I think that shot was on with no point. There was a big gap, but of course the length, I think it wasn't that short.
He's got lots of range of shots, Umar Sadiq, in his armory. He cuts well, drives, we've seen him pull. Lots of shots available. But when to play what stroke is what matters. That thinking process for a batter matters a lot. Which player, which bowler to target, these things, little things make you a good batter. 55 gone, 148 for 3 Southern Punjab. Shot selection, which is the key. And as you had mentioned earlier, the difference between good player and a great player, shot selection plays a big part in that. A great player always capitalizes on the hard work that he has done, never gives away his wicket easily. Look what has happened in a match between Balochistan and Sindh at UBL Sports Complex. 96 runs all out. Balochistan, Ibrar Ahmed, the main destroyer, in just 9 overs, taking 5 wickets for 23, and the brilliant evergreen Sohail Khan taking 4 wickets in reply. Sindh 73 without loss. 47, the inform Ehsan Ali is on. Khurram Mansi 23 not out. We're definitely getting a result there. Definitely. Oh yes, it seems, well, I can't really predict what the wicket must be doing over there. 5 wickets for a spinner and then 4 wickets for a fast bowler. Balochistan without their head coach Faisal Iqbal, who left due to his personal reasons. So these things will happen, might happen, because it's very important to have somebody like Faisal Iqbal, a senior member who's represented Pakistan, to guide these youngsters. Is not there, so these things happen in cricket. You get out on low totals. Whoa, lots of oohs and ahs. Mohammad Saad from a part-timer to a wicket taker in the space of just 1 over, Hammer. And that wicket also, the prize scalp of Salman Agha. Ooh, that one missed the outside edge. The feet movement on this track is essential. It has to be you have to be assured if you want to play on the back foot or the front foot. Otherwise, if you are late for even a second, that is what will happen. It's such a difficult game to learn, cricket. Got to be spot on with everything, especially if you want to represent Pakistan at a higher level. You need lots of focus, other than the skills I'm talking about. Wonderful bowling by Mohammad Saad. 56 gone, 148 for 3 Southern Punjab. Well, Yusuf proving that point that on a track like this, it's never easy for a new batter. And here's the summary again. Sindh trail by 23 runs after they dismissed Balochistan for 96. They are 73 without loss in 19 overs. Ehsan Ali 47, the triple 100 maker, and is known to score quickly. He played a brilliant inning. I was lucky enough to watch it live, to witness it. I was the commentator there when he scored this 300 runs at Gaddafi Stadium. There's something about him, a bit of Virendra Sehwag in him. Driven nicely but straight to the man. So that lazy elegance we can associate with somebody like Ehsan Ali. And he's brave. He's not shy of hitting big hits. Anything pitched up to him, he'll just go after it. Strange that is not part of any PSL side. He was once with Quaid Gladiators, but I've not seen him around. And I'm sure any team, any franchise looking for an opener, an aggressive opener, Ehsan Ali is definitely one to look out.
the type of form he is in. Yes, I think from the start of his career, there has been no doubt about his quality and his talent. Well, his fitness has always been a question mark. But these are things, of course, that can be worked on. But my question, Emmer, is if you have the ability to score 300 runs, you are fit. Other than that, you cannot score 300 runs. You cannot stand there for that long period of time. Stayed in the ground for 4 days. Fielded for 2 days, batted for 2 days. Cuts well, but straight to the man. Disappointed that he could not get the gap going. We'll continue talking about Ehsan Ali. 57 gone, 148 for 3. So fitness, how do you judge a fitness on your capabilities of scoring runs? So he's done that. So that's my question to you here. Yes, definitely the longer version. I would always, my personal thoughts that I will always go for skill rather than fitness. Yes, a certain level is necessary, but as you said, if one is scoring 300 runs, staying in the field for 4 days, of course he does have that fitness which is required. When it comes to the shorter version, of course other things also start to matter, like your fielding and the way you run. So well, as far as the longer version is concerned, I am all for skill first and fitness later. Absolutely. I think this T20 cricket has changed the levels of fitness. Now you need to be better in your agility, how quick you are in your movements, especially as you just said about the fielding, because run saving is such an important part in T20 cricket now that if you give away a few runs in fielding, you might not be considered. So your agility, your fielding, it's all the part of fitness. That's you need to work on. But Ehsan Ali, I think he's right up there. He's a wonderful prospect. He should be looked at. And not just Ehsan Ali, but there are plenty of batters that are coming from Sindh. I've really been impressed by the young batters that are coming from Sindh. Ahmad Alam, one of them. Saad Khan is one of them, the left-hander batter. I think these 3 batters make a bright future for Sindh in cricket for Pakistan. Umair bin Yusuf is already established. I'm talking about the new faces. I think it's been very impressive from Sindh side. Yes, I'm sure the Sindh management would be very content with that bench strength at the moment, even if these players are not playing regularly at the moment. Yes, in a few years, definitely they are the future of Sindh cricket at least, and I'm hoping that Pakistan cricket as well. And what these youngsters have done, they've pushed the seasoned campaigners like Khurram Manzoor, like Asad Shafiq to score runs, because they've got a backup now. It will be very difficult for them to keep their spot in the side if they don't perform now. With that, it's end of 58 overs, 148 for 3, Southern Punjab. विकेटों के नुकसान पर उमर यूसुफ उमर सिद्दीक 70 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं। बाबर यूसुफ यहाँ पर अभी तक रन बनाने का मौका नहीं मिला है। लगातार 4 मेडन से पहले अली हो चुके हैं, जिसके ज़रिए से कुछ प्रेशर उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। यूसुफ जिन्होंने ज्वाइन किया है अपने कप्तान को, जो कि पहले दोनों सेशंस गुजार चुके हैं, दरमियान में कुछ किस्मत ने उनका साथ दिया, लेकिन अब उनको साथ लेके चलना होगा। आखिरी लम्हात हैं, ऑब्वियसली आखिरी सेशन।
एक एंड को संभाल के रखा हुआ है उमर सिद्दीक ने, दूसरे एंड से उनके सामने विकेटें गिरती रही। एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही सलमान आगा और उमर सिद्दीक के दरमियान, जिसने किसी हद तक इस्तेहकाम फराहम किया सेंट्रल पंजाब की टीम को। काफ़ी बैटिंग बाकी है आजम खान, आमिर यामीन और इमरान रंधावा की सूरत में। तो फाइनली रन्स हासिल होने का सिलसिला शुरू हुआ है। यूसुफ बाबर ने कराची के अपने पहले रन्स को स्कोर किया इस सीजन में। दूसरी तरफ एक अच्छा दबाव क्रिएट किया हुआ था विकेट टू विकेट बॉलिंग के जरिए से, और कम से कम इस बात पर सोचने में मजबूर किया कि वो जो शॉट को आगे आके खेल रहे थे ड्राइव करने के लिए, उसको रोके, और ये रन्स को रोक के रखना बिलाखिर एक विकेट का बायस बना। काफ़ी नबीतली बॉलिंग है अहमद सफ़ी अब्दुल्ला की जानिब से। ओवर भी अपने अख्ताम को पहुंचा 153 विकेटों के नुकसान पर। शॉर्ट बॉल, उसको पुल करना चाहते थे, गेंद काफी ऊंची हवा में लोमेंस लैंड में। खुशकिस्मती यहां पर बैट्समैन के साथ रही। ये लॉन्ग हॉप देखकर आंखें चमक उठी थी, लेकिन एक मरतबा फिर ये एक लॉन्ग फॉल शॉट को खेल बैठे हैं और किस्मत के धनी रहे हैं कम से कम ऐसे शॉट्स के हवाले से। लेकिन इस मौके पर ऐसी शॉट्स को खेलना यकीनन खासी दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि अली हमने देखा है शाम के औकात में ख़ास तौर पर कराची में विकेट्स गिरती हैं, चाहे वो नेशनल स्टेडियम हो या फिर दूसरे ग्राउंड्स यहाँ पर। और एक मरतबा फिर बड़ा लेजी शॉट खेला। जो कर रहे हैं वो अपनी गलतियों से करेंगे, अदरवाइज शायद इस वक्त शाम के औकात का कोई सीधा अमल दखल इसमें नहीं दिखता है, जो कि अब तक बैट्समैन बैकफुट पर मजबूर हुए हैं। कोई ज़रूरत नहीं इस किस्म की जल्दबाजी की, और उसमें बाहर गेंद थी और उसको लेट कट खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के करीब से होती हुई गई है, विकेट कीपर के पास एक सुसाइडल अटैम्प्ट था ये उमर सिद्दीक की जानिब से। सैफ बदर हैं फील्डर, हमसे थोड़ी देर पहले फॉरवर्ड शॉट लेग पर फील्डिंग करते हुए इनके हेलमेट पे बॉल लगी थी। और अब दबाव बढ़ाने का शायद फैसला किया है सैफ बदर। शॉर्ट गली पोजीशन पे प्लेस किया है, क्योंकि ज़्यादा पेस नहीं है बॉलर की, इसलिए इस पोजीशन पे प्लेस किया है सैफ बदर को। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि कई गेंद जो कि विकेट कीपर तक कैरी नहीं कर रहे थे, खासा फासला रखा हुआ है विकेट कीपर ने, और गेंद को जज करने के लिए उनके पास तो वक्त मौजूद होता है, लेकिन बैट्समैन दूसरी तरफ इस बड़े हल्के फुल्के और बेज़रर से पेस के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके शॉट्स को खेल रहे हैं। बड़ा मुख्तसर और ढीला ढाला से रनअप, अनकन्वेंशनल फील्डिंग प्लेस की है यहाँ पर उमर सिद्दीक के लिए। अमूमन हम देखते हैं इस पोजीशन पे फील्डर को प्लेस किया हुआ। 180 गेंदों का एक्सपीरियंस है इस मैच में उमर सिद्दीक को हासिल। दूसरी जानिब सादा सलमान आगा की कीमती विकेट हासिल कर चुके हैं। और इस मरतबा उठा के खेले मिडिल लेग पे गिरी गेंद, पूरी तरह से इस गेंद का फायदा उठाते हुए, और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला छक्का इस मैच का अंपायर वलीद याकूब की जानिब से 6 रन का सिग्नल। ऊंची बैकलिफ्ट थी उमर सिद्दीक की, गेंद को जल्द पिक किया, एक कदम आगे आकर शानदार ट्रिगर मूवमेंट के जरिए से बेहतरीन जगह पर आए शॉट को खेलने के लिए, हवा में फ्लिक और यूं पहला मैक्सिमम हासिल किया। हम पिछले साल जो पाकिस्तान कप खेला गया उसमें कई ऐसे शॉट्स इस निस्बतन मुख्तसर ग्राउंड पर लगते हुए देखे, और वहाँ पर पिच ने अच्छा खेल भी पेश किया। 300 से ज़ायद रन बने भी, चेज़ होते हुए भी हमें देखने में मिले,
आज जो अब तक बॉलर्स के लिए एक कंडीशन को रखा गया था घास को छोड़कर, उसका फ़ायदा खातिर खां ना उठा सके। और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि गो के शायद हार्डनेस आए अली आने वाले दिन में पिच में, लेकिन वो अगर आप पहले दिन के मुकाबले में बात करते हैं तो बैटिंग के लिए बेहतर होगी। तो वो इनिशिएटिव जो कि लेना चाहिए था, हासिल करना चाहिए था पहले बॉलिंग करते हुए सेंट्रल पंजाब को, उसको क्लियरली यहाँ पर वो एक इमारत के तौर पर खड़े ना कर सके। और अब रन आसानी के साथ हासिल हो रहे हैं। जो तीसरी 50 थी वो 105 गेंदों पर मुकम्मल की, उससे पहले 137 और 111। मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद, इसको एतमाद के साथ खेला यूसुफ बाबर ने। और जो गुज़िश्ता स्ट्रोक पे 6 रन हासिल किए थे ICC वर्ल्ड T20 इवेंट में, पाकिस्तान के जो बैटिंग कंसल्टेंट थे मैथ्यू हेडन, कुछ उनके से अंदाज में वो बाउंड्री हिट की थी। अगर नेक्स्ट ओवर में उस 6 का अगर हम रिप्ले देखेंगे तो देखिएगा वॉकिंग स्ट्रोक था वो उमर सिद्दीक की जानिब से। फाइनली कुछ हवा देने की कोशिश की आई लाइन से ऊपर गेंद करके कि बैट्समैन के वो इस रिदम को मुतासिर कर सके। ये देखिएगा ये थोड़ा सा वॉकिंग स्ट्रोक था, आगे निकले थे मैथ्यू हेडन किस अंदाज में और बड़ा ज़बरदस्त को लिफ्ट किया टुवर्ड्स मिड विकेट 6 रन के लिए। चूँकि दबाव डाल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता साद, उस दबाव को ख़त्म किया इस छक्के से। ये बेहतरीन मौका है ये विकेट निकालने का और इसको सेंस कर रहे हैं। अच्छी कप्तानी अली ज़रियाब की सूरत में उन्होंने स्लिप, लेग स्लिप और 3 तरफ से बैट्समैन को मुकम्मल तौर पर घेर के रखा हुआ है। वो शॉट खेलने के लिए 2 माइंड में रहते हैं। एच निकालने की कोशिश लेफ्ट हैंडर के खिलाफ। 157 3 विकेटों के नुकसान पर। आपको अपडेट देते चलें जो दूसरा मुकाबला जारी है। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर वाक़ई नहीं UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर 96 पे ऑल आउट किया बलूचिस्तान को सिंध ने। और अब एहसन अली की जानिब से 1 वे ट्रैफिक, 82 रन उन्होंने ऑलरेडी बना दिए हैं। 69 गेंदों पर 16 चौके लगा चुके हैं एहसान अली, जबकि खुरम मंजूर 29 रन बनाकर साथ मौजूद हैं। 113 रन अभी ऑलरेडी बढ़तरी में आ गई है सिंध की टीम और कोई विकेट उनकी नहीं गिरी है। ये खूबसूरत मंजर बज़ाहिर दिखने में नज़र आता है लेकिन रहना शायद आसान नहीं है। ये वो नाज़िमाबाद का पहाड़ी सिलसिला जो कि इस पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद के इलाके को कवर करता है। और कहीं कहीं आपको वो वाली फीलिंग्स आती हैं जो कि जॉर्डन में एक पुरानी और रवायती वहाँ पर आबादियाँ हुआ करती थीं और एक तरह का वहाँ पर आपको MP थिएटर दिखता था जो कि ऊपर से नीचे तक आबादियों के ये तमाम सिलसिला दिखता था। एक ज़माने में सब क्लीन हुआ करता था, लोग सुना कि वहाँ पर अपनी मशक्क़तें भी किया करते थे, एक्सरसाइजेस करते थे, लेकिन अब आबादी से भरपूर ये पहाड़ियाँ। और जो सिंध और बलूचिस्तान के मैच की आप बात करें UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो 82 रन की इनिंग खेली एहसान अली ने, उसमें 64 रन बाउंड्री से 16 फोर्स। जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब तक हिट कर चुके हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में एहसान अली इन दिनों। जिस तरह आप जॉर्डन की बात करें तो नखलिस्तान के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, नमी ज़्यादा ज़रूर है अली, लेकिन बड़ी एक अच्छी और ख़ूबसूरत शाम है। ख़ास तौर पर जो पंजाब से खिलाड़ी आए हैं उनको भली मालूम होगी, वहाँ पे बड़ी स्मॉग थी। ये शॉर्ट गेंद हासिल हुई है, गैप में खेल कर रन हासिल होंगे क्योंकि वहाँ पर ख़ास तौर पर अभी भी जो देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रीडिंग के लिहाज से भी और अगर आप विजिबिलिटी को भी देखें तो कोई बेहतर पिक्चर नहीं दिखा था। यहाँ पर भी शाम के औकात में 2-3 हफ्ते पहले खासी एक मध्यम सी रोशनी हो जाती थी, सूरज किसी माल्टे की मानद दिखता था, लेकिन अब कम अज़ कम और ख़ास तौर पर कल से जो समुंदर की हवा चली है
उसके बाद से इस रीडिंग में भी बेहतरी आई है और बड़ा अच्छा लग रहा है कम से कम क्रिकेट के लिए। तमाम ओवर्स मुकम्मल होने का चांस है, गो कि शायद वो जो एक्सटेंडेड आवर है हाफ आवर 5:30 तक का वक्त ले ले, लेकिन ज़्यादातर बेशतर हिस्सा इन ओवर्स का हो जाएगा। ओवर रेट बहरहाल स्लो ज़रूर है अली, अभी तक कम से कम 66-67 ओवर होने चाहिए थे, अभी सिर्फ 62वां ओवर जारी है। और ये जो ग्रीनरी है ये एयर पोल्यूशन कम करने का बाइस बनती है, और जिसको एनवायरनमेंट है कि अगर हम जबान में बात करें जो सॉक्स और नॉक्स हैं यानी सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो फिज़ा में जब जाते हैं तो फिर ये स्मोक का बाइस बनते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे जो एफुलेंट है फैक्ट्रीज़ का या चिमनीज़ का, उस पर काबू पाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। और एक जो नीम का दरख्त है ये 5 AC के बराबर ठंडक देता है अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं। तो इसी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर इस वक्त आपको स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नज़र आ रही है। और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त पेस्टिसाइड भी होता है नीम का दरख्त। एब्सोल्युटली, ख़ासतौर पर जब आप इस तरह के स्टेडियम में आते हैं और मुकम्मल तौर पर एक पुररौनक इलाका है जहाँ पर चलने की, गाड़ी को गुजारने की जगह नहीं दिखती, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में आकर इस गुंजानाबाद इलाके में बड़ा अच्छा तासर भी मिलता है और ऑब्वियसली सेहत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त। ये 5 मैचेस जो आके आखिरी के बिजनेस एंड के हैं तमाम टीम्स, और उसके बाद फाइनल खेला जाएगा जिसके बारे में शुनीद ये है कि वो डे एंड नाइट गेम होगा नेशनल स्टेडियम में। 25 दिसंबर से उसका आगाज़ होगा। 5 डे आमतौर पे मैच खेला जाता है। नतीजा मुमकिन बनाने के लिए दूसरी तरफ बिलावल इकबाल ने उधम मचा रखी है। खूबसूरत गेंद, मुसलसल तीसरी मरतबा बीट किया इस ओवर के दौरान सेट बैट्समैन को। बिलावल इकबाल ने फास्ट बॉलर्स का वो कैंप अटेंड किया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद साल पहले 5-6 साल पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में लगाया था, जहाँ पे उस वक्त के जो बॉलिंग कोच थे मोहम्मद अकरम, वसीम अकरम, इन सब ने पाकिस्तान भर से बॉलर्स को बुलवाया था। और वहाँ पे मैंने पहली मरतबा बिलावल इकबाल को देखा। उस कैंप से काफ़ी फ़ायदा हुआ था पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स को। ओवर मुकम्मल 158 पे 3। बड़े दिलचस्प डायमेंशंस हैं इस ग्राउंड के लिए। ऑकलैंड का हमने ईडन पार्क देखा है जहाँ पर अपने आप को सेटल करना मुश्किल दिखाई देता है, तो इसकी भी डायमेंशंस कुछ इसी अंदाज की हैं। और ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान कप खेला गया उसमें हमने कई मरतबा देखा कि गेंद का लगता कुछ था सफ़र और वो अपना अख्तिताम कहीं पे जाके करती थी। शॉट खेलने के लिए गए और स्वीप करके लगता है कि 4 रन हासिल कर जाएंगे। गेंद आहिस्ता हो रही है और निसार इसको आखिर में रोकने में कामयाब हो गए। कुछ गेंद आहिस्ता हुई है और दूसरी तरफ निसार की अच्छी कोशिश थी, तीसरा रन भागकर बनाने में कामयाब। अब तक अकील इतना ज़्यादा स्पिन हमने करते हुए देखा नहीं है, ज़्यादा बड़े टर्नर नहीं है। अहमद सफ़ी लाइन और लेंथ को मेंटेन करते हैं, लो ट्रेजेक्ट्री के साथ गेंद करते हैं। फ्लाइट हमने इनके पास नहीं देखी है, जब अमूमन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का खासा होती है कि इन द एयर जो है वो बॉल को लूप देते हैं और फ्लाइट के साथ गेंद करके बैट्समैन को डिसीव कराते हैं। अगर आप देखें तेज गेंदें करते हैं और T20 में इसीलिए ज़्यादा कामयाब है। यस, मोमेंट ऑफ फेम इन्होंने हासिल किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले। पिछले साल अपनी बैटिंग के ज़रिए से इन्होंने उधम मचा दी थी नेशनल स्टेडियम में सेंट्रल पंजाब के लिए, लेकिन इनका मेन किरदार हर लिहाज से इस फास्ट बॉलर का एक जो हैवी स्क्वाड रखा हुआ है उसमें स्पिनर का होगा। और इस इनिंग्स में चाहे ना भी हो, लेकिन आने वाली इनिंग्स में इनको इस किरदार को उठ के निभाना पड़ेगा। मजीद रन हासिल हुए या दूसरे रन के लिए वापस आए, यूसुफ के रन में इजाफा। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले थे इस मौके पर और अच्छा स्लाइड किया था यहाँ पर, यकीनी रन महफूज किए अपनी टीम के लिए, वरना 30 रन हो सकता था ये। अहमद सफ़ी, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक, और गुज़िश्ता स्पेल में मैं बात कर रहा था कि 3-4 स्पिनर फैसलाबाद से
तकरीबन आगे पीछे नजर आए, जिसमें इमरान खालिद थे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले, फैसलाबाद के लिए उन्होंने पहला जो T20 था वो भी उसमें खेला उन्होंने, SNGPL के लिए इमरान खालिद खेले। फिर उसके बाद एक बॉलर थे यहाँ पे सदाकत जो अभी नॉर्दर्न के लिए सेकंड 11 से खेल रहे हैं, फैसलाबाद से खेले, पाकिस्तान के T20 के स्क्वाड तक पहुँच गए थे सदाकत। उसके बाद वो थोड़ा राइट ऑफ हुए। अहमद सफ़ी और इस मरतबा कवर्स में खेले, उठता हुआ स्ट्रोक लॉफ्ट किया, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। उमर अब सेटल हो चुके हैं क्रीज पर और ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली इस गेंद को आसानी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। गेंद एक मरतबा फिर लो ट्रैजेक्टरी के साथ की थी जिसको उठाकर खेलने में कामयाब। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, एक कदम आगे आकर एक और चौका हासिल किया। 10वां चौका ऑलरेडी उमर सद्दीक की इस इनिंग्स का। स्ट्राइक रेट भी इनका बेहतर होता हुआ और कीमती रन्स ये आज के दिन के आखिरी लम्हात में चुरा रहे हैं। और एक और स्पिनर थे महमूद, इनका नाम था और स्टेट बैंक से खेलें काफ़ी। तो 3-4 स्पिनर लेफ्ट आर्म एक साथ आए फैसलाबाद के इस खत्ते से। और सईद अजमल के तो क्या ही कहना। ओवर मुकम्मल हुआ 168 3 विकेटों के नुकसान पर। मज़ीद खबरें आती हुई जो साहिल समंदर के पास वाक़ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर 1 रन कम 200 बना लिए नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन ने। 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और मुबस्सिर खान एक और कमाल की इनिंग्स खेल रहे हैं। 133 गेंदों पे 72 रन उन्होंने बनाए हैं। हुरैरा ने इससे पहले 70 रन किए। अभी आमिर जमाल उनके साथ हैं, 5 रन बना चुके हैं। और वहाँ पर हमेशा की तरह नॉर्दर्न की टीम जो कि एक और ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है, कुछ शायद नॉर्थ की हवा में चीज़ मौजूद है या फिर उनके कोचिंग में। हालांकि कोचिंग स्टाफ जारी बात है कि चेंज हुआ, लेकिन वो अपने ही एक पैटर्न पे चल के क्रिकेट खेलते हैं, तेज़ रन स्कोर करते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं। तो नॉर्थ इंतहाई साउथ में भी अच्छा खेलते हुए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ समंदर है। जी हाँ, और इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट ने उनको खासा खबरों का मरकज़ बनाया था। दूसरी तरफ हलचल मचाते हुए बिलावल गेंद को आगे रखा और बाहर की जानिब निकली है, जिसको रीड नहीं कर पाए थे यूसुफ, लेकिन कॉपी बुक स्टाइल में खेलने के लिए गया, डिफेंड करने के लिए। और अच्छी स्ट्रेटेजी नज़र आ रही है कि जहां पर वो रीड नहीं भी कर पा रहे हैं वहां पर भी गेंद को बेहतर अंदाज से छोड़ते नजर आते हैं। बैकफुट पे रखा इस मरतबा, गेंद के साथ ताक़ुब करते हुए अहमद सफ़ी। शर्ट इन्होंने हुसैन की पहनी है, हुसैन तलत की, लेकिन अहमद सफ़ी हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर। अपनी सेंचुरी से करीब होते हुए उमर सिद्दीक। ये वो आखिरी लम्हात हैं जिसमें आप तस्वर करते हैं कि जाते जाते कुछ विकेट्स चुरा ली जाएं। जो सलमान अली आगा ने लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन से विकेट लूज़ की, लेकिन उसके अलावा कुछ अब तक करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आउट ऑफ नोवेयर अपने आप को बैक करके ये मोमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वकास मकसूद को हो सकता है हम जल्द एक क्विक बर्स्ट के लिए देख सकें 3-4 ओवर्स के। अच्छी गेंद थी इस मौके पर, अटेम्प्ट किया कि इसको बाहर आके खेलें, बल्ले के करीब सोती हुई गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। बड़ा नीट एंड क्लीन कलेक्शन है जुनैद अली का। काफ़ी मुतासर किया इस नौजवान खिलाड़ी ने अपनी उम्दा विकेट कीपिंग से, और साथ साथ टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है जुनैद अली। अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेने के बाद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में महफूज। तो इस तरह उस दिफा को तोड़ने में कामयाब हुए बिलावल, कि जिसे काफी देर से मुजाहरा कर रहे थे यूसुफ बाबर, और 7 रन की एक छोटी सी इनिंग जो थी अपने इख्तिताम को पहुंची। बिलाखिर इस जंग को जीतने में कामयाब रहे बिलावल, जो कि मुसलसल बीट करवा रहे थे, लेकिन इस मरतबा वो टैंगल में आ गए शॉट को खेलते खेलते, और मुकम्मल तौर पर बीट होने के बाद ये गेंद स्टंप्स के पीछे जुनैद अली को दे बैठे। तो मेहनत रंग लाई बिलावल इकबाल की, विकेट हासिल की उन्होंने इस इनिंग्स की पहली। यूसुफ बाबर 7 रन बनाकर आउट। चौथा नुकसान सदन पंजाब को 170 पे।
ये नए आने वाले बैट्समैन है आजम खान। आजम खान ज्वाइन करेंगे उमर सिद्दीक को। पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड का हिस्सा थे जिसने वर्ल्ड टी20 में शिरकत करना थी। आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन सदरन पंजाब के। आजम खान जो कि इस सीज़न में सदरन पंजाब की टीम में गए हैं और इस मौके को उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से कबूल किया। 3 50s ऑलरेडी बना चुके हैं और साथ साथ अपनी पहली सेंचुरी भी बनाई। शानदार इनका एवरेज और बुनियादी तौर पर इनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। ये इन ग्राउंड्स में खेले हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने जहाँ भी मैचेस होंगे ऑब्वियसली UBL NBP या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने यहाँ पर बड़ी क्रिकेट खेली है, हालांकि अभी भी खासे नौजवान हैं। और इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में जिसको एक आम ख्याल ये है कि इनको प्रेफरेंस देनी होगी, शॉर्टेस्ट वर्जन। जारी बात है कि सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो मेहनत और सारी कारकर्दगी यहाँ पर दिखती है वो शायद कहीं और नहीं दिख पाती। उसको प्रूव करने का ये आखिरी 5 मैचेस में बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन साथ साथ शाम के औकात हैं, बॉलर इस वक्त एक रिदम हासिल कर चुके हैं और उनके खिलाफ एक अच्छा डिफेंस चाहिए होगा आजम खान की सूरत में। दूसरी तरफ उमर अब तक क्रीज पर मौजूद हैं और देखिए अली ज़रा आपने इनके आते 3 स्लिप लेने का फैसला किया। बड़े करीब खड़े हैं एक दूसरे के तीनों। 4 स्लिप के साथ एक बेसदरद सी गेंद जिसको बड़े आसानी के साथ लेफ्ट किया। आजम ने जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। ये वो मंजर कि जिसके नतीजे में डिपार्चर हुआ बाबर यूसुफ का और आजम की आमद हुई। जिस्म से दूर इससे पहले गेंदें कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा मजबूर होना पड़ा इस शॉट को खेलने के लिए और इस खूबसूरत गेंद पर बिलाखिर जो विकेट डिजर्व कर रहे थे वो बिलावल ले उड़े। अच्छा ड्राइव, लेकिन गैप तलाश नहीं कर सके। और अकील, आजम खान की पिच पे मौजूदगी की सूरत में हमें रन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर ये थोड़ी देर खड़े हो गए तो अच्छी हमें पावर स्ट्रोक प्ले देखने का, फायरवर्क्स देखने का मौका मिलेगा। ओवर मुकम्मल 170 पे 4। दोपहर का वक्त शहर कराची में साए अब लंबे होना शुरू हो चुके हैं, तो कुछ देर में ये कद से दुगने भी हो जाएंगे और दोपहर के वक्त में जो धूप शायद तंग कर रही थी अब बड़ी भली मालूम हो रही है, हल्की हल्की हवा चलती हुई। और ये वो वक्त है जिसमें हमने कराची में ख़ास तौर पर फर्स्ट क्लास के मैचेस में विकेट्स को क्लस्टर में गिरते हुए देखा है। सदर पंजाब को ऐसे ही पॉजिटिव नोट के साथ आज की शाम होटल में वापस ले जाने के लिए उमर सिद्दीक का किरदार बड़ा अहम होगा। दूसरी तरफ से लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बॉलिंग में मजीद तब्दीली लाने का फैसला किया है। अली अब गेंद करने के लिए आ गए हैं और अब दोनों एंड से पेसर्स लगेंगे। अंदर आती हुई गेंद पैड्स पे लगी है PLLBW की और बिलाखिर पर इम्तियाज इकबाल की उंगली फिजा में बुलंद और यूं उमर सिद्दीक की मैराथन इनिंग अपने अख्तिताम को पहुंची। काफी गौर और खौस के बाद इम्तियाज इकबाल ने इस पावरफुल शॉट का मस्बत जवाब दिया और यूं उमर सिद्दीक हैरान परेशान सर को झुकाए बोझल कदमों के साथ अंपायर से इस्तफसार करते हुए बिलाखिर पवेलियन की समत लौटते हुए। दो सेशन और तीसरा सेशन भी लगभग आधा खेल कर वापस गए हैं। ओवर द विकेट गेंद करने के लिए आए थे जो बाउंस भी हासिल कर गई और ये शायद भी उनके जहन में क्वेश्चन मौजूद था कि कहां पर ये पिच हुई, लेकिन अपनी हाइट की वजह से बैट्समैन के ख्याल के मुताबिक गेंद स्टंप्स को मिस करती। अंपायर ने बड़ी सोच विचार के बाद बिलाखिर फैसला दिया अली के हक में, तो इनको लाना कारगर साबित हुआ। पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया अली ने। स्पेल में आधी टीम आउट हो गई सदर्न पंजाब की। 170 पे 5।
Players have had their drinks. The wickets have started to come in the final session. This is the tradition of Karachi. The sea breeze picks up. Plenty of help for the bowlers. On this occasion, there's plenty of help on the wicket as well. 5 wickets down. And a good time to welcome along in the comm box former Pakistan under-19 skipper Amar Saeed. Good evening, Amar. Good evening, and thank you very much. Imran Randhawa, 25 matches, 757, 200s and a 50, average of 23, best of 179, 24 years of age. And after that partnership for the 3rd wicket, the wickets have started to come. Just a little correction, that last dismissal was given out as caught off the inside edge onto the pad, caught by Saif Badr of Ali. 3 slips Senegali. On fire Central Punjab. Once again squares him up. Look like 2 noises. It's good from Muhammad Ali. As we have discussed all day long, here's the replay of the last delivery. That one squared him up, I think a bit on the higher side. As we have discussed throughout the day, it will never be easy for a new batsman to come in and start playing freely. Look at that one, that inside edge onto the pad and the catch taken. That delay in giving him out was because he was making sure if that catch has been taken or not. That length, look at that fuller length, the ball climbing. Although the line was wide, but it's very difficult to resist that drive when you see that ball is too full. Yes, there you see that fuller length, and again the new batter is not aware of the behavior of the pitch. Definitely will go for these shots as they are used to playing on placid tracks at most of the times. So definitely that is the length which he should be hitting regularly now to the new batter. Slightly shorter and wider as well. Like we were discussing off air, Amar, Central Punjab rue the fact that in the first 2 sessions, barring Waqas Maqsood, all the pacers were slightly short of length. And now it's not too late, never too late. So they're finding the right length. And like we were also discussing, they can easily bring that cover fielder into catching, show batter the gap. Yes, definitely it's not too late, because there's still something left in the wicket. Abdul Razak, Central Punjab coach, very, very experienced international player. All of a sudden, the batting looks a lot difficult. 2 set batters have been dismissed in the last half an hour. It was good from Central Punjab to come out of the blocks after tea and bring Mohammad Saad. Nothing was working for them in the afternoon session. And then Saad with his little dibbly-dobbly, very handy sometimes on these kind of pitches. And batsmen who'd been working very hard all of a sudden thought it was easy. And Salman Ali Agha was found wanting as he lost his concentration for a while and lost his wicket. And continue that, 170 for 5. Yes, definitely when there's a part-timer bowling, as we were mentioning before, it's even more difficult to concentrate at times, especially when you've fought so hard. Conditions are, bowler friendly, and the bowlers have given you a hard time for 2 sessions. All of a sudden you see this bowler, as you said, dibbly-dobblies, and you
you take it as a chance to score quickly, freely, and at times that does get you into trouble, as was the case with Salman Ali Agha. Good on skipper Zaryab, because in the first over Saad went for 3 boundaries, but then he persisted with him. Azam, as we all know, is in the air. He hasn't got all of it, but will land safely. Couple of runs. Fasten your seat belts, because when Azam Khan is there, he's not going to hold back, regardless of the conditions. Yes, normally that's how he plays. He doesn't give any heed to the wicket, to the track, to the conditions. He only knows how to play one way, and that is how he goes about it. He was very impressed with his innings last game, because his team was in trouble when he came. They were staring down at a possible defeat. That's bad. That's reckless. No footwork whatsoever, just wafted at it. So how do you become reckless from being positive? Yes, there's a very thin line, as you said, being positive and being reckless. Because when you are being positive, you've got to select your areas and your shots according to the wicket. On a track like this, if you play far away from the body, it's always going to land you in trouble. Ooh, that movement. There was some swing, and then ball kept coming in with the angle. This is the time traditionally, like we all know about cricket in Karachi, it does help the seamers, because the breeze has picked up, and with 2 set batters out of the way, all of a sudden there's an opening for Central Punjab. Yes, definitely. The Central Punjab bowlers must be looking to take as many wickets as possible before the end of the day's play. As you said, this evening session, always is a bit helpful for the bowlers as the ball is swinging. Maybe a bit of reverse swing comes into play at this time. And also the batting. The batsmen are in that mood. Not yet, but most probably in an hour or so, or half an hour, they will be in that mode to just, see through the day. And that is the time when they might get into trouble. But that's not the case with Azam, I'm sure. Azam only plays one way, and till the last ball of the day, he'll just go after the bowling, definitely. Yeah, and I was talking about his last innings. He came on for a while, he restrained himself, and when the game was safe, he went for the bowling, scored 60 odd, and still hit 4 sixes in that innings. But the first half of that innings probably was some of his best. That would help. Quick rotation of strike, keep the scoreboard ticking, keep the bowler changing his plans. Well, as they say, every batsman has their skill set, and not all batsmen have everything in their repertoire. You see, some players just like to go for their strokes. They're not very well equipped with the defense, and some are far too defensive. They are very compact, don't have all those shots. But if you can have a mix of them both, sure, it is a formula for success at any level. Waited on it nicely, beautifully played, slightly short. That's an easy length to manage on this pitch, and Azam Khan was quick to pounce on it. Yes, this is not the length you can bowl to Azam Khan. Short with that pace, easy pickings for him. Big gap, didn't even have to keep the ball down, so it was like a free hit nearly for Azam. 178 for 5. This could be a very entertaining passage of play, because if Azam Khan is there in the middle, this is difficult conditions.
So a cameo from Azam Khan, a quick fire 40 or 50 could really make the difference. Because Southern Punjab, their top two batters really worked hard and got a century partnership in. The skipper Umar Sadiq and Salman Ali Agha. So a little cameo here from Azam Khan could really put them ahead in the game. Central Punjab will have to be careful here. 3 slips in a gully for Ali. Yes, Azam Khan and players like him are always game changers. If they get going, they can very quickly snatch the game away from you or destroy whatever good work you've done so far. They can change it very quickly. Just 3 slips in a gully. There you go, Waqas Maqsood, probably just about right time for him to come back into the attack. Chance at the non-striker end. Azam had given up. Normally a good fielder. Ahmed Safi, on that occasion the throw was wild and Azam Khan was gone for all money. Well, confusion. There you see, just tapped it to point. No run. There was no run there. Oh, he was not even in the picture. Azam. Huge slice of luck for Southern Punjab. Good lengths there from Ali. This is exactly where you want a ball, especially with the lower order coming in. They won't be as tight and compact like the top order was. You can already see Imran Randhawa pushing at a ball slightly away from his body. The slip fielders will be in the action. Yes, that's a good thing for Central Punjab at the moment. That all the players, remaining players, Azam, Randhawa and Amir Yamin, who's to come, they're all stroke players. They're not known to build an innings. Once again, this one runs off the edge, finds the gap. Sab Badr. Couple of runs. A lot happening here now in the third session, which was expected earlier in the day, but finally it did come, and bowlers are having the upper hand in this third session. 3 wickets already. It's taking nothing away from Salman Ali Agha and Umar Siddiq, who really worked hard to get their team in this position. But that is the cricket you really enjoy seeing. Runs being scored, wickets being taken. As a spectator, that is what you want to see. That's what was missing in the first 5 rounds. The balance was too far tilted in favor of the bat. In the air again, through the gap. May not run to the fence. The chase is on. Just a couple of runs. Consistently finding good areas. Muhammad Ali. Seems like just a matter of time, and that fielder that we were talking about, that fielder in cover, he needs to come into the slip cordons. Yes, definitely a waste. That cover position is a waste at the moment. You need to take wickets, and in order to do so, you've got to have fielders in the right positions, in catching positions. A change in the fielding. The third slip has been shifted to gully, second gully or something. 2 slips, 2 gullies. Play and a miss. That ball flew across. 182 for 5. Here's the replay of that previous delivery. Just left the bat. Well, trying to play again, very far away from the body. Okay. And talking about the techniques of the lower order batters, you can clearly see time and again Imran Randhawa is pushing at it. Hard hands. And even the length that
Umar and Salman were coping very easily. As all of a sudden seems threatening. Azam Khan's intent has already pushed Ali Zaryab into removing a slip, so it's only 2 slips and a gully now. Mid-on and mid-off are hanging back. Shot and wide, smashed away. A little bit of width on offer, and Azam Khan threw the kitchen sink at that. Yes, well, Azam will hit you for boundaries all day if you bowl there to him. I think I would prefer my bowler to bowl a fuller length. I wouldn't mind Azam going over the head of mid-off and mid-on rather than these easy free hits. Yeah, that first hit that he hit that went down the ground in the air wasn't in control. As a bowler or as a captain, I wouldn't mind that. And from our vantage point, I'm looking at Abdul Razak. He's shouting. He's not happy with that as well. And now they placed a deep backward point. That is giving a fielder for a bad ball. The young skipper's under pressure. 2 blows from Azam has done it. Wow. Amar, you've been a captain for a long time. What does these tactics tell you? Yes. Ball following, not really recommended at this level especially. You've got to be proactive as a skipper rather than following the ball. You've got to ask your bowler to bowl the right lengths rather than giving him a fielder for a bad ball. These are not the fielders that we're talking about. 7-2 field now for Bilawal. Couple of sighters for Azam Khan, and all of a sudden he decides to leave one. This is what happens. Your nervous energy at the beginning of your innings, you make a couple of mistakes, and if you're not tested in that area, the danger zone, often enough you get settled. And like I said, you don't want a player like Azam Khan to get settled, because he can take this game away very quickly from you. Amir Yamin was on your screens, the next batter to come in. That is a bit better, a bit fuller. Azam not getting the time to cut those balls. And look at his feet, nowhere. Absolutely nowhere with his feet. That's better. You don't need that deep point fielder, and he's realized that. That's good. The young skipper realizing in time that he has to ask the bowler to bowl in the good areas. Don't worry about deep point at this stage on this pitch. Swing and a miss. Azam was a mile away from that ball. Nowhere near it, because he hasn't been using his feet. But as a bowler, that's the better length. You see, immediately when you try to do something different as a bowler, change your lengths, you induce the batsman to make a mistake, and that is exactly what Azam did. The ball wasn't there, he tried to play it over the head, and that is what, as a captain, you would like to see. Onto his pads, found the gap. Just a single though. Once again, doesn't follow up a good delivery with another one. That's been the problem for Central Punjab all day. Single to finish off the over. 187 for 5. Well, Azam is the sort of player whom regular bowlers would always like to bowl to. Yes, he might hit them for a few runs, but the fast bowlers, especially on
tracks like these will always fancy the chances of getting Azam out if they bowl the right areas consistently. In the way he's swinging, Amr, I don't think a fly slip would be a bad option. That fielder in cover is still wasted. You want him to drive. I mean, Azam is not holding back anyway. But the way he's swinging, if he gets an edge, I don't think he's going to land in slips or anywhere close to it. Good to see Ali Zaryab thinking about it, making changes. Now he's gone back to the 2-slip, 2-gully route. We got a backward point and a cover and a mid-off. Contest is on. Nowhere near that. Plenty of bounce and carry. Like you're telling me off air that when this pitch dries up, it will have plenty of carry. You're right. Yes, once that early moisture, morning moisture is gone, definitely the wicket gets hard, the grass is there, and the ball starts to fly. It's a good time for the fast bowlers to bowl. Got to give credit to the curator Atikur Rahman. He's produced a wonderful wicket. Playing a miss, and look at that ball fly. Sensational from Muhammad Ali. Well, I still believe if there you see that, whoa, excellent delivery. Well, Azam couldn't really do anything about it. Left him a bit late, and good thing that he didn't follow it. Looking at this ball and looking at this total, 187 for 5 is not a bad score. We'll only find out when Central Punjab bats. Azam gave him the charge. He realized there will be a delivery with his name on it. Not much time in trying his defensive technique. Probably over the stump mic. You might have heard him saying he might get a delivery with his name on it, so he better go for his strokes and get some runs. Yes, yeah, that's the charge. Muhammad Ali followed him with a short one. A few words from the bowler to the batter. Smashing drive, stand and deliver. Go fetch that, Muhammad Ali. That's a great reply. That's how he plays his cricket. That's the only way he knows how to play. Excellent shot, that one. Pitched up to him. That flow, that lovely flow of the bat. There you see. Beautiful shot. 4 more. The reaction of Muhammad Ali was very interesting. He had Azam at 6s and 7s, and then he came up with this. The response will be very, very interesting. There's a deep square leg back as well. This is some contest. We've really lacked this kind of drama in the first 5 rounds. Short and wide off the bottom of the bat. Watched it well in the slips. Imran Dogar, it looks like it. Yes, that is why he's known as one of the most exciting players in the domestic cricket, in the domestic circuit. Always something happening when he's on the wicket. Yeah, like I was saying, watch this beautiful shot of the Southern Punjab dugout. This is really a glorious evening here now at the State Bank Sports Complex. The breeze has picked up. Standard of cricket has all of a sudden lifted to another level we haven't seen all season. Playing a miss. This is the response from Muhammad Ali. Great cricket. Another sensational over has ended. There you see, squared him up again. And that is the beauty of cricket. That is what we want to see. Bowler
bowling those excellent lines, good replies from the batsman at times. And then this Jaffer is the batting card so far. Tayyab Tahir got out for 5. A brilliant 85 by Umar Siddiq. Imran Rafiq going out for 2 runs. Salman Ali Agha played an exceptional innings, 60 runs. Yusuf Babar couldn't make the most of it. Got out on 7, and Azam still there on 16 with Imran Randhawa on 5. The feature of this card is, like you said earlier, not easy to start off the innings. 6 bowlers used. That saw the introduction was a master stroke. It got them the breakthrough, and then the floodgates open, it may seem. 2 more wickets followed. Muhammad Ali and Bilawal Iqbal took the wickets. Waqas Maqsood, the man with the ball, took wickets in the morning session. I think he will really enjoy this battle. Oh, look at that. Left arm around the wicket, that jagged back in, and Randhawa was swinging away from it, and the ball was following him all the way. Great start, Waqas Maqsood. It's a very good bouncer, that one. Kept following the batsman, and he did a very good job. Kept his hands down just to make sure that he doesn't get that glove. Swayed away from the ball. Beautifully done. Good cricket. Excellent technique, the way he dropped his wrist. Any youngsters watching, that's the way. He would have to be at his very best to play out this little session. The bounce in the last session has really been disconcerting for the batters, even from a good length. Like I was saying, Atikur Rahman, the curator, he's been here quite a long time. In the morning, he was really proud of his wicket. He was very happy with what he produced. And now we can say that we all are very happy, because the contest has been magnificent. Big swing, a slog, an agricultural heave, but Imran Randhawa gave up on his defensive technique and decided to go big. Yes, Randhawa thinking that why should he... Look at that. Swing, heave over mid-wicket. Aggression. Of course, if you're playing with Azam Khan, you tend to play a few strokes yourself as well. You're right, and like I said, he probably, like Azam, also thinks that there may be a cherry with his name on it. Better go for it before that. Or at least put the bowlers off from their length, which he did successfully. Could be good tactics. As we were discussing earlier, that there are 2 ways to, get around this sort of a track. Either you go into a shell, that defensive shell, do not play anything away from your body, wait and wait and wait for that bad delivery, or you go for your strokes. You score as quickly as possible. In the air and away from the fielder. Another positive blow. It was full, and they've decided that they're not going to hold back. Imran Randhawa collects another boundary. And the excellent thing about today's game so far, that we have seen both type of cricket. There you see that ball, not really a half volley, played on the up, in the air, safely, straight, and got a 4. So as I was saying, the best thing about today's cricket is that we've seen everything. We've seen that part where Umar Siddiq and Salman Ali Agha played with carefully in the beginning. And now we are seeing this pair going after the bowling. So both the forms of cricket visible. $199 for 5.
199 रन्स पर 5 विकेट्स गंवाई हैं सर्दर्न पंजाब ने, और ये एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप इस वक्त जारी है इमरान रंधावा और यंग आजम खान के दरमियान। काउंटर अटैक जिसे बोलते हैं एक तरह का, उस तरीके से इन्होंने ये बैटिंग की है। बहुत तेज़ रफ्तारी से रन्स कर रहे हैं। मेरे साथ फरहान ने ज्वाइन किया है, फरहान निसार। अच्छा काउंटर अटैक है यहाँ पे सर्दर्न के ये दो यंग बैटर्स की जानिब से। अच्छा गेंद था ये मोहम्मद अली का, बिल्कुल ठीक कहा आपने अली यूनुस। इस मैच में उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। सबसे पहले टॉस का जो एडवांटेज था वो लिया सेंट्रल ने, 2 विकेटें हासिल की, और फिर एक बड़ी शानदार शराकत उमर सदीक और आगा सलमान के दरमियान हुई। ये देखिए कदमों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते आज़म खान, और उसके बाद 3 विकेटें यके बाद दिगरे गिरी हैं। और अब यहाँ पर जब बैकफुट पर धकेला जा सकता था सदर्न पंजाब को, इस मौके पर आज़म खान और इमरान रंधावा जो हैं वो भरपूर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी अप्रोच है दिखाई है यहाँ पे दोनों ने। एक बार फिर रन्स मिल जाएंगे, क्योंकि यही बेहतर तरीका है फरहान, क्योंकि आप रन्स नहीं करेंगे तो विकेट आपकी गिर जाएगी। ऐसा पिच है क्योंकि कहीं भी कभी भी कोई भी बॉल आपको अच्छा पड़ सकता है, लिहाजा जितने रन्स बटोर लिए जाएं वो बेहतर है। 200 रन्स मुकम्मल कर लिए यहाँ पे सर्दर्न पंजाब ने 5 विकेट गवा के। यंग आजम खान ने शानदार तरीके से 17 रन्स बनाए हैं। इमरान रंधावा बहुत ही फॉर्मिडेबल और बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेयर नजर आते हैं, 13 रन्स पर मौजूद है 19 बॉलें खेल के। इस मरतबा अच्छा गेंद था, अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद अली ने, और 200 रन्स के साथ पहला पॉइंट भी अली यूनुस यहाँ पर हासिल किया है सर्दर्न पंजाब ने। तो ये पॉइंट्स का खेल है, और सर्दर्न पंजाब की टीम इन पॉइंट्स पर बहुत गहरी निगाह रखे हुए है। पहले मैच में 252 पर 9 विकेट्स पर इन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की कि दूसरी टीम को इजाफी पॉइंट ना मिले, तो ये पॉइंट्स की बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करते हैं, और अभी भी ये चाहेंगे कि कम से कम 250 रन ये ज़रूर करें ताकि दूसरा बैटिंग पॉइंट इन्हें मिल जाए। जहाँ टेबल टॉपर्स हैं सर्दर्न पंजाब की ये टीम, बहुत ही यंग साइड है, यंग बैटर्स हैं, यंग बॉलर्स हैं साइड में। बहुत खुशी है होती है देख के जब ऐसे यंगस्टर्स, एक यंग साइड अपने से बड़ी टीम को टक्कर देती है। और एक ऐसे दिन जहां पे रन्स मुश्किल से बने हैं, यहाँ पे बहुत ही शानदार बैटिंग की है। दाद देनी होगी उमर सदीक और आगा सलमान की, जिस तरीके से पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड की और जिस तरीके से रेजिलियंस शो किया, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रही। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस पार्टनरशिप की वजह से सर्दर्न पंजाब अब मुझे लगता है कि थोड़ा कमांडिंग पोजीशन में है। ऑल्दो सिर्फ 200 रन है, बट ये मुश्किल पिच है, और कल जब पहला सेशन आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल अली, ये कदाफी स्टेडियम नहीं है जहां पर हमने 600 रन्स भी बनते हुए देखे। और कचांस था यहाँ पे, लकी रहे कि बॉल ज्यादा दूर नहीं गया, पास ही गिर गया। और एक ये इस चीज की हम बात कर रहे थे कि ऐसा बॉल आपको इस पिच पे कभी भी पड़ सकता है जो कि अनप्लेबल हो सकता है, इसलिए रन्स लेते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसी विकेट है कि जहां पर किसी भी वक्त आपकी इनिंग्स ख़त्म हो सकती है, और आज हमने देखा उमर सदीक जिस अंदाज से आउट हुए, आगा सलमान का एक अच्छा कैच पकड़ा गया, तो इस विकेट पर आप ज़्यादा लंबा प्लान करके नहीं जा सकते। जो मौजूदा वक्त है, जो ओवर हो रहा है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार फिर बीट किया है, बहुत ही शानदार स्पेल यहाँ पे मोहम्मद अली की जानिब से, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की है सुबह से ही। 71 ओवर का इख्तिताम हुआ, 200 रन पर 5 विकेट सर्दर्न पंजाब ने। अच्छा हार्ड वर्किंग दिन रहा है मोहम्मद अली की जानिब से, क्योंकि जब फास्ट बॉलर ऐसा पिच देखता है तो एक बार तो उनके मुंह में पानी जरूर आता है कि इस पिच पे विकेट्स मौजूद हैं, और शायद इसी चक्कर में थोड़ा ज़्यादा भी कोशिश किया पहले सेशन में वकास मकसूद के अलावा बाकी फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हुए नजर आए, लेकिन वेवर्ड थे थोड़े अपनी लाइन और लेंथ में। अगर वो थोड़ी लाइन और लेंथ बेहतर होती तो शायद ये इनिंग पहले रैप अप हो सकती थी।
जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह का ये पिच था और बिल्कुल सही फैसला था ली ज़रियाब का पहले बॉलिंग करने का, लेकिन बॉलर्स उतना इस विकेट से फ़ायदा नहीं पहले 1 घंटे में हासिल कर सके या लंच तक। लेकिन वकास मकसूद ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये उन्होंने दिखाया है कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि आप इतना तजुर्बा है उनके पास, हर जगह पे बॉल किए हैं डिफरेंट कंडीशंस में। वाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत मायानाज बॉलर पाए जाते हैं, बहुत ही श्रूड बॉलर हैं, और अब तो उनके एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को सही यूज़ किया है, सही एरियाज में बॉल किया है। और अली ये मैदान बहुत रास आता है वकास मकसूद पर। स्टेट बैंक पे जो बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स है वो भी वकास मकसूद के नाम है। ये अच्छा गेंद था, तेज़ी से अंदर आया, वाइड ऑफ द क्रीज किया और थोड़ा सा लेट खेले आज़म खान। तो 32 रन देकर 9 विकेटें यहाँ पर वकास मकसूद ने वापडा के लिए हासिल की थी, और KRL को 95 और 65 पर आउट किया था वकास मकसूद की इस बॉलिंग ने। जहाँ बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर हैं। कल तक शायद जो सुनने में आई है बात की टीम में शायद इनकी जगह नहीं थी, बट अहमद शहजाद के अनफिट होने के बाद इनको इंक्लूड किया गया और बहुत ही शानदार चेंज रही सेंट्रल पंजाब के लिए। 2 विकेट्स अभी हासिल किए, अभी ख़त्म नहीं किए हैं, बॉलिंग जारी, और आई एम श्योर कि और विकेट्स ज़रूर इनके नाम होंगी। बड़ा शॉट खेला है बहुत ही शानदार तरीके से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अंपायर का फैसला देखना होगा, जी 4 रन का इशारा ज़रूर किया। ये बहुत ही शानदार काउंटर अटैक है आज़म खान की जानिब से, और ये हम एसोसिएट करते हैं आज़म खान से, क्योंकि बड़ी हिट्स इनके पास मौजूद हैं, और वक्तन फ़वक्तन हम देखेंगे कि ओवर द टॉप खेलते हैं। बिल्कुल ये सीधा उठा कर खेला, और दिलेर बैट्समैन आज़म खान अगर ये कहा जाए, और इन मैदानों पर कई मरतबा इन्होंने ये गेंद, ये जो इतराफ़ के घर हैं वहाँ भी भेजे हैं। जो करंट सिचुएशन है उससे बिल्कुल भी घबराते नहीं, उसको अपने ऊपर तारी नहीं करते, अपना गेम खेलते हैं, और अक्सर और बेशतर इन्हें कामयाबी मिलती है। एक दिलेर प्लेयर की निशानी है ये। अभी आप जिक्र कर रहे थे वकास मकसूद ने 9 विकेट्स हासिल की थी यहाँ पे एक इनिंग में। हमेशा से ही इतना मुश्किल पिच रहा है ये बैटर्स के लिए स्टेट बैंक का, या आपने इसमें चेंजेस देखे हैं? अली 2018 से पहले तक ये बहुत मुश्किल विकेट रहा है, ख़ास तौर पर पहली इनिंग्स में, और यहाँ पर आमिर यामीन कुछ करतब दिखा रहे हैं, शायद जानते नहीं कि कैमरा उनके ऊपर है। तो यहाँ पर आउट किए हैं बॉलर्स ने, मोहम्मद अब्बास ने यहाँ पर 5 विकेटें ली हैं, मोहम्मद आसिफ ने यहाँ पर आउट किए हैं, तो फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा ये वेन्यू रहा है। यहाँ ग्रीन घास मौजूद है, लाइवली घास जिसे कहते हैं। ऑल्दो पहले सेशन में थोड़ा मॉइस्चर ज़रूर मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे मॉइस्चर एवेपोरेट होगा तो और विकेट हार्ड होता जाएगा, और ग्रास हो उसके साथ हार्ड पिच हो। आई थिंक कल का जो पहला सेशन होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सर्दर्न पंजाब की जब बॉलिंग आती है तो वो इसे कैसा यूटिलाइज़ करते हैं। मुझे लगता है कि शायद उनके बॉलर्स में ज़्यादा पोटेंशियल है इस पिच को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करने की, क्योंकि अगर हम इलियास की बात करें, ज़ियाउल हक की बात करें, आमिर यामीन, रंधावा, इनकी जो नेचुरल लेंथ है वो अप टू द बैटर है, वो खिलाते हैं, ड्राइव खिलाते हैं, और शायद यहाँ पे थोड़ी कमी रहेगी सेंट्रल पंजाब के लिए। जी हाँ, इस एक बार फिर पूरा बड़ा शॉट खेले, लेकिन बहुत ही लकी रहे कि फील्डर कैच लेने में नाकाम रहे। अच्छी एफर्ट जरूर थी यहाँ पे मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर इमरान डोगर की जानिब से। अनलकी रहे कि बॉल स्टिक नहीं किया हाथ में। देखिए बड़ा शॉट मारना चाहते थे, शायद इस लेवल पे ये कैच होना चाहिए था फरहान। बिल्कुल ये कैच होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी ज़ोरदार शॉट था। और जो लेंथ की आप बात कर रहे थे, अगर आज़म खान को इस लेंथ पर गेंद करेंगे तो वो बिल्कुल भी 4 सेंचुरी और 1150 उनके नाम है, 225 रन उनके हाईएस्ट हैं। एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे विकेट हासिल की है सेंट्रल पंजाब ने, क्योंकि डाइंग मोमेंट ऑफ द डे है, यहाँ पे मुश्किलात हो सकती हैं रिमेनिंग बैटर्स के लिए। जी उस फैसले से कतर नज़र ये विकेट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के लिए। और अभी हम ये बात कर रहे थे कि ये जो पार्टनरशिप है ख़तरा बनती जा रही है सेंट्रल पंजाब के लिए, तो विकेट उन्हें मिल गई है, लेकिन इमरान रंधावा बहुत ही बदकिस्मत साबित हुए हैं। लाहौर में हमने देखा कि उन्होंने अपनी विकेट की कुर्बानी दी अपने
कप्तान के लिए और इस मरतबा अंपायर के फैसले की भेंट चढ़ गए। ओ शानदार डिलीवरी, ये बेहतर बॉलिंग है, ये बेहतर लाइन और लेंथ है मोहम्मद अली की जानिब से। पहले सेशन में हमने देखा थोड़ा शॉर्टर लेंथ की तरफ रहे थे, बेहतर लाइन है ये। अनडिसाइसिव लाइन इसे कहते हैं, जहां पे बैटर को मालूम नहीं होता है कि फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है। मुश्किलात तो डेफिनेटली यहाँ पे सर्दन के लोअर ऑर्डर के लिए है। मोहम्मद अली ने बहुत ही शानदार स्पेल किया है, 4 फास्ट बॉलर के साथ गए थे लेकिन अनलकी रहे कि एक फास्ट बॉलर अनफिट हो गए, जिनको आज हमने एक्शन में बहुत कम देखा शुरू में पहले सेशन में। ऊंचा खेल दिया है, हवा में सेफ हो जाएंगे 2 रन्स, 4 रन्स इनफैक्ट मिल जाएंगे आमिर यामीन को। तो बाउंड्री हासिल करते हुए आमिर यामीन, ये अच्छी अप्रोच है कि रन्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा शॉट था और इस साइड से जो बाउंड्री की लंबाई है वो भी काफ़ी कम है और ये गेंद तेज़ी से बाउंड्री लाइन पार कर गया। हवा में खेला, जानते थे कि यहाँ पर फील्डर कोई मौजूद नहीं है और इस चौके के साथ आमिर यामीन ने अपने स्कोर का आगाज़ किया है। दो 208 रन 6 विकेट के नुकसान पर सर्दन पंजाब। अच्छा स्कोर हो सकता है इस पिच पे। ड्राइव कर दिया है शानदार तरीके से, 4 रन तो शायद नहीं मिलेंगे, 1 रन पे ही गुजारा करना होगा दोनों बैटर्स को। आजम खान और आमिर यामीन को अब यहां से जरूरत है कि स्कोर को 209 से कम 250 260 तक लेके जाया जाए ताकि थोड़ा कुशन मिल सके फास्ट बॉलर्स को भी। दोनों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, हो सकता है ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल इंटेंशंस यही हैं यहाँ पर सदर्न पंजाब की कि तेज़ी से जितने रन्स आज का खेल ख़त्म होने से पहले बनाए जा सकते हैं वो बनाए जाए। अब 2 स्लिप हैं और 2 गलीज हैं आज़म खान के लिए, इसके अलावा पॉइंट पर भी फील्डर मौजूद हैं। डीप स्क्वायर लेग पर भी एक फील्डर मौजूद है आज़म खान के लिए कि अगर वो हवा में खेलते हैं जैसा कि इससे पहले आमिर यामीन ने खेला था। ये निसार अहमद है, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग आज की है। पर अली हम वो चाहेंगे कि एक्शन रिप्ले ज़रूर देखें, इमरान रंधावा की जो विकेट थी उसको ज़रूर हम देखना चाहेंगे स्क्रीन पर। एक बार फिर हवा में खेले, फील्डर मौजूद है लेकिन दूर उनसे। ये बहुत ही शानदार अप्रोच है आजम खान की जानिब से, दूसरे रन के लिए भी आराम से वापस आ जाएंगे। अच्छी बैटिंग आजम खान की जानिब से, 23 रन पर पहुंच गए। 73 ओवर का इख्तिताम हुआ, 211 पर 6 सर्दन पंजाब। और 4 रन, लकी रन मिल जाएंगे यहाँ पे। शायद यहाँ पे खेलना नहीं चाहते थे आमिर यामीन, लेकिन थिक आउटसाइड एज हुआ और पॉइंट के ऊपर से 4 रन हासिल किए। रन आने चाहिए फरहान, जैसे भी आए। बिल्कुल, और आमिर यामीन यही हदायत लेकर आए हैं अपने ड्रेसिंग रूम से। ऑन साइड पर इसको खेलना चाहते थे लेकिन ये एज हुआ और स्लिप के फील्डर के सर के ऊपर से होता हुआ ये देखिए 4 रन उन्हें मिले। तो यहाँ पर इंटेंशन यही है सदर्न पंजाब की कि आउट होने से पहले या आज का दिन ख़त्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लें और जो 250 रन्स का जो मार्क है वहाँ तक ज़रूर पहुँचना चाहेंगे दूसरा बैटिंग पॉइंट हासिल करने के लिए। जी ना, सिर्फ बैटिंग पॉइंट के लिए थोड़ा सिक्योर भी फील करेंगे। 250 रन से ऊपर अगर रन करते हैं सर्दन पंजाब। एज किया है, आसानी से ये कैच ले लेंगे।
एक और विकेट वकास मकसूद के नाम रही। इस बार आमिर यामीन थे बैटर आउट होने वाले, 9 रन्स बनाकर आउट हुए। और एक और शानदार लाइन और लेंथ वकास मकसूद की जानिब से। ये देखिए, कोई मौका नहीं था आमिर यामीन के लिए। थिक आउटसाइड एज, जुनैद अली का आसान कैच। आमिर यामीन के इनिंग का हुआ इख्तिताम, जुनैद अली के हाथों कैच हुए। वकास मकसूद थे बॉलर, 9 रन्स बना सके, 5 बॉलों का उन्होंने सामना किया। सदर्न पंजाब 215 पर 7। ज्यादा नए आने वाले बैटर्स हैं, यहाँ पे इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आजम खान के साथ जितनी देर मैक्सिमम रुक सके, स्ट्राइक आजम खान को दे सकें। यही इनका रोल होगा यहाँ से एंड तक इनिंग के, क्योंकि 2 विकेट्स 2 ओवर्स के अंदर सदर्न पंजाब की गिर गई। आमिर यामीन आखिरी बैटर थे आउट होने वाले। रन्स की कोशिश में जाने के लिए शायद विकेट्स तो गंवानी पड़ती हैं आपको, और ऐसे पिच पे। और ये बहुत अच्छा गेंद था वकास मकसूद का, बिल्कुल भी उनके पैर नहीं हिले, थोड़ा सा दूर से खेले, गेंद बाहर निकला। और इस मरतबा जो जुनैद ने कैच पकड़ा उस पर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था, लेकिन इससे पहले जो इमरान रंधावा की विकेट थी वो एक्शन रिप्ले अली, उसका इंतज़ार है मुझे भी और आपको भी। जी हाँ, बड़ी क्लोजली देखना पड़ेगा उस कैच को, क्योंकि बहुत हंगामा बरपा हो गया था उस कैच के ऊपर। इवेंट है एक पूरा, तो एक्शन रिप्ले उसका जरूर देखेंगे हम। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था ज़िया ने इस बार, लेकिन ज़्यादा कसूरवार हम यहाँ पे ज़िया को ठहरा नहीं सकते, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस हैं। बॉलिंग बहुत शानदार हो रही है वकास की जानिब से। अगर कोशिश कर सकें, ये आमिर यामीन जिस तरह से आउट हुए, अच्छा डिलीवरी, अच्छी लाइन और लेंथ पे पड़ा हुआ बॉल, एंगल के साथ अंदर आया, पड़ने के बाद बाहर को निकला, तो कोई मौका नहीं आमिर यामीन के लिए कि उसको नेगोशिएट करते। बहुत ही शानदार बॉलिंग वकास की जानिब से। 3 विकेट्स हासिल किए आज के दिन में इन्होंने। बेहतर तरीके से इसको नेगोशिएट किया है ज़िया ने। एक बैटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको बॉल छोड़ना आना चाहिए इस लेवल पे फरहान, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे बॉल को छोड़ना नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वे बेशक आप टॉप ऑर्डर बैटर हैं या मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, लंबी क्रिकेट के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा सलाहियत जो है वो बॉल छोड़ने की होनी चाहिए आपके पास। और ज़िया ने सीज़न में 2 मरतबा इनिंग्स ओपन की है, तो बैटिंग करना इन्हें पसंद है, लेकिन यहाँ पर आज़म खान के जो फायरवर्क्स हैं वो अगले ओवर में देखने से ताल्लुक़ रखेंगे। अच्छा यॉर्कर इस बार चेंज किया अपनी लाइन और लेंथ को वकास ने। बहुत ही मंझे हुए फास्ट बॉलर हैं वकास मकसूद, वाइड बॉल के बहुत शानदार बॉलर हैं। और एक ऐसे टाइम पे जहां पे सेंट्रल को ज़रूरत थी एक एक्सपीरियंस बॉलर को प्रूव करने की अपने आप को, और उन्होंने अच्छे तरीके से प्रूव किया है। 3 विकेट्स हासिल किए हैं, और पहले सेशन में जो 2 विकेट्स गिरी थी अर्ली ऑन इन्होंने हासिल की थी। वर्क हॉर्स जिसे कहते हैं वकास मकसूद, आप पूरा दिन बॉलिंग करवा सकते हैं। ताज वली भी एक ऐसे ही फास्ट बॉलर हैं। एक और शानदार डिलीवरी, कोई मौका नहीं था समझने का ज़िया को, और अच्छी अप्रोच यहाँ पे आजम खान की जानिब से। सिंगल नहीं लिया, अवेलेबल था, अब वो स्ट्राइक अपने पास मैक्सिमम रखना चाहते हैं। 74 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 215 पर 7 सदर्न पंजाब। फरहान बात करते हैं एक बार फिर, रंधावा जिस तरीके से आउट हुए थे, तो ऐसे मौके पे अंपायर के पास क्या ऑप्शन होती है कि अंपायर अगर ऑन फील्ड अंपायर को सामने स्ट्राइकर अंपायर को समझ नहीं आई है तो उसको कंसल्ट करना चाहिए लेग अंपायर, क्योंकि वो बेहतर पोजीशन में होते हैं जज करने के लिए। क्योंकि डाइव किया था जुनैद ने और बॉल बहुत ही क्लियर नज़र आया हमें कि ग्लव से निकलने के बाद उसका ठप्पा लगा ज़मीन पे, लेकिन बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया। क्या इतनी जल्दी, मतलब समझ में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। जी हाँ, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए था और अपने जो साथी अंपायर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए था। फायरवर्क्स जिसकी आप बात कर रहे थे,
आजम खान ने आगाज तो उसी का किया है, उसी तरह किया है इस ओवर में। बिल्कुल इस ओवर में हमें नज़र आएंगे यहाँ ये गेंद बाउंड्री से बाहर जाएगी या फिर आजम खान खुद मैदान से बाहर आएंगे, कुछ तो होगा इस ओवर में। और जैसा इम्तियाज़ इकबाल के बारे में हमारे साथी अली सलमान बता रहे थे कि खुद भी विल्स का खेल चुके हैं, तो खासा इनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो थोड़ा सा अगर वक्त ले लेते, क्योंकि जो एक्शन रिप्ले में हमने देखा कि गेंद क्लियरली विकेट कीपर के हाथ से निकलकर ज़मीन से टकराई है। हवा में खेल दिया है, विकेट कीपर नीचे है जी। और एक और आसान सा कैच जुनैद अली के लिए। आजम खान की इनिंग का इख्तिताम हुआ। तो जो फायरवर्क्स की हम बात कर रहे थे, कोशिश उन्होंने जरूर की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी आजम खान को, और एक आसान सा कैच दे दिया जुनैद अली को। 23 रन पर अपने विकेट गवा बैठे आजम खान। और अली अब आप मुझे दाद दीजिए कि इस गेंद से पहले मैंने कहा था यहाँ गेंद बाहर जाएगा, या आजम खान मैदान से बाहर आएंगे। ये टॉप एज हुआ और बहुत ही आसान कैच विकेट कीपर जुनैद अली के लिए। जी हाँ फरहान, जितनी क्रिकेट आपने कवर की है, अब ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेटर तो आप भी बन गए हैं। 23 रन बना सके यंग आजम खान। जुनैद अली ने उनका कैच किया। मोहम्मद अली थे बॉलर। 215 पर 8 सदर्न पंजाब। अली उस्मान आए हैं नए बल्लेबाज। 250 इन्होंने ज़रूर किए हुए हैं गेंद से, तो ये टॉप पर है, लेकिन यहाँ आज उन्हें अपनी टीम के लिए अपने बल्ले का भी इस्तेमाल करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने होंगे। 250 बना चुके हैं अपने करियर में अली उस्मान। अच्छा डिफेंड किया है पहले बॉल को ही। गगो मंडी से इनका ताल्लुक है। अली उस्मान का बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जब आखिरी सीजन में ग्रेड 2 का खेला था तो इन्होंने बहुत स्कोर किए थे, और ये इस तरीके से आजम खान अपने विकेट गवाई। बिट ऑफ अ नथिंग शॉट, फ्लिक करना चाहते थे, शायद लेंथ नहीं थी, और टॉप एज हुआ और अपने विकेट गवा बैठे। और अली ये फास्ट बॉलर्स की सरजमीन गगू मंडी से आते हैं अली उस्मान, और वहाँ से एक स्पिनर का आना और इतने अच्छे स्पिनर का आना, ये भी बड़ी अनोखी बात है। एक बार फिर बीट हो गए। ये शानदार लेंथ रही है अली की जानिब से, कोई मौका नहीं है अली उस्मान के लिए, और यही परेशानी जरूर हमें रही है, हमने देखने को मिली है पूरे बैटर्स की जानिब से। वहाँ सवाए आगा सलमान और उमर सदीक के, सबने स्ट्रगल किया है इस पिच पे, इसीलिए शायद जो उस पार्टनरशिप की अहमियत है वो बहुत बढ़ गई है। तो उन्होंने दिखाया कि इस पिच पे कैसे बैटिंग करनी चाहिए। अली सलमान आगा ने भी और उमर सदीक ने भी बहुत ही शानदार खेले हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, गैप में खेले हैं, 2 रन्स की कोशिश होगी। जी हाँ, फंबल ने मदद की है, उनका दूसरा रन आराम से मुकम्मल कर लिया। बिलावल इकबाल थे फील्डर जो डीप फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहे थे। और इसलिए अली ये कहा जाता है कि जब आप सीनियर प्लेयर हैं तो फिर आपका रोल ख़त्म नहीं होता 50 या 60 रन करने के बाद। सलमान अली आगा ने जिस तरह की शॉट खेली, पार्ट टाइमर था, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, विकेट गवाई, और उसके बाद मैच का नक्शा जो है बदल गया। अगर इस वक्त इन दोनों बैटर्स ने सेंचुरियाँ स्कोर की होती या नॉट आउट होते तो मैच का जो पासा था वो सदर्न पंजाब के हक में होता। जहाँ कंसंट्रेशन को ज़्यादातर लूज किया उस 2 ओवर्स में, इनफैक्ट जब हम मोहम्मद साद बॉलिंग करने के लिए आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे आगा सलमान इनको डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा है ऐसे काफ़ी दफ़ा होते हुए कि जब भी आप किसी पार्ट टाइमर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो विकेट आप गवाते हैं। और ऐसी कंडीशंस में स्पेशली 75 ओवर का इख्तिताम हुआ, 217 पर 8 सदर्न पंजाब।
15 ओवर्स का खेल अभी आज के दिन में बाकी है फरहान, और क्या हम सेंट्रल पंजाब को आज बैटिंग में देख सकेंगे? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये मुमकिन है, क्योंकि कराची में आम तौर पर 85 ओवर के आसपास का खेल ज़रूर मुमकिन होता है, और यहाँ पर भी ऐसा लगेगा, और एन मुमकिन है कि हम सेंट्रल पंजाब को भी आखिरी जो मिनट्स हैं उनमें बैटिंग करता हुआ देखें। इनोवेटिव, एक्साइटिंग। ज़िया ने थोड़ा तजुर्बा करने की कोशिश की है, लेकिन शायद ये शॉट सिलेक्शन इतनी सही नहीं थी। जी हाँ, वाइट बॉल क्रिकेट शॉट खेलना चाहते थे, और अली इनके डगआउट से ये खबर भी लाहौर में मिली थी कि जो दोनों बैटर्स क्रीज पर मौजूद हैं, इनके दरमियान ये बात होती है कि पहले बैटिंग करने कौन जाएगा, तो कभी अली उस्मान पहले जाते हैं और कभी ज़ियाउल हक को पहले मौका मिलता है। बॉल कर दिया, बहुत ही शानदार डिलीवरी वकास मकसूद की जानिब से। शायद इस शॉट का जवाब देना होगा कोच को ज़िया की जानिब से, क्योंकि आप हैंग ऑन कर सकते थे, लेकिन बड़ा शॉट मारने गए और अपनी विकेट गवा दी यहाँ पे ज़ियाउल हक ने। और बहुत बेदिली से ये शॉट खेला ज़ियाउल हक ने, वाइड ऑफ द क्रीज ये गेंद किया था, अंदर आ रहा था, जानते थे, लेकिन बगैर कोई रन बनाए अब उन्हें अपने डगआउट में लौटना पड़ेगा, और अब आखिरी खिलाड़ी इलियास ही बाकी हैं कि जो इस किले की हिफाजत करेंगे अपने साथी अली उस्मान के साथ। जी, और देखिए कैसे एक गलत डिसीजन फरहान, कैसे एक गलत डिसीजन पूरे मैच का पासा शायद बदल सकता है। वो कैच का डिसीजन अगर रिव्यू किया जाता अंपायर्स की जानिब से तो डिफरेंट हालात होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सवाल डेफिनेटली रहेगा कि क्यों नहीं कंसल्ट किया आपने एक दूसरे से, इतनी जल्दी क्या थी डिसीजन देने की। Nine down. What a dramatic session this has been. Post-tee session. The wickets have tumbled, 7 of them. 217 for 9. Ilyas starts off with a confident drive. It may not go to the fence. Runs are crucial. What a session, Amr Saeed. Yes, I tell you, that shot from Ilyas, most probably the shot of the day so far. That's the previous wicket. Clean bowled, trying to heave it. A typical tail-ender's shot. Didn't come off. It's a long time ago when the lower order gave up on their defensive technique on this pitch. Big shout, 2 noises. The appeal was aborted by Waqas Maqsood. Waqas Maqsood started it in the morning, and how ideally he would love to finish it off. Ooh, that one angling down, I think. Well, do you think it would be a good idea to declare at this point? Give the bowlers a chance for a few overs with the new ball and these conditions? Definitely. Definitely. Because these runs, odd runs here and there is crucial. But being an opener, you would know no opener would like to go in at this stage on this pitch with a brand new ball. This could really be a testing time. Is Umar Sadiq thinking along those lines? Who knows? Yes, because even if they stay on the wicket, I don't think they're going to be scoring too many runs. So that is an option that can be explored. Declare the innings, get the batsman in.
Shout from Waqas Maqsood going down clearly. And at 27 minutes left in the extra half hour as we look at this another replay. Wide of the crease. You can see a hint of leg stump there. Yes, but I think that angle that is being created by Waqas Maqsood always will give that doubt. Here's the... And that's the man who needs to make the decision. Probably time has already run out for him, because this time could really be dangerous for the openers. 220, they're not likely to get another batting point, another 30 runs away. The new ball is only four overs away. Nothing much going for the Southern Punjab. And what can also happen is that if they get bowled out, the opposition will get an extra point for bowling them out within 100. 2 points rather. So I was looking at the clock. If they declare now, probably they'll get about 17, 18 minutes. 4 good hostile overs. Wow. Yes, definitely it could change the whole perspective of the game. Early wickets, and you never know what's going to happen on this track, because as we've seen, new batsmen, it's never easy for them. Swing and a miss. And the magnitude of this collapse is that 170 for 3 at one stage. Now the 47 runs and 6 wickets, as Ilyas was nowhere near that ball. Well, Mohammad Ali needs to pitch it further up. Something in Ilyas's reach. You know, these unplayable deliveries are not good enough for tail-enders. Especially when you see Ilyas is showing him all his 3 stumps. Ilyas is not looking to cover the stumps. But the way things are, I don't think there's a declaration coming. They've dominated all day today. Glorious! Any top order batter would have been proud of this cover drive. Magnificent from Ilyas. Well, I tell you, the 2 shots he's played so far are most probably the best of the day. Excellent, excellent cover drive, that one. There you see, ball coming in, and he was equal to the task. Beautifully timed through the covers. 4 runs. Well, Ilyas is showing everyone. Probably there's always competition in teams in their lower orders. Well, we'll talk about it later, but you can see the shiny red cherry, the new Kookaburra. There you go. And the person who's holding it is one of the best exponent of it, Azaz Chima. And 572 wickets. Another lethal man in the Southern Punjab dugout is Irfan Fazil. A very rapid, fearsome fast bowler of his time. Emma would know better about him. Helped it on its way over the top of the cordon. Short and wide, not good from Muhammad Ali. But Ilyas put back to ball and earned a boundary. Yes, not using his brains, the bowler now. Very, very wayward bowling. Too short. And helped on its way really by Ilyas. You have to remember that Ilyas is not really as bad as most probably someone would think. Yes, he can bat a bit.
11 of 7. Waited for that one. No footwork. But still watched the ball all the way onto the bat. You just saw the Southern Punjab skipper pacing around. Umar Siddiq. They're already in their whites. Probably the declaration is not an option. You can vouch for it. Maybe they want each and every run. It's very important in this low-scoring game. And probably they're confident enough that their bowlers will do the job, even if we don't have to get in this evening. Fair enough. In the air and gone. Second slip. It's taken. Rizwan Hussain is the man who took the catch. And Muhammad Ali got some reward. Finally, a 4-4 for him. And Central Punjab has bowled Southern Punjab out for 228. They've also got that extra point Farhan was talking about. Yes, so 2 points in all. That one came in too good for Ilyas, a bit quicker. And edge, straight 2-second slip taken by Rizwan. Always difficult in those slips, so a good catch. Yeah, the catching had been good. Couple of chances were let go earlier, but when they got on a roll after tea, the bowling was good and the wickets kept coming. 170 for 3 at one stage, remember? 228, 58 runs for the last 7 wickets rather. That is some bowling from Central Punjab. They may still rue the fact that in the afternoon session they let things go, which means 228. Amar, from your experience, what do you reckon how this first innings total look? Well, by the look of it, most probably they would have liked a few more runs. But on this track, as we have seen, once the set batter gets out, the more new batters come in, the more chances you have of getting a wicket. And this scorecard exactly tells what just Amar said. 85 and 62 contributions. None of the other one can get a start because it's very difficult to do that. Azam Khan bludgeoned his way to 23, but all the other batters struggled. But you have to say Umar Siddiq and Salman Ali Agha played beautifully for that partnership, and that gave this team the runs on the board. And like Amar said, they would have liked more, but 228 they could be very, very competitive. And the game has moved along very, very quickly.
Very warm welcome back. The umpires are in the middle. Southern Punjab took no time in taking to the field. They're all ready. And the openers have made their way to the middle as well. Imran Dogar, the prolific run scorer from the second 11. And Rizwan Hussain, whose day didn't start very well. He would like to finish it well by remaining unbeaten. I still got with me Amr Said. Intriguing little session coming our way. Yes, definitely. This is a time to capitalize for the central bowlers. Very, very dangerous 2 or 3 overs here. A wicket or two, and they are on top. 3 slips and a gully and a short leg. Big booming in swinger. Amir Yamin is known for that. But more than that, look at that bounce where Azam Khan took that ball. Yes, a very good start by Yamin, right on the spot. And a very good leave as well. Trusted the bounce, let the ball go. Incredible bounce. Look at that, close to the stumps, and that jag back in. Whew. This is some contest here. The batters would have to be at their very best to survive. Imran Dogar himself likes to play his shots, and most probably at these times the best thing to do is to play the ball on its merit. If you have it in your zone, go for it, rather than, you know, hanging your bat tentatively at things just to pass the time. It's better to play some shots. Swinging in, but starting too wide. Dogar watched it all the way. Dogar has been a prolific run scorer in the second 11. He was the top run getter last year. Didn't get his chance. He's got his chance now. Like they say, luck plays a big part in your career. Now he's playing on seamer-friendly wickets as opposed to placid batting pitches earlier on in the season. Yes, he's definitely, the eyes of the selectors are on him. They would be monitoring his performances, and after playing on those placid tracks, they will keep a close eye on how he performs on bowler-friendly wickets. He was a bit indecisive as the umpires are coming together. The sun is setting in the distance. It's gone pretty murky. You see that leave wasn't very convincing. You could see the off stump. Lucky for him, it didn't come back as much to trouble his stumps, but in the distance looking are Walid Yaqub and umpire Imtiaz. The light meters are out, the dreaded light meters, and I think just about time to call end to an exhilarating day's cricket here. The readings will be taken, they will be kept for the remainder of the match, and they will be the yardstick for continuing to play in light. But the players are coming off, and an exciting day of cricket has come to an end. Well, 4-day cricket is all about sessions, and after that, a couple of sessions for the Southern Punjab batting. It was all Central Punjab's bowlers who took the game away from them after that lovely little partnership. Southern Punjab runs on the board 228. Would look to think that they've headed the day, but Central Punjab did make a stunning comeback in the last session. 8 wickets they took and survived the 3 deliveries from Amir Yamin, 4 rather, to go unscathed at the end of the day's play. But it sets up very nicely for tomorrow. And it should be a very exciting day, especially the first hour or so, or the first session in the morning, where again, there you see the sessions today, morning sessions, 25 overs, 53 runs and 2 wickets. And then that second session
which was dominated by the batting. 24 overs, 70 runs, no wickets, and then that evening session, 28.4 overs, 105 and 8 wickets went down. So dominance for the bowling in the last session. The ball dominating at long last in this season's Azam Trophy Championship, the 6th round, and like I said, nothing short of exhilarating cricket. The entertainment galore. We've seen a bit of everything. We've seen some splendid seam bowling, seen some disciplined and really hard grind from the batters, Umar Siddique and Salman Ali Agha. They really played beautifully and showed everyone how it should be played on these pitches. But then Central Punjab came roaring back into the game with that final session. So that's the end of play here. And well, I hope you enjoyed the coverage today. We did, certainly, bringing it to you, and we look forward to more of it tomorrow. Until then, it's goodbye from State Bank Sports Complex.